Assessment, Dr. Mahavir did. Assessment, Dr. Mahavir did. कुछ ही देर में हम अपनी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने वाले हैं। बाहर हमारे जो भी डेलीगेट्स और गेस्ट हैं, मैं सभी को अंदर आने का आग्रह करती हूँ। प्लीज सभी अंदर आकर अपनी सीट ले लें। विक्रम जी, मैडम कुछ ही देर में हम अपनी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने वाले हैं। बाहर हमारे जो भी डेलीगेट्स और गेस्ट हैं, मैं सभी को अंदर आने का आग्रह करती हूँ। प्लीज सभी अंदर आकर अपनी सीट ले लें। कुछ ही देर में हम अपनी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने वाले हैं। बाहर हमारे जो भी डेलीगेट्स और गेस्ट हैं, मैं सभी को अंदर आने का आग्रह करती हूँ। प्लीज सभी अंदर आकर अपनी सीट ले लें। सर, शैल वी स्टार्ट? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। होलिस्टिक हीलिंग फॉर हेल्दी इंडिया इस थीम पर आधारित 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं होलिस्टिक हीलिंग ऑफ हेल्दी लाइफ और के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर खेतावत जी और सभी मेंबर्स की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सुधीर खेतावत ने कोरोना काल में बहुत काम किया है।
ये आप काफी लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार मैं फिर से बता देना चाहती हूँ। सूर्य कोटि समग्र स्वस्थ इंडिया अभियान के तहत डॉक्टर सुधीर जी ने वरिष्ठ चिकित्सकों की प्राण रक्षा हेतु उन्हें जीवन रक्षक लॉकेट पहनाया और लगभग 3000 चिकित्सक व हेल्थ वर्कर्स इसका लाभ ले चुके हैं। कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन में होलिस्टिक हीलिंग फॉर हेल्दी इंडिया थे। मुझे खुशी है डॉक्टर हिसावजी ने इसकी मंजूरी दी। सचमुच देश को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसकी तरफ से आज की नीति और भारत स्वस्थ कब होगा? जब सभी विधाओं के डॉक्टर्स एक मंच पर एक साथ आकर रोगी के हित में सोचेंगे। आज चिकित्सा पद्धति अपने दायरे में तो पूर्ण है, लेकिन दायरे से बाहर अपूर्ण है। इसीलिए ये समय है इंटीग्रेटेड अप्रोच का, और इसीलिए अगर सभी चिकित्सक एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर रोगी के स्वास्थ्य के हित में सोचेंगे तो डॉक्टर सुधीर खेदावत जी का सपना पूरा होगा। मुझे खुशी है डॉक्टर खेदावत जी ने इसकी मंजूरी। इस पूरे सेशंस में आपको एक से बढ़कर एक टॉपिक्स पर सुनने को मिलेगा। सारे ही सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे डॉक्टर अनीता ठाकुर का सेशन हाउ डेड मूवमेंट वाज ब्रोट बैक टू लाइफ, स्लीप थ्रू स्लीप बाय डॉक्टर अंकिता अग्रवाल, नेचुरल ब्रीथिंग बाय डॉक्टर उषा, 16 चक्रास मेथोडोलॉजी बाय डॉक्टर मेहर मास्टर नीस, 3 फिंगर टेक्निक्स बाय डॉक्टर सुधीर खेदावत जी, साउंड एंड म्यूजिक एज मेडिसिन बाय डॉक्टर सुजाता सिंह जी। रियर एडमिरल राकेश पंडित जी का टॉपिक भी हम आज ही सुनेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। तब तक हम इसे एक सस्पेंस रखते हैं। मतलब ये कि इन 3 दिनों के सेशन में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे और आपस में एक दूसरे को कुछ देकर भी जाएंगे। डॉक्टर अनीता ठाकुर का सेशन और भी कुछ इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, जैसे इफेक्ट ऑफ इमोशन ऑन अनबॉर्न, डॉक्टर माइंड पावर इम्यूनिटी, हाउ टू रिवर्स डायबिटीज, past life regression and role of hypnosis in mind bacteria। बाकी आप सब जानते ही हैं, आपके हाथ में भी पेपर्स है। इस इंटरेस्टिंग सेशन में हम सभी साथ बने रहेंगे। हमारे साथ भी देश के कोने कोने से डेलीगेट्स आए हैं। दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, कश्मीर, देश और विदेश से भी आए हैं। तो क्यों न एक बार हम सभी एक दूसरे का नॉलेज मिलेगा, राउंड ऑफ अप्लॉज से स्वागत करें और आपस में एक दूसरे को कुछ देकर भी जाएंगे। अब मैं बिना देर किए माँ सरस्वती का आह्वान करना चाहूंगी, जिसे हम सरस्वती वंदना कहते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड रोल ऑफ हिप्नोसिस इन माइंड बैक्टीरिया। बाकी आप सब जानते ही हैं, आपके हाथ में भी पेपर्स है। इस इंटरेस्टिंग सेशन में हम सभी साथ बने रहेंगे। हमारे साथ भी देश के कोने कोने से डेलीगेट्स आए हैं। दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, कश्मीर, देश और विदेश से भी आए हैं। तो क्यों न एक बार हम सभी एक दूसरे का नॉलेज मिलेगा, राउंड ऑफ अप्लॉज से स्वागत करें और आपस में एक दूसरे को कुछ देकर भी जाएंगे। अब मैं बिना देर किए माँ सरस्वती का आह्वान करना चाहूंगी, जिसे हम सरस्वती वंदना कहते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सरस्वती वंदना हम सरस्वती पूजा के बाद करेंगे। मैं अपने सारे चीफ गेस्ट और गेस्ट को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारी चीफ गेस्ट, मोस्ट रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर द ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, डॉक्टर मेहर मास्टर नीस। एक दूसरे का राउंड ऑफ अप्लॉज से स्वागत करें और उन्हें साथ लेकर आ रहे हैं हॉलिस्टिक मेडिसिन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉलिस्टिक मेडिसिन के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर खेदावत जी। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेजर जनरल डॉक्टर MP सिंह को। सरस्वती वंदना हम स्टेज पर माँ सरस्वती के आह्वान और दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित है रियर एडमिरल राकेश पंडित जी। सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारी चीफ गेस्ट, मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे साथ रिनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर M मूर्ति, उन्हें भी स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। मेहर मास्टर नीस।
असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृतमया। ओम शांति। प्रत्येक शुभ कार्य के साथ दीप प्रज्वलन की रीति लगभग निश्चित कर देती है कि प्रारंभ किया गया कार्य कुशलता पूर्वक अपनी संपन्नता को प्राप्त करेगा व जीवन के मूल्य और संस्कार के साथ आगे पथ प्रशस्त करेगा। के लिए आमंत्रित है मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे साथ से रेनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एम मूर्ति स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। मैं हर मास्टर हूँ। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृतमया। ओम शांति। प्रत्येक शुभ कार्य के साथ दीप प्रज्वलन की रीति लगभग निश्चित कर देती है कि प्रारंभ किया गया कार्य कुशलता पूर्वक अपनी संपन्नता को प्राप्त करेगा व जीवन के मूल्य और संस्कार के साथ आगे पथ प्रशस्त करेगा। मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे साथ से रेनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एम मूर्ति स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। मैं हर मास्टर हूँ। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृतमया। ओम शांति। प्रत्येक शुभ कार्य के साथ दीप प्रज्वलन की रीति लगभग निश्चित कर देती है कि प्रारंभ किया गया कार्य कुशलता पूर्वक अपनी संपन्नता को प्राप्त करेगा व जीवन के मूल्य और संस्कार के साथ आगे पथ प्रशस्त करेगा। मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे साथ से रेनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एम मूर्ति स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। मैं हर मास्टर हूँ। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृतमया। ओम शांति। प्रत्येक शुभ कार्य के साथ दीप प्रज्वलन की रीति लगभग निश्चित कर देती है। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। को प्राप्त करेगा व जीवन के मूल्य और संस्कार के साथ आगे पथ प्रशस्त करेगा। मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे साथ से रेनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एम मूर्ति स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। मैं हर मास्टर हूँ। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृतमया। ओम शांति। प्रत्येक शुभ कार्य के साथ दीप प्रज्वलन की रीति लगभग निश्चित कर देती है। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। को प्राप्त करेगा व जीवन के मूल्य और संस्कार के साथ आगे पथ प्रशस्त करेगा। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें।
डॉक्टर सुधीर जी ने हीलिंग पर्पस के लिए एक गीत लिखा। उन्होंने मुझे इसे गाने और रिकॉर्ड करने का आग्रह किया और उनके इस आग्रह को आदेश मानकर मैंने इस गीत को कोरोना काल में रिकॉर्ड भी किया था। लेकिन बाद में मुझे पता चला इस गाने को या इस गीत को, इस रचना को रिकॉर्ड करते समय मुझे विशेष अनुभूति हुई और शायद उस अनुभूति को आप भी महसूस करेंगे जब आप इसे सुनेंगे। इस गीत को डॉक्टर साहब ने हीलिंग पर्पस के लिए यूज किया। उन्होंने अपने कई पेशेंट्स को सुनाया और मैं अपने आप को इसके लिए बहुत बहुत क्या कहें, मतलब डॉक्टर सुधीर जी प्राउड फील करती हूँ कि सर ने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मेरी आवाज इस गीत के लिए गाने और उचित समझने का आग्रह किया। तो और मैं आपको वही रचना सुनाने जा रही हूँ। मैंने इस गीत को जैसे कई लोगों को सुनाकर उन्होंने हीलिंग एक्सपेरिमेंट किए और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल चले। मेरा अनुभव है इस रचना को आप सिर्फ कान से नहीं दिल से सुनिए, आंख बंद करके महसूस कीजिए। इस अनुभूति को आप भी महसूस करेंगे जब आप इसे सुनेंगे। इस गीत को डॉक्टर साहब ने हीलिंग पर्पस के लिए यूज किया। उन्होंने अपने कई पेशेंट्स को सुनाया और मैं अपने आप को इसके लिए बहुत बहुत क्या कहें, मतलब प्राउड फील करती हूँ कि सर ने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मेरी आवाज इस
गीत के लिए उचित समझे तो मैं आपको वही रचना सुनाने जा रही हूँ जिसे कई लोगों को सुनाकर उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए। मैं अभी इस रचना को आप सिर्फ कान से दिल से सुनिए, आंख बंद करके महसूस कीजिए। अनुभूति को आप भी महसूस करेंगे जब आप इसे सुनेंगे। डॉक्टर साहब ने हीलिंग पर्पस के लिए यूज किया। उन्होंने अपने कई पेशेंट्स को सुनाया और मैं अपने आप को इसके लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने इतने पेशेंस से सुना और आपको जो अनुभूति हुई वो आप जब अपना चांस आए तो जरूर बताएं। आप में से किसी को कोई अनुभूति हुई इस प्रेयर के समय? हाँ, खड़े होके बताएं। क्या अनुभूति हुई? और इधर हेलो। हाँ जी। जब आप गा रहे थे तो हमने आंखें बंद करी और हमें इतनी प्योर वाइट लाइट दिखी जिसमें एनर्जी मूवमेंट था एंड लाइक आई वाज नॉट एबल टू कम आउट फ्रॉम देयर। आप बताएं। आप में से किसी को कोई अनुभूति हुई इस प्रेयर के समय? मुझे अनुभूति खड़े हुई होके बताएं। परमात्मा की आध्यात्मिक पावर की अनुभूति हुई। वेरी गुड। हाँ, और माइक दें। आत्मा को झकझोर दिया इस सॉन्ग ने और बिल्कुल हिल गया आदमी अंदर से। तो हमने आंखें बंद करी और हमें इतनी प्योर वाइट उधर दें माइक जिसमें प्लीज। मूवमेंट था एंड गुड मॉर्निंग। ये गाना मैंने पहले बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन जब ये सुना तो मेरी बॉडी फुल्ली जो ऑरा था बॉडी का बहुत एक्सपेंड किया और एक सुखद अनुभूति जो फील है। वेरी गुड। हाँ जी, उधर दें। परमात्मा की अब आपको पावर की प्लीज। वेरी गुड। नमस्कार। ये गाना वाकई हमने सबने बहुत बार सुना होगा, लेकिन छोटे से शब्दों के परिवर्तन से आत्मा में कितनी प्योरिटी आती है। और फिर जिस आवाज में आज हम सबने ये सुना, मुझे खुद फील हुआ कि इतनी शांति हम शायद कभी और नहीं पा पाते यदि हम इस आवाज को इस माहौल में नहीं सुनते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। राजेश जी जब ये सुना तो एक गायिका के साथ आज हीलर का पद प्राप्त कर रही है। एक्सपेंड किया और अच्छा, एक सुखद अनुभूति एनीबॉडी है? जो फील है। हाँ, वेरी गुड। आरती बताएं। परमात्मा की अब आपको माइक दे बेटा। वेरी गुड। नमस्कार। ये गाना वाकई हमने सबने बहुत बार सुना होगा। कोरोना काल में 5000 लोग इस प्रेयर से लाभान्वित हुए हैं। उसमें 2 कैंसर के केस भी हैं जिनको चमत्कारिक लाभ हुआ है 1 महीना सुनने के बाद। हम शायद कभी और नहीं पा पर यहाँ आके ही मुझे बहुत अच्छा लगा और शुरुआत इतनी अच्छी है तो अंजाम बहुत ही अच्छा होगा। राज राजेश्वरी जी की आवाज ने माहौल को इतना सुखद और खुशनुमा बना दिया है और साथ में मुझे पीस और पॉजिटिविटी का एनर्जी मिली है। तो ये बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच आरती। हाँ, माइक दे बेटा। इनको दे माइक मैडम। चित्रा जी खड़े हुए। कोरोना काल में 5000 लोग इस सभी को चरण स्पर्श। डॉक्टर साहब का गाना और दीदी की मधुर आवाज दोनों कॉम्बिनेशन से अद्भुत चमत्कार की अनुभूति हुई है। जैसे डॉक्टर साहब मुझे 5 लाइट में लेके गए थे, मैं तो कुछ क्षणों के लिए उसमें पहुंच गई थी। वो डॉक्टर साहब के शब्दों के माध्यम से इंदौर में 8 लोग कोमा से बाहर आए हैं। और साथ में आज मैं डॉक्टर साहब की शक्ति के बारे में आपको बता रही हूँ। वो इंदौर में प्रेजेंट है वो लोग जो कोमा से बाहर आए हैं। बहुत विशाल चर्चा है, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगी, पर अद्भुत शब्द आपने गाने में मिलाए हैं और अद्भुत संगीत दीदी ने दिया है। मैं बहुत अपने आप को धन्य समझती हूँ कि मैं लास्ट मोमेंट पर डॉक्टर साहब का जब कल फोन आया कि दूसरा प्रोग्राम चेन्नई जाना था, वो चेंज करके यहाँ आ गई। मैं धन्यवाद देती हूँ भाई साहब को। उसमें पहुंच गई थी वो डॉक्टर साहब के शब्दों के। इस गाने को बहुत बार पहली बार सुना हूँ, लेकिन आज जो सुना हूँ उसका इफेक्ट ऐसा महसूस हुआ जैसे कि फिर से सहस्त्रार चक्र से कोई चीजें एंटर कर रही है और पूरे शरीर में झंझनाहट हो रही थी और ऐसा लगा मैं ट्रांस में पहुंच गया बिना कोशिश के। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। थैंक यू।
शब्द आपने गाने में मिलाए हैं और अद्भुत संगीत दीदी। नमस्ते सभी को। जैसे सभी लोगों ने कहा, इस गाने को कई बार सुना है, लेकिन आज सुनने के बाद ऐसा लगा दूसरा प्रोग्राम इसमें इतना दर्द था ना कि नेगेटिव काइंड ऑफ इमोशन हम सभी के अंदर बहुत रहते हैं। तो जैसे सालों पुराना वो दर्द बाहर निकलो और आंख पर से आंसू बह गए। थैंक यू सो मच। भैया उसका इफेक्ट ऐसा महसूस हुआ जैसे कि फिर से सहस्त्रार चक्र से कोई चीजें एंटर कर रही। डॉक्टर मनोहर भंडारी, आप MD हैं। ऐसा लगा मैं ट्रांस में पहुंच गया। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। थैंक यू। दरअसल दोनों बातें हुई है इस गीत में। नमस्ते एक सभी तो को। जैसे सभी लोगों ने कहा, मैं सबको 1978 से जानता हूँ ऐसा लगा इसमें और दर्द था ना कि नेगेटिव काइंड ऑफ इमोशन हम सभी के अंदर सर को मैंने पाया कि बड़े महान स्वार्थी सालों हैं। पुराना वो दर्द बाहर निकलो और तो स्वार्थ क्या है उनका? थैंक यू सो मच। उनका स्वार्थ है कि कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं रहे। ये बहुत बड़ा, जैसे कि फिर से और उस स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनकी बेचैनी में देखता रहता हूँ। आप MD मैं हैं। 1978 से देख रहा हूँ ऐसा लगा मैं ट्रांस में पहुंच गया। और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। इस गीत में विशेषता ये थी, दोनों बातें इसमें सर की भावनाएं थी और राज राजेश्वरी जी का जो मेस्मराइजिंग स्वर है वो था। तो निश्चित रूप से आप सब लोगों को अंदर से आह्लादित किया होगा स्वर ने। और यदि हम किसी भी पेशेंट को इस गीत को, तो स्वार्थ क्या है उनका, लगातार सुनने के लिए कहेंगे यदि वो बेड रिडन है और सुन सकता है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आएगा। मेरे साले साहब को गले का कैंसर हुआ था, उनका ऑपरेशन हुआ था, देख रहा हूँ उनकी आवाज पूरी तरह से चली गई थी। और एक दिन सर का फोन आया कि मनोहर कोरोना काल में कुछ नया करना है। और कैसे बताइए का जो बोले कुछ पेशेंट कुछ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सब लोगों को मैंने सोचा कि चलो मैं दुनिया की दृष्टि से स्वार्थी हूँ, सर तो परमार्थ की दृष्टि से। मैंने अपने बड़े भाई को, जिनको सिर्फ 2 घंटे में जाती थी, उनको सर का पेशेंट बनाया। मेरे साले साहब को अपना उनका पेशेंट बनाया। और मेरे गांव के किडनी के पेशेंट यंग लड़का का कैंसर हुआ, उसको मैंने सर का पेशेंट बनाया। और सर की फोन पर ही जो आवाज थी और जो टेक्निक थी कि मनोहर उसका जादू प्रभाव तीनों पर। मेरे भाई 25-30 सालों से 2 घंटे ही सो पाते थे। उनकी निद्रा में काफी सिग्निफिकेंट चेंज आया। सोचा कि चलो मेरे साले साहब बोलने लगे, मतलब दुनिया की दृष्टि से स्वास्थ्य प्रभाव की दृष्टि से। और किडनी के पेशेंट का भी क्रिएटिनिन काफी डाउन हुआ और बड़ा खुश था। सबसे बड़ी बात ये सर ने उनका पेशेंट बनाया तीनों से। चलो मुझसे, मेरे भाई के लिए तो नहीं लेते, परंतु तीनों से किससे फीस नहीं मांगी। उसको मैंने सर को महास्वार्थी बोलता हूँ, क्योंकि जिसका स्वार्थ ही परमार्थ है वो मटेरियल के लिए क्या हाथ आगे चलाएगा। मैं सर को, मेरे भाई प्रणाम करता हूँ और मेरी इच्छा है कि आप सब खड़े होकर तालियों के साथ सर का सम्मान करें। मेरे साले साहब बोलने लगे, मतलब दुनिया की दृष्टि से स्वास्थ्य की दृष्टि से। और किडनी के पेशेंट का भी क्रिएटिनिन काफी डाउन हुआ और बड़ा खुश था। सबसे बड़ी बात ये सर ने उनका पेशेंट बनाया तीनों से। चलो मुझसे, मेरे भाई के लिए तो नहीं लेते, परंतु तीनों से किससे फीस नहीं मांगी। उसको मैंने सर को महास्वार्थी बोलता हूँ, क्योंकि जिसका स्वार्थ ही परमार्थ है वो मटेरियल के लिए क्या हाथ आगे चलाएगा। मैं सर को, मेरे भाई प्रणाम करता हूँ और मेरी इच्छा है कि आप सब खड़े होकर तालियों के साथ सर का सम्मान करें। मेरे साले साहब बोलने लगे और तीनों से मेरे भाई के लिए तो नहीं लेते। हम सभी ईश्वर से मंगल कामना करते हैं
डॉक्टर सुधीर शेखावत जी का हाथ हमेशा हमारे सर पर सर में यूं ही बना रहे। आपको आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप हम सबके साथ बने रहें और हम सब आपसे स्वास्थ्य लाभ और मेंटल पीस लेते रहें। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर हम सभी ईश्वर से मंगल कामना करते हैं। डॉक्टर सुधीर शेखावत जी का हाथ हमेशा हमारे सर पर सर में यूं ही बना रहे। आपको आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप हम सबके साथ बने रहें और हम सब आपके स्वास्थ्य लाभ और मेंटल पीस लेते रहें। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर This Acupressure is the symbol of unity of every soul with the creator of the universe, and which unites all the people of all the regions of the whole world. It was the wisdom of the Achaemenid Emperor Darius the Great, more than 3,000 years ago, that created this symbol to unite the Achaemenid Empire, 28 kingdoms. And this is what Dr. Khetawat has done. He has united all the kingdoms of the different methods of holistic medicine and allopathy, homeopathy, everything together on this platform. He really deserves the Acupressure. Is the symbol of unity of every soul with the creator of the universe, and which unites all the people of all the regions of the whole world. It was the wisdom of the Achaemenid Emperor Darius. अब मैं इंस्टीट्यूट ऑफ हॉलिस्टिक मेडिसिन का इंट्रोडक्शन देने के लिए डॉक्टर अनीता ठाकुर को डैश पर इनवाइट करना चाहती हूँ। 28 kingdoms. And this is what Dr. Khetawat has done. He has united all the डॉक्टर kingdoms of the अनीता different methods of holistic medicine. डॉक्टर अनीता को प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी ने इनके यूनिक अचीवमेंट एंड सक्सेस के लिए सम्मानित किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड पावर के द्वारा इन्हें 2030 में मेमोरी गुरु के टाइटल से नवाजा गया है। इन्होंने एमनेसिया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इंसोम्निया, मेंटल टेंशन को कई केसेस में हीलिंग दी है। हम कह सकते हैं डॉक्टर अनीता ठाकुर रेकी मास्टर हैं, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, अन एक्सपर्ट एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, अ लीडिंग एस्ट्रोलॉजर हैं, अ योगा एक्सपर्ट हैं, एरोमाथेरेपी एक्सपर्ट हैं और कलर थेरेपिस्ट। हम कह सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के एक स्तंभ है, आधार स्तंभ है। अनीता जी स्टेज पर आए हैं और के यूनिक अचीवमेंट एंड सक्सेस के लिए सम्मानित किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड पावर के द्वारा इन्हें 2000 में मेमोरी। सबसे पहले तो मैं सभी आमंत्रित अतिथियों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की शोभा उसके अतिथियों से होती है। सबसे पहले मैं हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं, जो गुरुजी अमृत गुरुजी हैं, जो हमें अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, मैं चाहूंगी पहले आप उनका वीडियो प्ले कर दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन के एक स्तंभ है, आधार स्तंभ है। अनीता जी स्टेज आप फ्लोरिडा से अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कर रहे हैं हमारी इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए। सबसे पहले मैं सभी आमंत्रित अतिथियों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ उसके अतिथियों से। सबसे पहले मैं हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं, मेरे आपके गुरुजी हैं और आपके लाखों फॉलोअर्स हैं। आज हमें उनका आशीर्वाद मिला तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हम जीवन में और अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। अब सबसे पहले सरस्वती वंदना के बाद अतिथि देवो भव, अतिथियों के सम्मान की जो परंपरा होती है उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी प्रोफेसर डॉक्टर मास्टर मेहर मूस का सम्मान करने के लिए हमारी विभा सिंगल दीदी को।
कि वे स्टेज पर पधारें और मैडम का पुष्पहार से सम्मान करें। सबसे पहले मैं हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं, मेरे आपके गुरुजी हैं और आपके लाखों फॉलोअर्स हैं। आज हमें उनका आशीर्वाद मिला तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हम जीवन में और अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। अब सबसे पहले सरस्वती वंदना के बाद अतिथि देवो भव, अतिथियों के सम्मान की जो परंपरा होती है उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी प्रोफेसर डॉक्टर मास्टर मेहर का सम्मान करने के लिए हमारी विभा सिंगल जी को कि वे स्टेज पर पधारें और मैडम का पुष्पहार से सम्मान करें। अब मैं डॉक्टर खितावत सर से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे माननीय अतिथि डॉक्टर एम मूर्ति जी का पुष्पहार देकर सम्मान करें। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हम जीवन में और अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। अब सबसे पहले सरस्वती वंदना के बाद अतिथि देवो भव, अतिथियों के सम्मान की जो परंपरा होती है उसके लिए बुलाना चाहूंगी हमारी प्रोफेसर डॉक्टर मास्टर मेहर का सम्मान करने के लिए हमारे रियर एडमिरल श्री राकेश पंडित जी के सम्मान के लिए मैं हमारी राजस्थान संस्था के प्रमुख डॉक्टर आर्यन वर्मा साहब से अनुरोध करती हूँ कि वे पधारें और पुष्पमाला से एडमिरल साहब का सम्मान की वे हमारे माननीय अतिथि डॉक्टर एम मूर्ति जी का पुष्पहार देकर सम्मान दें। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हम जीवन में और अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। अब सबसे पहले सरस्वती वंदना के बाद अतिथि देवो भव, अतिथियों के सम्मान की जो परंपरा होती है उसके लिए हमारे लिए एडमिरल पूरे राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में आपने जो एक्यूप्रेशर राजस्थान संस्था के प्रमुख एक्यूप्रेशर चिकित्सा का प्रचार प्रसार किया है और वो बहुत ही अनुकरणीय है, अतुलनीय है। अतिथि डॉक्टर एम मूर्ति अब मैं हमारे मेजर जनरल MP सिंह साहब के स्वागत के लिए हमारी संस्था की सचिव श्रीमती प्रतिभा जोशी से डॉक्टर प्रतिभा जोशी मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे पधारें और जनरल साहब का पुष्पहार से सम्मान। प्रचार प्रसार किया है और वो हमारी संस्था ने और डॉक्टर खितावत साहब ने अपने इंदौर संस्था के द्वारा और बाकी जो भी ब्रांचेस हैं उनके साथ मिलकर के पिछले 50 वर्षों में जो भी कार्य किए हैं उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगी। मैं से अनुरोध करती हूँ कि वे पधारें और जनरल साहब का पुष्पहार से सम्मान। डॉक्टर साहब ने जो भी उत्कृष्ट कार्य किए हैं अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रमुखता से उन समाचारों को स्थान दिया गया है और सम्मोहन चिकित्सा से ऐसे अनेक असाध्य रोगियों को भी स्वस्थ किया जिनको मेडिकल साइंस ने पूरी तरह नकार दिया। अनुरोध करती हूँ कि वे पधारें और अनेक मैगजीन्स में देश विदेश की जिसमें डॉक्टर साहब के लेख प्रकाशित हुए जिन्हें पढ़कर लाखों लोग लाभान्वित हुए। ये बहुत क्रिटिकल केस था जो हमारे संस्था पे आया था। इस बच्चे ने जीवन की पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। ये एक बस में कंडक्टर था और बस इसके ऊपर गिर गई थी। जब ये पिकनिक पर गए थे उस दौरान इसके शरीर की हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और जब उस समय इसने पूरी उम्मीद छोड़ दी तो डॉक्टर साहब ने उसके अंतर मन की शक्ति को बढ़ा करके
और उसे फिर से जीने की एक उम्मीद दिखाई। और ये जब पूरी तरह स्वस्थ हुआ तो इसका नाम था सिकंदर। तो पेपर में जो न्यूज आई थी उसकी हेडिंग थी सिकंदर का मुकद्दर बदला। साहब के लेख प्रकाशित हुए जिन्हें पढ़कर लाखों लोग, ये महिला न्यूरोपैथी की बीमारी से पीड़ित थी और सभी जगह से निराश होकर के जब ये हमारे केंद्र पर आई तो उस समय इसकी हालत ये थी कि इसके माता पिता इसे बिल्कुल घसीट कर लाते थे, वो चल के नहीं आ पाती थी, वो अपने हाथों से माचिस की तीली भी नहीं उठा पाती थी। तो उस समय हमारी संस्था के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर महावीर जैन साहब जो कि MSMD है, पहले उन्होंने इसको चेक किया। वो हमारी संस्था के कंसल्टेंट डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब जब हमारे बीच में आज उपस्थित हैं, डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप स्टेज पे आए हैं। सिकंदर का मुकद्दर बदला। डॉक्टर साहब के लेख प्रकाशित हुए जिन्हें पढ़कर लाखों लोग, ये महिला न्यूरोपैथी की बीमारी से पीड़ित। अंकल का सहयोग हमें हमेशा होकर के जब ये हमारे केंद्र पर आई तो पूरे भारत में अगर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को वैज्ञानिक चोला किसी ने पहनाया है तो डॉक्टर महावीर जैन। आप MSMD दोनों हैं और संस्था के सभी मरीजों को फायदा हुआ है, इसको प्रमाणित किया। हमारी संस्था में जब भी कोई पेशेंट इस प्रकार से क्रिटिकल केस आता है तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को बुलाते हैं। वो उसकी फर्स्ट डे की फाइंडिंग्स देते हैं कि उसकी स्थिति क्या है और उसके बाद फिर हम लोग उसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और ट्रीटमेंट के बाद 1 महीने के बाद उसमें क्या चेंजेस आए, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, वो सारी फिर डॉक्टर साहब उसको चेक करते हैं और चेक करने के बाद वो अपने फाइंडिंग्स देते हैं। तो इससे हमें मतलब काफी सपोर्ट मिलता है। जो उसके हाथ में जो पुस्तक है वो करीब 5 किलो से ज्यादा वजन की थी। ये बच्चा जब छोटा था तो अपनी बहन के हाथों से गिर गया था और उसके सिर में चोट लगी थी। 22 सालों तक ये अपने छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहा। इसे मायोपैथी की प्रॉब्लम बताई गई थी। डॉक्टर्स ने बोला था ये जीवन में कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा, कभी भी ये सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। लेकिन जब इसके पिताजी को हमारे केंद्र का पता चला, उसको लेकर कर और यहाँ पर करीब 3 माह की चिकित्सा में इसे पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। डॉक्टर साहब ने समूह चिकित्सा के द्वारा, हिप्नोथेरेपी के द्वारा उसके अंतर्मन की शक्ति को बढ़ाया और एक्यूप्रेशर चिकित्सा के द्वारा उसके शरीर की शक्ति को बढ़ाया और आज ये बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम आता है, किरण प्रोग्राम, उसमें भी इसकी कहानी को शामिल किया गया था। ये महिला, इन्हें एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी। इनकी जो स्पाइन थी वो पूरी तरह झुक चुकी थी। ऊपर आप देख सकते हैं वो अपनी बेटी के साथ जो खड़ी हैं किस प्रकार से खड़ी हैं। हमारी संस्था की जो सचिव हैं डॉक्टर प्रतिभा जोशी मैम, उनने इनका ट्रीटमेंट किया और 1 माह की चिकित्सा में ये पूरी तरह स्वस्थ हुई। आप देख सकते हो वो पूरी तरह स्वस्थ होकर के खड़ी है। ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस था। ये पूना से आए थे, बॉम्बे पुणे हाईवे पे इनकी गाड़ी का मतलब इनकी जो बाइक थी उसका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था और गर्दन के यहाँ चोट लगने के कारण नीचे का पूरा भाग पैरालाइज हो गया था। जब ये यहाँ आए तो इनकी हालत ये थी कि इनके हाथ पैर कुछ भी नहीं चलते थे। डॉक्टर्स ने ये कहा था कि आप जीवन भर सिर्फ आंखें चला सकते हैं अपनी, मतलब मेडिकल साइंस के हिसाब से ये 70-80% से ज्यादा डिसेबल घोषित किया जा चुका था इन्हें। लेकिन हमारी संस्था में करीब 3 माह में इन्हें बहुत फायदा हुआ और ये स्वस्थ होकर के वापस अपने वहां गए और NDTV इमेजिंग पर इनकी कहानी को, इसकी स्टोरी को शामिल किया गया था। ये जलगांव से आए थे, रेमंड कंपनी में डॉक्टर साहब का कैंप लगा था, वहां पर इन्हें पता चला तो इन्हें लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोला, पर ये ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे। तो जब सर के पास आए तो सर ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें चिकित्सा दी। और सर के बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है, हम लोग को खुद बहुत आश्चर्य होता है कि जब किसी रोगी के दर्द से संबंधित बिंदु पर आप दबाव देते हैं तो उसका वर्षों पुराना दर्द खत्म हो जाता है। एक बार एसपी ऑफिस में हम लोग की वर्कशॉप चल रही थी, वहां पर एक एसपी साहब थे जो कि खंडवा से आए थे और उनको लगभग 18 साल से कमर में दर्द था, वो झुक नहीं, हाथों में बहुत चपा।
सर के पेशेंट्स में सामान्य व्यक्ति ही नहीं, अनेक जनमान्य नागरिकों के साथ हमारे फिल्म स्टार भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं ऊपर सुनील दत्त साहब, नीलम मेहरा, दारा सिंह जी, विजेंद्र घाटगे, ये अधिकतर लोग सर से चिकित्सा ले चुके हैं। ये जो केस था ये भी मायोपैथी का केस था और ये हमारी श्वेता मैम ने किया था और ये बंदा भी चल नहीं पाता था, ये पेशेंट बहुत परेशानी होती थी, लेकिन 1 माह की चिकित्सा में आप देख सकते हैं वो पूरी तरह सामान्य होकर खड़े। जबकि मायोपैथी के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि मेडिकल साइंस में इसे बिल्कुल असाध्य करार दिया गया है। उनके हिसाब से पेशेंट जो होता है वो एक लाइव वेजिटेबल की तरह होता है, ना वो अपने हाथों से हिला सकता है, ना पैर, कुछ भी वो अपने काम नहीं कर सकता। लेकिन हमारे एक्यूप्रेशर चिकित्सा और हिप्नोथेरेपी के उससे बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में ये न्यूज जो आई थी उसमें मेडिकल साइंस फेल्स बट हिप्नोसिस एक्यूप्रेशर वर्क। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी ये टच माय थंब विद द फिंगर, I feel I have taken charge on my involuntary processes, and today during my presentation I will see that everyone is conditioned for 3 finger. Even if the parameters are against your examination report, if you enter in coma stage and your mind has been conditioned for 3 finger, the moment you press with your thumb, I think you can open your eyes. Near-death experience can be reversed. Along with my team, Dr. Anita and others, a dead woman brought back to life. It was very surprising when Dr. Mahavir Jain, Dr. M.C. Admira from Choitaram Hospital were invited to examine a lady who is already declared by Dr. Sharad Pandey of JJ Hospital that she is about to leave the world. Subclavicle and popliteal pulses were absent. She closed her eyes. She was brought by charter plane in a very critical condition. I told Dr. Anita and other team members. Dr. M.C. Admira was shocked. He said, Doctor, why you are making efforts? She's only for a few minutes. Her critical condition was very bad. But she told her husband, before taking me to burn, I want touch of Dr. Ketawat. Because she used to read my articles for 10 years in Kadamni, Adbhut Karishme. And her mind was so much conditioned, if Dr. Ketawat will touch, I can win on death. So I was telling her, I am Dr. Ketawat touching your head. I am Dr. Ketawat touching your head. Dr. M.C. Adverba gave me in writing, she is no more, no pulse, no BP, her eyes were closed, no pupillary changes. But after 2 days, she opened the eyes and she said, Doctor, I was, even with my closed eyes, I was expecting your healing touch. All papers of India and abroad, London Times, New York Times, Khaleej Times, Gulf News, published with top heading, a dead woman brought back to life, a miracle in Indore in India. This was the news. No doctor of the world can ever claim that he cured a patient. It is the faith of the patient which results in recovery. I have treated many incurable patients in my 50 years of journey from pain to pleasure. And I found nothing is incurable. Only one has to eat to reach to cure. So, मेरे इस बीमारी का क्या विकल्प है? मैंने कहा जहां किसी बीमारी का विकल्प नहीं वहां से प्रारंभ होती है वैकल्पिक चिकित्सा।
Alternative therapy is now no more alternate, it is an individual therapy. And people have realized, I had an opportunity to treat governors, to treat many allopathy doctors, और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि मेरे डॉक्टरों की लिस्ट, मेरे अपने रोगियों की लिस्ट में सिर्फ आम जनता और साइंटिस्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही नहीं, एलोपैथी डॉक्टर्स भी हैं. आई एम गेटिंग ENT सर्जन फॉर हियरिंग लॉस प्रॉब्लम. आई एम गेटिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट फॉर आइज प्रॉब्लम. तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे चिकित्सकों को भी सुपर स्पेशलिस्ट बना दिया जाए. जिसने घुटने का दर्द का इलाज किया, सैकड़ों मरीजों के घुटने ठीक किए, ही इज माई दिस ऑर्थोपेडिक सर्जन, ही इज माई ऑर्थोपेडिक फिजिशियन. डॉक्टर अरुण वर्मा हमारे बीच में आए हैं. डॉक्टर साहब प्लीज कम. ये डॉक्टर साहब यहाँ भंडारी हॉस्पिटल में थे और इन्होंने मेरे को चैलेंज किया कि आई डोंट बिलीव इन ऑल्टरनेटिव थेरेपी. आई एम मेडिकल डॉक्टर. अगर आपकी थेरेपी में दम है तो मैं 5 साल आपके साथ में काम करूंगा और उसके बाद मैं प्रमाणित करूंगा कि ऑल्टरनेटिव थेरेपी वाकई में काम करती है कि नहीं. आई एक्सेप्टेड हिज चैलेंज. आई एक्सेप्टेड. और 5 साल इन्होंने मेरे यहाँ जो काम देखा, सबसे पहले तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब भाई देयर इज अ लिम्पिंग, आपके घुटने का दर्द ही ठीक करता हूं मैं. 1 महीने एक्यूप्रेशर करके इनका लिम्पिंग खत्म कर दिया. इन्होंने 5 साल मेरे यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार देखे. एक लेडी आई, उसको दिखता ही नहीं था, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. मेरे को डॉक्टर साहब कान में बोले, डॉक्टर साहब इसको तो वापिस कर दो, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का कोई इलाज ही नहीं है. देयर आर ब्लैक स्पॉट्स, हाउ यू विल रिलीज. मैंने कहा डॉक्टर साहब यू जस्ट ऑब्जर्व, आई विल कॉल यू आफ्टर 1 मंथ. उसको इन्होंने एग्जामिन किया पूरा 2 बार 4 बार कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसको सिखा के लाया हूं. फिर इन्होंने, मैंने कहा यू गिव मी योर रिपोर्ट. इन्होंने लिख के दिया केस ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नॉट क्योरेबल इन मेडिकल साइंस. मैंने उसका इलाज किया. उस समय भी इनको अंदर रखा कि देखो आप मैं क्या कर रहा हूं. और 1 महीने बाद ये वो व्यक्ति था जिसने मुझे अपने लेटर हेड पे लिख के दिया, retinitis pigmentosa is curable by alternative therapy. तो ये आपको बताएंगे. ये 5 साल इन्होंने मेरे साथ में काम किया, लाइक माई यंगर ब्रदर. और मेरे पास शब्द नहीं है. मेरे माँ बाप कहते थे कि अपने आलोचक को अपना प्रशंसक बनाओ, उसमें तुम्हारी जीत है. आई एक्सेप्टेड दिस चैलेंज. और जाते वक्त मेरे को बोल गए मैं अब चिकित्सक नहीं, आपका शिष्य हूं और ऑल्टरनेटिव थेरेपी को मैं सल्यूट करता हूं. आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर Khetawat and respected all the guests here on the dais. Actually, I never believed in alternative therapy when I joined this institute. One of my friends, he brought here for my osteoarthritis and a lot of pain. Severe that I was limping. I used to limp. Very painful condition. I think I suffered from that for about 2 years. Then my friend brought here and Dr. Khetawat did treatment with me. Under his expertise, so many alternative therapies, I, for the first time, saw that's happening. And after that, when I think I remember one book by Brian Weiss,
many lives, many masters. That incited me in 90s. I never thought I'll ever get this opportunity to go to US and then, here when I was treated by Dr. Ketawar, at that time, I learned hypnotherapy also and hypnoregression too. That way, I am practicing in allopathy, though I am an ophthalmologist, but I am practicing at the same time with these alternative modalities. I am practicing hypnotherapy, hypnoregression, and acupressure mainly. Other things, of course, he taught me, but I didn't much practice because of my own line of consultancy in ophthalmology in Jaipur. So I just got an opportunity to visit US, and there I met with Dr. Brian Weiss. 5 days workshop I attended. And down to the earth man, like sir here, he asked me, what do you do in hypnotherapy and hypnoregression? I said, I'm practicing hypnoregression. He said, can you tell me something about that? I said, definitely. Then I described one of the things which I noticed in my practice for the first time, though I practiced here under sir for 5 years. But there, in Jaipur, an ophthalmologist of repute, she was our guest in one of the few people they wanted to learn. So I just made 11 people were there in that. I demonstrated them and they wanted to learn something. 2 of the participants, when they actually, prior to that, I will tell you, I was with 11 people dealing with that. But at the same time, somebody asked if we can see an ophthalmologist and a gynecologist. We just want to see what is going on. I said, okay, you are welcome. I always welcome the allopaths here. Come and see. After 2 regressions, I just showed out of the participants. One lady ophthalmologist, she offered, can you hypnotize me? Can you do the hypnotherapy with me? Yeah, you can take me to regression. I said, so what have you seen so far? 2 cases you have seen. I can do that if you wish. I said, yes, I offer myself. I said, come on the couch. And then I regressed her. I asked her, what do you want to see in regression? She said, I just want to feel what is regression. I said, fine. Then I took, okay, which of the life you want to see? She said, just prior to this life. I said, fine, you're welcome. Now, just see what is going on. She took her time. Then she started howling and crying. So much so that everybody was very much frightened. I said, nothing frightened. Okay, tell me, are you Dr. Ma? Are you not a blind? क्या आप अंधे नहीं हैं? ये अंधे हैं? I said, what do you see? Phil, keep a mum. For 2 minutes, I did dealing. I always put here and with oh my oh, Then suddenly, a बहुत जोर के sigh उसका. सर आपको कुछ नहीं दिख रहा है. मैंने कहा नहीं मैं थोड़ा लोगों को पार्टिसिपेंट्स के ध्यान दे दिया था. Yes, now I can see.
Just you have to affirm that person. To say she goes more into the depths. Then she said, so see, I am seeing everywhere is chaos, 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 and violence, violence, and frightened. Face, if you see, just pathetic and frightened. Then, I said, what is going on? Again she kept mum. Then a huge cry, उसमें सही बात बताऊं मैं भी हिल गया उसमें कि इतनी ज्यादा जोर से चिल्लाया उसने अरे की बात उसके बाद फिर मैंने उनको मैंने कहा सी लाइफ consequences of lives, various lives, they make a book. See, and in Hindus here or in Hindi, that big lives are, in one form a book, and that is Granth we call. So all the lives which you have passed through, it has made a Granth, and one of the chapter represents one life for you. And in every instances, they are recorded in that. And one instance which I faced, she said, what I have faced? I said, yes, this is that chapter. And out of that chapter, one leaf, which I'm going to tear now from your subconscious and see what happens. डॉक्टर साहब ये लोग जानना चाहेंगे कि 5 साल के दौरान आपने उन बीमारियों में क्या देखा जो मेडिकल साइंस क्लेम करती है दे आर नॉट क्योरेबल. There are so many things. One of you have mentioned just now, retinitis pigmentosa. What was her condition before application? How much she improved? She improved to 100%. This is for the first time in India, a case reported of retinitis pigmentosa where she lost vision. She was examined by Dr. Arun Verma before application of our treatment, and after 1 month, she came on two-wheeler driving, which was a surprising that was very much Dr. surprising. Arun Verma. Thank you. Thank you so much, Dr. Saab. Now I want to request, I want to invite, or I can say, we want to invite and listen our chief guest, Professor Dr. Meher Master Moose, to shower on us her blessings by few words. She is Vice Chancellor of the Open International University of Complementary Medicine, Colombo. She is President of Zoroastrian College. She is pioneering promoting alternative therapies in India, and we feel so proud to have her among us. Main personality who has written the book Rainbow Colors of Light. She is honored by the Hamscott Award, वो अवार्ड जो इंडिया की पहली लेडी को मिला, और इनके बाद वो अवार्ड मदर टेरेसा को दिया गया. आदरणीय डॉक्टर मेहर मास्टर मूस, हम आपसे कुछ आशीर्वाद चाहेंगे. थैंक यू. May the blessings of Pak Dada Aura Master, may the blessings of Pak Dada Aura Master, all the Amesha Center, all the Yazatra, all the deities, all the Farokshi Faroha, the Mino, Dai, Ratu, Vakshuran, Namastoshos, Pitama, Zatrusha, Pegambasar, all the holy beings who have passed onwards to the heavenly abodes, the blessings of Shah Beram Vasavan, the Prince of Peace of our Aquarian age. May all the blessings be bestowed today, especially on our Honorable Dr. the pioneer of this conference today in Indore, on his team members,
on all the persons who are present here in this hall. And I would especially like to thank and welcome some of the persons here who are honoring this conference by being here. Our Indore Joint Department All India Head, Dr. Mrs. Anupama Jain, and her husband, Mr. Vikas Jain, are here. Dr. Ghanshyam Thakurji, he is also our Associate Center Head for Indore. He is an astrologer. Dr. Bhupin Vyas, and behind from Baroda, who is doing own color therapy, and from Ujjain, Dr. Abduliva Ali, and of course, here on this stage is Dr. Manamurthy ji, who has been with us for the last 40 years. And so many other great persons that I'm seeing here today. It fills my heart with joy. I would especially like to thank Ms. Khushit Cooper, who has been with our college now for the last 35 years. And she is the backbone and mainspring of organizing our 35 World Congresses. So I'm sure all of you have come in touch with her. Today, I would like to invoke the memory and especially the blessings of late Dr. Professor Sir Anton Jayasuriya, the pioneer and chairman of Medicina Alternativa in Sri Lanka, and before that he was also connected with Medicina Alternativa when it was started way back in Alma-Ata during the period of the Soviet regime, and thereafter its headquarters was moved to Holland, and from 1972 onwards the WHO Southeast Asian headquarters based in Delhi transferred the headquarters to Colombo. Why Colombo? Because of the far-sighted President of Sri Lanka, late President Jayawardene, who opened the doors of Medicina Alternativa and welcomed it by giving it the facility of the South Kaluvavilla Hospital to be used as the training center for doctors coming from all over the world. Why this? Because in that era, in that time period of 1962 to 72 for 10 years, when in the UN there was a big Cold War and Hot War going on between the two great power blocs, the USA and Soviet Union, American doctors who were wanting to learn the ancient system of acupuncture, which was preserved by China but originated here in India in the South Indian Lemurian civilization era, and was taken by the Siddha doctors to China and preserved there. Where could they go for learning acupuncture? Because Beijing Institute of Acupuncture in China, the doors were closed. UN at that time period did not recognize half the world's population and the largest continent and country as a nation. It recognized Formosa, Taiwan, at the UN. And so, if there's no country, no consulate, no embassy, where do you get your visas from? Where do you go if you cannot travel to a country which doesn't exist so far as the UN is concerned? See? To change all that, with the helping hand of Soviet Union at that time, the ambassador for the Soviet Union at the UN offered that in Kazakhstan, bordering China, there is a university where acupuncture is taught. So he opened the doors for training acupuncture to the Soviet Union. And for some time, the doctors from America and Europe went there, but they had a lot of problems. Because you see, an acupuncturist will say
this is your lung, and this is your large intestine, and this is your circulation. And the American doctor will say, "But my lungs are here, and my heart is not in my little finger." So there was a lot of communication problem. Also, American doctors don't know Kazakh language, Chinese language, Russian language. How do you communicate with this heart and this little finger? So this is the way, eventually, the headquarters were shifted to island paradise, Sri Lanka, through the foresight of that great president. And Dr. Anton Jayasuriya was sent along with a group of other doctors from Sri Lanka, all qualified MBBS doctors, to learn acupuncture. And that is how the doors of acupuncture were opened wide to all of us here, including Dr. Sudhir Khatawat. And I have been so proud that for the last 35 years, he and I have stood side by side, shoulder to shoulder, on the conference at Sri Lanka in Colombo, where the later presidents of Sri Lanka personally came, including President Jayawardene himself, when he was president, way back up to the 1990s, and handed over the awards, certificates, degrees to doctors from all over the world on the stage of the PIMICH, the hall in which all the conferences were held in Colombo, to give the international accreditation to Medicina Alternativa, which Dr. Sudhir Khatawat has done his best here in India to continue. And we also, I would like at this moment for all of us to stand in this hall today and give a standing ovation to this great gentleman, Dr. Sudhir Khatawat, who has brought us together on a platform which has united allopathy, homeopathy, Ayurveda, Naturopathy, Yoga, Siddha system. And I can always used to say that patient wants what? To be cured. And whether you use allopathy or homeopathy or anypathy, it is sympathy which cures the patient. And that is what he has done. He has brought us all together on the platform of sympathy. Yes. And I'm very proud to say that today in Indore, we have added to our center heads, main All India Jain Department center head is present here, Dr. Mrs. Anupama Jain. I'm sorry that Dr. Pranic Agrawal, who is a senior head here for Vascular Department, is missing in this hall, but I'm sure he will come either today or tomorrow to participate in this conference. But today we have added our original department, which is Medicina Alternativa, and through the Holistic Health Institute, founded by Dr. Sudhir Khatawat, we will continue to award the degrees and make this a center for alternative medicine for Indore. Thank you. Thank you for accepting this, and it is a great responsibility, because I'm sure the blessings of Dr. Anton are showered here on you and are fallen on your shoulders, on your mantle. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to say a few words to conclude. Zoroastrian College is no ordinary college. You cannot come there for BA or BSc or BCom or any of these degrees which are offered in every other university or colleges. It is created by the higher spiritual beings. The founders are not in this world. They're all above. The planning is from above. The movement and direction is from above. All of us are only channels to create a better world for all the creatures who are living on it. The souls of the mineral kingdom, the gemstones, the soil, the souls of the plants and the amoeba and the creatures that are evolving, the fish and the birds,
all the souls in the animal kingdom and the human kingdom and all these spiritual beings. This spiritual white light center is created for the purpose of transformation of consciousness to white light. And if it is in your karma, in your destiny to come there personally, or now we have internet and Zoom and all these IT technology methods, if it's there to come, you are all welcome. I especially would like to say thank you, although he's not present here, to Prestige University Chairman Dr. Davish Shane and his entire team. Dr. Davish Shane of Indore has done his MPhil, PhD, DSc degrees all through the Celestian College, and also lastly the DLIT, which enabled him to become the Chancellor of Prestige University. So we should all be very proud of Indore that this is the only center in the whole of India which has spread this knowledge and given its mantle for more and more people throughout the world to be illumined, enlightened, and become happy. Be happy and make others happy. थैंक यू सो मच मैम। हमारे बीच गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड पधार चुके हैं, मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। मिस्टर मनीष विश्नोई जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। चलिए, जब तक हम अपने अगले गेस्ट को सुनना चाहेंगे, आइए सर, हम तालियों से इनका स्वागत करेंगे। अब मैं स्पीच के लिए एक ऐसी पर्सनालिटी को इनवाइट करने जा रही हूँ, हम सर का स्वागत करेंगे। अब मैं स्पीच के लिए एक ऐसी पर्सनालिटी को इनवाइट करने जा रही हूँ जिन्होंने IR एंड UV पॉइंट डिस्कवर किए हैं and the negative earth radiation, which are most dangerous and responsible for chronic disease. आपको सेवा रत्न अवार्ड से PM देवगौड़ा द्वारा नवाजा गया है। कर्नाटका के CM द्वारा भी आपको धनवंतरी अवार्ड मिल चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिटायर्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इन्वेंटर ऑफ यूनिवर्सा और स्कैनर डॉक्टर M मूर्ति जी को। सर के लिए कुछ शब्द। जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। ऐसा ही कुछ आपने काम किया है। आइए मूर्ति साहब आपके सामने 5 मिनट अपना अनुभव बताएंगे ऑरा के बारे में, और इन्होंने एक स्पेशल मशीन बनाई है जिसके द्वारा रोगों का पता लगता है। नमस्ते डॉक्टर चेयरमैन डॉक्टर सुधीर शेखावत जी, मेजर जनरल MP सिंह, डॉक्टर सोशल Meher Bose. I have traveled with her, attended her seminars at least 3 or 4 times. She has one of the inspirations behind my work. And I left that job because I want to implement something as a scientist, not as a servant of scientist. So I left the nuclear scientist job without knowing the future. Now I thank Dr. S.C. Chopra and Sujata Singh Sangeet. I appreciate all the work they have done, but
I have some memory loss is there. People come and say, thank me for all this visiting, etc. I cannot remember the persons who are untrained under 15 years back. That is my present condition. So my problem is that. Now, I have been very gratitude. I pay very much gratitude to Dr. Shakawatji for inviting me to this seminar. So, first, I am happy to be here in our field of great Mahakaleshwar Ji and Ganesha of Indore. This is the thing. This credit goes to Dr. Ketawatji for choosing and inviting great learned, experienced souls on single platform to exchange our knowledge on Fifth World Conference. This opportunity to meet great experienced doctors on a single stage, the credit goes to Dr. Ketawatji and also Sweta Madam and Dubeji. They have been in contact with me. But I am enjoying the experience of great souls and their positive aura. I feel I have come to Indore in a Kumbh Mela of doctors. So I have experienced the aura, but I have found out roots. What are the roots? A plant grows its roots first and then grows. Have you gone through the roots of your work? This is, as a scientist, I have this question. Whether it is any therapy, have you gone through the roots? No. We have 112 alternative therapies. Everything created mostly in India. So the aura energy is also one of the things seen in Ayurveda as Divya Kanti Valaya. In chapter number 12. You need not do any research. You go to your Vedas, apply to the modern science. Then your work will be acknowledged. That method I have learned. So, we have not turned down your Vedas to see what is there in what. So, I took aura science as a subject. How to do it? So, you know magnet. Magnet have two poles. One north and south. This is just like lamp and Kiran. Jyoti and Kiran. Jyoti is something, light and a rays or something. It's just like male and female. It's just like Shiva Linga. Female energy and male energy. If it is there, if the problem is there, its alternative is already created in the nature. That you say. It is not that a problem has come just now. We have to create. Look at the nature. That is already present there. Bring that. That. Bring that. What I have done is that only. I used to observe nature. Everything there is geometry. Everything there is a found numerology, found the patterns. What is not there in the nature to learn? So, whatever it may be, I want, how I have made aura scanner. I tell you, simple thing. See, this is a simple thing. In the villages, they find water with it. They are also important. There was a drought.
in Andhra. What I have done, I tried. But I got scientific answers for coconut because coconut is having water in the center. And it is earth-like, similar to earth. In replica of earth. I cannot stand. So I have seen this is working on water. What is there? There is a bone, there is a skin to supply water. I have not expected results from it. Then, after some time, I chipped 10 or 5, 10 or 15 on it to see. Curiosity has developed. What is there in this particular thing? There I got a clue. There was a coil in it. In all the plants, because I don't have microscope and experience as a scientist, I don't find. There is a coil. That is the coil. I have made a coil, put a 12 volt battery and apply radio waves to it. Wonderful, it is working. For anything you keep in between, it shows the same thing. Whether it is in this country, or on map, or anywhere. Direction wise, it will see. Some of them you do not know. This is about simple, very simple. Learn from the nature. The second thing, you know Kundalini Chakras. I do not know till I have passed my degrees. I took the service as a scientific officer in atomic energy. I have to go to Himalayas, first thing, at Badrinath. There I want to read something. I purchased an autobiography of a yogi. I was really stimulated. Why have I read so many years of study, wasting my life? This book is sufficient to know the roots of human beings. He talked about 7 chakras, which I have never known. Then I got interest to work on chakras. Each chakra, actually 72,000 nadis are going from chakras to the brain. They are supplying the 72,000 nadis. Oh, chakra is the only thing. Each chakra has a mantra. Each chakra has a light energy. Color therapy is telling Vibjor that is there in all the 7 chakras. Everything is included in a small thing that I have learned from autography, biography. You please read autography. That has inspired me to take Harmonizing. Everything I want to make it in modern way. Old way people won't believe. You cannot satisfy them. See, even some shlokas are there. We have read only, we do not know the inner meaning of it. 6 types of meanings are there. I have gone to search those things regarding harmonizer. What I did? Who is making life to us? How many of you are getting up at 4 o'clock and doing some work? I get up at 4 or 5 from my childhood till today. So that has helped me. So sun is the main thing. Sun energy is the main thing. I want to make a small sun, baby sun, in the instrument. Exactly, I made it. In the small instrument, a big several kilometer radius, I brought it and put it in the small instrument. Then I know, as a mineral engineer, I know crystallography and silica crystal and crystal therapy. I purchased a 4 inches beautiful costly crystal of silica, which they will do. That one, I arranged it. Try to rotate it in positive direction, it will give positive energy to all your chakras. Try to rotate in negative direction, it sucks the negative energy from the body.
So these are the main things. There's the roots. I've gone to the roots because of mercy of our Vedic people. Mercy of our Vedic people. I have no time. I have manufactured it, seen, working. It can clear all you are getting disease because one of the chakra is weak. It is connected to limba or body. And if you have to know one thing, Dr. Millikan got Nobel Prize. Everything in the universe vibrates in its own frequency. That means I am vibrating in own frequency. Tea is vibrating in its own thing. Table is also vibrating. If you put the same sample, you put it, final, put it, cut. So same sample, it will reach there. Because radio waves have the power of traveling 100 kilometers per second. Per second. So these are some of the things. So my daughter is there. In the afternoon, she will do the performance. How to this. Our scanner and organizer have been brought here. How to do it in few minutes. She will demonstrate practically. So I am 83 years old. I am unable to stand. That's why my doctor is taking care. So I will take leave and take this nation has given. That is depend upon me. So this thing and नमस्ते to all. मैं ये निवेदन करना चाह रहा था कि आपने जो मशीन बनाई है अगर इसका डेमो होता तो Now our hall is having 30% energy despite of so only people. Now she will know how to energize it. Either with the harmony अरेंज किए हैं with some rods we have made to energize. Thank you. हमारे साथ मूर्ति सर की बेटी गीता भी है जो आगे प्रेजेंटेशन करेंगी और हम उनका दिखेंगे। अब मैं इनवाइट कर रही हूँ Now I would like to invite to the podium Major General Dr. M.P. Singh. Endowed with years of experience in the domain of training and healing, Mr. M.P. Singh is now running his own training institute called Absolute Essence at Gurgaon, जहां आप ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, जिनका लाभ कई कॉर्पोरेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट और एनजीओ ने लिया है। आजकल आप एक ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल कोच, स्पीकर और लीडर का काम करते हैं और इस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं सर को पोडियम पर इनवाइट करती हूँ। स्वागत है मेजर जनरल डॉक्टर एमपी सिंह का। Respected Dr. Kitawatji, my most revered Gurudev, and my initiator in this esoteric sphere. Anita ji, my esteemed teacher, Dr. Professor Moose, Rear Admiral Pandit, my school type is here, Dr. Murthy, Dr. Sujata, dignitaries of the dais, participants, guests, ladies and gentlemen. My greetings to all of you. Fifth International Conference and Convocation on Holistic Medicine has brought together at one platform a multitude of learned and dedicated healers and experts from across the country and several parts of the world. The topics have been chosen with diligence and prudence, covering a wide canvas under contemporary theme, Holistic Healing for Healthy India. This has proceeded from an altruistic consideration
of alleviating stress and disease in the fast-racing world today. We generally ascribe ailments and disorders to physical aspects, that is, the tangible aspects. The reality is far from the belief. In more than 90% of the cases, as Dr. Sudhir Katavaji was bringing out, the diseases arise due to thoughts that are toxic, allied with impurities. The thoughts reside in human aura, adversely impacting the emotions, which in turn impact the physical body, leading to disease. Therefore, intervention at physical level alone does not eradicate the disease. If our existence is holistic, encompassing 4 domains of life, that is physical, mental, emotional, and spiritual, then of necessity, our healing would also demand intervention in a holistic manner, that is, at all 4 levels. Therefore, it is imperative to place reliance on holistic approach to healing. Though alternative medicine is much shrouded, it is catching awareness of many across the world, realizing the benefits of its application in health, well-being, and longevity. People having been disillusioned with the conventional treatment, replete with serious side effects, are now seeking to return home, back to the roots, that is, alternative medicine. There is an inescapable necessity now to integrate alternative medicine in our lives with techniques like acupressure, hypnosis, past life regression, meditation, energy healing through Reiki or Pranic healing, etc. However, we could continue to be supported by allopathy for investigations, emergencies, and surgical operations. I'm sanguine that the wisdom emanating from the eminent speakers will leave an indelible imprint not only on the ones present here, but also those who will have access to these contents through YouTube and other media. I'm firm in my belief that the purpose of the conference will be well served, benefiting the healers, researchers, and society at large. I reckon this to be my earnest obligation to express my gratitude to Dr. This is old memories now. So please go on this one. No, go back. Go back. All pictures, Bobby. This picture is very close to my heart. This was 1996 when the convocation was held, and I had done my course, the first course ever with him, that was diploma in acupressure. Everything is ordained. Nothing happens without a purpose. I never wanted to come to Mau from Bhopal. There were some reservations. I had requested, I met the army headquarters officers, but my posting was not changed. And at last, I had to come to Mau. But it had blessings. One day, my wife had gone to DSOI, and there, Dr. Sudhir Katavaji and Anita ji, they were there, giving demonstrations on how to alleviate headache, backache, and things like that. Many ladies came forward, and they were relieved. And she got fascinated. It was a ladies' function, and she brought a flimsy little thing and said, "Would you like to do this?" I didn't know what acupressure was at that time. Without knowing anything about it, I said, yes, I would like to do it. And that was the beginning. I did my first course with him. That was 1995. Subsequently, this is the diploma. Please, next one. And this is MD. Thereafter, he insisted that I must do MD with his encouragement. I did that. And also, Anita ji insisted that I was do cosmetic acupressure, which I did. And this was, I had got posted to Delhi, but he said, stay for a day and take part in one of the convocations in Mau, and I stayed. My family had gone before. And this was again in the year 96. I'm so privileged, and thereafter I continued my contact with him, continued with his blessings. I did hypnotherapy, self-hypnosis, and past life regression,
and color therapy, magnet therapy, and whatever came my way, I kept picking up for the time that I had with him. I'm so grateful to him. I'm again here today. I express my gratitude to Dr. Sudhir Khetawarji, Anita ji, and the whole team. And I'm privileged that I'm going to be here to learn again something from him. Thank you so much. I wish everybody happy learning. Thank you. थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रीजनल हेड मनीष बिश्नोई जी हैं। मैं उन्हें डायस पर आमंत्रित करती हूँ, कुछ शब्द कहें। Very good afternoon. This is Dr. Manish Bishnoi. I am heading Golden Book of World Records. I hope many of you know me about what is the Golden Book of World Records. Basically, Golden Book of World Records is a company which is in the field of talent management and everything which is very unique happening for the first time or something in very large scale that has been apply to Golden Book of World Records. We check it, scrutinize it, and then we consider it as a world record. Today I am here, it means there should be something very special, and I am very happy to announce that Dr. Sudhir Khetawarji, who is working in the field of holistic healing and many different sort of alternative medicines field, he is having a great exposure in the field of alternative medicines, as well as he is also renowned in the field of supporting the animals. So these two things makes him very different, very unique, and I am privileged to be part of this conference. I am coming from the Delhi, and Golden Book of World Records has received an application from Dr. Sudhir Khetawarji that he is organizing a very unique conference, and in this conference there are many people who would be in the different fields of alternative medicines. We have gone through the brochures and everything, and I am very much happy to announce that Golden Book of World Records has accepted the application, and today I am announcing that this conference has been considered as a world record. I am announcing that the largest congregation of alternative medical therapy, this is the record title, and the world record largest congregation of alternative medical therapy experts has been attempted by Institute of Holistic Medicine from Indore, Madhya Pradesh, India. On December 10, 2022, record-breaking number of alternative medical therapy experts have been claimed to congregate in 5th International Conference and Convocation on Holistic Medicine organized by Dr. Sudhir Khetawarji. So I am handing over this provisional certificate to Dr. Khetawarji and the eminent guests. Very soon the final certificate will be issued. Thank you. One more thing I would like to say. Golden Book of World Records, as I told you, is an international organization where there are so many applications comes from across the world. So it is talent is
having different varieties. So every day we receive many applications from different fields. And today I am happy to announce that in the field of health and alternative medicines, whenever we will need some expert, we will definitely remember Dr. Sudhir Khetawat ji. So I am including the name of Dr. Sudhir Khetawat ji in the jury members of Golden Book of World Records today. We will definitely, it's not just Golden Book of World Records, but the international forum will take the guidance from Sudhir Khetawat ji, and very soon if somebody is having something unique and they feel that whatever they are doing that can be part of world record, you can directly communicate with Sudhir Khetawat ji and he will just convey us. Thank you. Ladies and gentlemen, you will all accept that this is a monumental achievement by the Institute here in Dr. Khetawat. Call for a standing ovation. अब मैं स्टेज पर आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर S.C. चोपड़ा जी को, जिन्होंने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी में एज माइनिंग इंजीनियर काम किया है। आप डॉक्टर सुधीर खेतावत जी के शिष्य हैं और आपने टेक्निक्स ऑफ ड्रगलेस थेरेपीज पर सीखा है और काम भी कर रहे हैं। इस वक्त आप दिल्ली में काम कर रहे हैं और आपके 10 स्टूडेंट एज अ डॉक्टर, एज अ थेरेपिस्ट वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी काम कर रहे हैं। मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित कर रही हूँ। सबको नमस्कार। I am very happy that I welcome all of you in this seminar. मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेमिनार के अंदर जो भी हम देख रहे हैं सब डॉक्टर खेतावत साहब की वजह से ही है। अभी तक जितना भी हमने सुना है, जितना भी देखा है, इनके अलावा और कुछ नहीं है। रिसर्च इनकी जो सबसे बड़ी रिसर्च है 3 फिंगर टेक्निक, जिसका उपयोग हम अभी भी कर रहे हैं। मैं अभी अपने स्टूडेंट के साथ, अपने पेशेंट के साथ ये टेक्निक लेता हूँ, इसी को यूज करता हूँ, बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि जो भी पेशेंट आता है, जितने भी पेशेंट आते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके इमोशनल की होती है। इमोशनली वो बहुत खुशी होते हैं, डरे हुए होते हैं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, ये किया वो किया, लेकिन 3 फिंगर टेक्निक से और उनके पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रेशर देने से उनकी आधी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। आधी प्रॉब्लम दूर होने के बाद ही जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत ही 100% लाभ मिलता है। चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग दैट कैन बी क्लेम्ड विद इन नो टाइम। ये इस खेतावत साहब के और कुछ नहीं है। और जितना भी हम अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, उनका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो उसी नॉलेज को लेकर के हम जब चलते हैं, ये तो हमें रूट कॉज का पता चल जाएगा, तो ट्रीटमेंट देने में बहुत ईजी होता है। ये आज की बात नहीं है, ये तो हजारों वर्ष पहले से ही रिसर्च लोग काम करते आ रहे हैं। हमारे जितने भी पूर्व बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिश की हर एक इंसान को, ताकि वो बीमार नहीं रहे, कुछ भी नहीं हो, उसके लिए नई रिसर्च किया। सबसे पहले डॉक्टर खेतावत साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है बोलने का। धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर सुजाता सिंह जी हैं, उन्हें मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। शी इज अ कोच, कीनोट स्पीकर, हीलर एंड राइटर। शी कंडक्ट डाइवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड सेशंस ऑन साउंड थेरेपी एंड वेलनेस। हमारे आसपास की आवाजों में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत से साउंड होते हैं जो हमें हील कर सकते हैं, हमारे मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। और इस सब पर आज हम जानेंगे डॉक्टर सुजाता सिंह जी से। A very warm namaskar to all of you.
It's indeed an honor to be here amongst the various people who have come with the pearls of wisdom. I would like to congratulate Dr. Khetavatji on the beautiful setup which is brought up, bringing people from across the world together. And yes, heartiest congratulations, Dr. Khetavatji, for this Golden Book of Records as well. You truly deserve it. That's the words I could say for him. And having come here for the first time, in fact, this is the first time I'm amongst with all of you. And this was only made possible because there were numerous calls from Dr. Khetavat that I should be here. He has an eye to understand people and pull them out from wherever they are to serve the world. It's nothing to do what he wants. It's about what his mission is, the man who lives for his mission. And I guess he's setting up an example for all of us that we need to be doing the same. Coming to sound, we had heard the beautiful song and the words which were put together, and that elucidated peace within us. Rajeshwari's voice, the melodious voice, and the wondrous words as put by Dr. Khetavat made a beautiful song. And that definitely put us all into a state of Aham Brahmasmi, putting the Vasudhaiva Kutumbakam awakened. That is what I wanted to share when he asked, what is it that all of you felt? I felt Aham Brahmasmi awakened within me, and the concept of Vasudhaiva Kutumbakam getting enlarged and embedded into my heart chakra. The crown and the heart, when they come together, that is where the beautiful melody of life comes together. As we say, gratitude and forgiveness together makes the human being vibrate at the highest frequency. I'm sure most of you have heard about sound, because what you're listening to right now is sound as well. So sound is there, omnipresent. It's everywhere, in and around us. What do we do with it? What is the frequency we choose to vibrate at? What is it that we need to be resonating at? And what is within us which should be reverberating so that we are in the state of peace, happiness, and health? Often people ask me, what is it with sound which puts us in a state of trance? Now, when I say trance, it's all to do with the mind. Sound works on the mind, calms it down, puts it to the different states of relaxation, and from there activates the self-healing mechanism. Of course, much will be talked when I'll be sharing more about it in the second half of the day. But when we talk about sound, we need to understand that we have been gifted with sound. All of us have a voice that itself speaks about our personality. Some of the voices, when we hear, we feel it's noise. I wish the person stops talking. And some of the songs, when we hear, we feel the person should continue talking. I don't know currently where I stand with each of you. But yes, if you're finding the voice calming, if you're finding the voice elucidating a state of peace, I would say yes, you're listening to a voice which resonates with you. But on the other hand, there are various noises which disturbs the balance in our body. Now, where is the balance? It's in our chakras. And these chakras, when they are not stacked properly, when they're not vibrating in the correct frequency, when they're not happy in themselves, then there is short circuits. And this short circuits is in the form of anger, guilt, shame. You talk about the emotions and all the negative ones are there. So that's very important that we resonate, stay in our own vibration, which is our true being. Also, there are various cases which I've worked upon and found tremendous results, not only in India, but in various hospitals across the world. I had the honor to work on patients which were put up as terminally ill, or the ones which they would say there is no cure. But yes, no cure is only a limitation of modern medicine. It doesn't say that the universe is not there to give out a cure. In fact, I feel this alternative medicine, the name which is being given, is not right. This is the true medicine. We need to put forth this into the world and showcase the ancient wisdom which we held. And unfortunately, with various invasions and various thought beliefs coming in, our culture was lost and we have forgotten about it. It's only conferences like this which will allow people to awaken the wisdom, the treasury which we hold. And that needs to be showcased in the right way.
There is no way that you can just treat a fruit without looking at the roots. Unfortunately, modern medicine has been doing that. It's only looking at the symptoms and been treating it, not understanding where the root lies. And if the condition of the root is not right, how can we expect just spraying pesticide on the fruit is going to give us good fruits? Momentarily, you feel good, but that's definitely not medicine. Sound was always put together in the form of a music, and it was used for chikitsa. It was never for pleasure or entertainment. But today, when we talk about music, when we talk about sound, people think, okay, there are some songs, we listen to it. So let us come back to our roots, nourish them, and move ahead to make again the India Vishwaguru in the health, wealth, and the overall holistic development of every human being. If we work towards it together and also see that we are able to put our own justified humanness, because we have forgotten that we are just living, we do not understand what life is. So let us all move out and see the Nad Ananda. That is our true being. Namaskar, and thank you so much to all of you once again for joining me on, and looking forward to more to share. Thank you and namaste. Thank you so much, Dr. Sujata Singh, for this beautiful information. Sound, the ultimate medicine for body, mind and soul. आपने बहुत खूबसूरत जानकारी दी, और हमारे साथ यहाँ उनके बेटे भी हैं जिनका हम अभी गिटार वादन भी सुनेंगे। अब मैं हमारे सभी अतिथियों से सादर रिक्वेस्ट करती हूँ आगे अपनी फ्रंट सीट पर जगह ले लें ताकि हम वायलिन और गिटार का आनंद ले सकें। साथ ही डॉक्टर पंडित का पेपर प्रेजेंटेशन भी होगा। काम दे दिया आप लोगों ने, पॉकेट में करवा रहे बच्चे से काम है, मतलब ईमेल भी चेक करो, ईमेल भी कॉपी करो, ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस ही बोलता है। ये चलो आपका तो इसकी ना इसकी नहीं जरूरत नहीं, सिर्फ सेंटर में रखना होगा। कहते हैं ना
ये ना हो गया देखिए, आप सब लोगों के हित में मैंने मनीष जी को एक रिक्वेस्ट की है कि मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंडिविजुअली शामिल किया जाना चाहिए। इन्होंने मेरे को ओरिजिनल मतलब एलपी के लिए चुना है, तो मेरा पहला सजेशन इनको था कि मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी डेलीगेट्स हैं, वो अपने नाम के आगे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लिख सकते हैं और वो सर्टिफिकेट के लिए इनको ऑफिशियल जो इनकी फीस है वो भेजना पड़ेगी 1000 रुपीज पर पार्टिसिपेंट। तो 1000 रुपए जो भी हमारे यहाँ जमा करवाएंगे उनके इंडिविजुअल नाम से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया जाए। आप सब लोग विश्व रिकॉर्ड होल्डर हो गए हैं। आपको केवल फॉर्म भर के मनीष जी को देना है और आपके नाम से इंडिविजुअल गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट आएगा। आप अपने नाम के आगे लिख सकते हैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यूएसए। मैं संस्था की ओर से करना चाहूंगा। तो जैसा सर ने भी रिक्वेस्ट किया, तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। तो जितने भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे उनको सेम सर्टिफिकेट मिलेगा। सबसे लास्ट में दे विल हैव देयर नेम दैट मिस्टर XYZ हैड पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम। तो आपका खुद के नाम के साथ आपके पास ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट होगा। तो आप भी हर जगह कह सकते हैं यू आर एक्चुअली वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, क्योंकि योर नेम इज देयर, यू आर हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिशियली। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं और कहूंगा, जैसा कि सर ने कहा कि मैंने उनको एमपी के लिए अपॉइंट किया है, ऐसा नहीं है। मैंने उनको इंटरनेशनली हर जगह के लिए अपॉइंट किया, ऐसा नहीं कि वो ही रिस्ट्रिक्टेड टू एमपी ओनली। द फील्ड जिसके वो एक्सपर्ट हैं, जिस फील्ड में उनकी इतना वास्ट नॉलेज है, उस फील्ड से रिलेटेड जो भी कोई लोग हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं
नहीं है कि सिर्फ एमपी इज रिस्ट्रिक्शन, फ्रॉम एनीवेयर ही कैन फॉरवर्ड द नेम और डेफिनेटली हम उसको सीरियसली देखेंगे। धन्यवाद। देखिए ये इनकी बुक है, इस बुक के अंदर ये रिकॉर्ड पब्लिश होगा। अच्छा, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक जो चमत्कार हमारे इंस्टीट्यूशन ने किया है, आज मैं दावा करता हूँ पूरे विश्व में, आई ओपनली चैलेंज एनी डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड, जो केस हमने ये ठीक किया है न तो किसी ने किया है न कोई भविष्य में कर सकेगा। ये मैडम अभी जो एक म्यूजिक बनाएंगी, गंगा और नर्मदा की लहरों की आवाज, ये कोई साधारण आवाज नहीं है। इस आवाज को सुनते सुनते आप आंख बंद करें और महसूस करें, ये गंगा की लहरों की आवाज नहीं, आपके ब्लड सर्कुलेशन की आवाज है। अगर आपने पिक्चराइज कर लिया तो आपके शरीर में कैंसर तक की बीमारी खून से अलग हो जाएगी। हमने ब्लड कैंसर के पेशेंट्स में भी ये प्रयोग किया है विद वंडरफुल रिजल्ट्स। और मैडम देवताले हमारी रिसर्च टीम की एक सदस्य हैं, ये जब प्ले करती हैं, अभी मेरे यहाँ 3 पेशेंट कैंसर के हैं जिन पर हम ये संगीत का प्रयोग कर रहे हैं, और हम पैरामीटर्स के लिए ब्लड प्रेशर मशीन और ये सब लगा देते हैं, ऑक्सीजन मीटर, और उसमें चेंजेस आने लगते हैं जैसे ये म्यूजिक चालू करते। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भविष्य में जब कभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी तो मेरे साथ में जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अरुण वर्मा, डॉक्टर महावीर जैन, डॉक्टर प्रमोद झंवर, डॉक्टर अरविंद पवार फ्रॉम सूरत, डॉक्टर मनोहर भंडारी, ये सब लोग माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ प्रूव करेंगे कि हाउ मच दिस साउंड हैज वर्कड ऑन द सर्कुलेशन फॉर इंप्रूविंग सर्कुलेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ऑक्स ग्रीन अभी इनका लाइव म्यूजिक आप सुनेंगे, उसके बाद में हम वो वाला बताएंगे, पर आप खुद देखेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये ऑर्डिनरी नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी साउंड। सब मिल जाएगा यार। स्क्रीन आप इधर अभी सेंटर में करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। अभी टाइम है ना, ड्यूरिंग द लंच कानपुर कौन कर दिए। केवल बराबर लगा रहा है, केवल बराबर लगा नहीं, कुलता वाला केबल लगा है, ग्रीन वाला, ग्रीन ये नहीं तो करा, केवल बराबर।
क्या करते हैं? करते क्या हैं? अब एक बार सेट कर लो, कर लिया ना, हो गया ना, वो वहां से करो, हो गया, चेक करो, चेक कर लो, तो बराबर लगा बाहर के लिए निकला, आउट निकलेगा ना। हाँ वो मंच के ऊपर विभिन्न विधाओं से रोगी का निवारण कैसे होगा उसके ऊपर महत्वपूर्ण जानकारी सब लोगों ने हजारों रोगियों के विभिन्न असाध्य रोगों को बिना किसी दवा बिना किसी करेंगे नहीं ऑपरेशन है नहीं आया
सर आप यहाँ से इफेक्ट सारे बंद करते हो केवल वॉल्यूम का इफेक्ट यहाँ से इफेक्ट आएगा वॉल्यूम केवल वॉल्यूम क्या उसका आउटपुट बंद तो नहीं आपका? एक बार आप देख लीजिए आउटपुट बंद हुआ तो कुछ वहाँ से हाँ राइट में लगेगा लेफ्ट में यार इसी में आ रहा था, उसका कुछ ऑप्शन होगा ना। बंद कर ये वो उसका फ्लेकर का माउथ पूरा इफेक्ट बन राजेश, ये ग्रीन वाले का थोड़ा वॉल्यूम कम कर, ग्रीन वाले का और कम बस ठीक है, नहीं 50 कर देना, 50 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विदुषी अनुप्रिया देवता जो देश की उच्च श्रेणी की हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाली गायिका है। इंदौर में जन्मी अनुप्रिया जी वरिष्ठ हिंदी कवि चंद्रकांत देवतारी की सुपुत्री हैं और आपने संगीत शिक्षा प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान और प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी से ग्रहण की है। भावनात्मक और माधुर्यमय मौलिक शैली ही
इसकी धनी है अनुप्रिया जी, जो लगभग 40 देशों में प्रस्तुति दे चुकी है। अनुप्रिया जी देश की अतिथि कलाकार हैं, जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च उस्ताद सलामत अली खान नजाकत अली खान पुरस्कार से नवाजा गया है। दिल्ली की एकमात्र महिला वायलिन वादिका अनुप्रिया जी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस की वरिष्ठ कलाकार हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन की एक कलाकार हैं और अनुप्रिया जी भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय से सीनियर फेलोशिप प्राप्त कर चुकी हैं। मैं आपके स्वागत के लिए हमारे इंस्टीट्यूट की डॉक्टर श्वेता ए मिश्रा को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। श्वेता जी आइए, अनुप्रिया जी का हम स्वागत करना चाहेंगे। अनुप्रिया जी के साथ स्टेज पर है देश के जाने माने तबला वादक और उनका साथ देने वाले पंडित गांधार जी। मैं इंस्टीट्यूट के अनिल द्विवेदी से भी आग्रह करूंगी, आकर उनका स्वागत करूंगी। आइए देश के ख्याति प्राप्त हिंदू कलाकारों के संगीत का हम आनंद लेते हैं। नमस्कार, मुझे आज आप सबके बीच में अपनी प्रस्तुति देते हुए बहुत खुशी हो रही है और मैं डॉक्टर खेतावत सर की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। और श्वेता जी, डॉक्टर अनीता जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। गंधार जी के साथ मेरी ये दूसरी प्रस्तुति है और हम लोग एक सुबह का एक बहुत खूबसूरत सा राग बसंत मुखारी थोड़ी देर के लिए वही प्रस्तुत करूंगी। थैंक यू सो मच।
होता है संगीत जो आपको अंदर तक झलकत करता है, और ये होता है रियाज, जिसमें काफी मेहनत लगी है। मैं जानती हूँ आज आपने 10-15 मिनट इसका अनुभव किया, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने 15-15 घंटे जरूर मेहनत की होगी, ये मैं जानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए। अभी आपने और हमने सुना विदुषी अनुप्रिया देवताली जी का वायलिन वादन, और तबले पर इनके साथ थे पंडित गांधार जी। सुजाता जी ने जो कहा था संगीत का असर, वो अभी हम कुछ कुछ अनुभव कर रहे हैं। और अभी एक पेपर प्रेजेंटेशन के बाद हम जैनम को भी सुनेंगे, जो गिटार से हमें रिलैक्सेशन तक पहुंचाएंगे, और वो भी हम अनुभव करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ससम्मान रेयर एडमिरल राकेश पंडित जी को स्टेज पर पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। मुझे पता है बाहर से आती खुशबू आपको थोड़ा थोड़ा बेचैन कर रही होगी, लेकिन पंडित जी जो करने वाले हैं उससे हमारी एनर्जी बढ़ेगी और हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो हम चाहते हैं लंच टाइम के पहले ये प्रेजेंटेशन हो जाए। रियर एडमिरल राकेश पंडित जी इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं। आइए आप बोल स्क्रीन शिफ्ट करिए। हाँ, स्क्रीन भी शिफ्ट करवा दीजिए। इन्होंने देश की सेवा में कई महत्वपूर्ण असाइनमेंट पूरे किए हैं, और आप मिसाइल्स एंड गनरी में स्पेशलिस्ट हैं। 2002 में इनके विशिष्ट सेवा कार्य के लिए इन्हें नौसेना मेडल यानी NM से सम्मानित किया गया है, और 2013 में प्रेसिडेंट द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। रिटायरमेंट के बाद ईश्वरी कृपा से आप वर्ल्ड ऑफ एनर्जी बॉडी हीलिंग की ओर आकर्षित हुए, और अब क्वालिफाइड रेकी मास्टर, क्वालिफाइड इन एक्यूप्रेशर, प्रैनिक हीलिंग, साइकोन्यूरोबिक्स और योग निद्रा स्पेशलिस्ट हैं। आप किसी भी व्यक्ति के चक्रास को स्कैन करके उनका बॉडी ऑरा मेजर कर सकते हैं, और अब तक 500 से ज्यादा लोगों ने आपसे फायदा लिया। मैं सम्मान स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ रियर एडमिरल राकेश पंडित जी को पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। इसके साथ ही आगे के कोऑर्डिनेशन और संचालन के लिए मैं अनीता ठाकुर जी को माइक सौंपना चाहूंगी, जो आज दिन भर आपके साथ रहेंगे। गिटार जैनम दिखना चाहिए। उसको कुछ रोक रहा है शिफ्ट करने के लिए, सेंटर पे कर यहाँ पे ऑडियो है क्या? ऑडियो नहीं, इनके इसमें ऑडियो है नहीं। Good afternoon, ladies and gentlemen. One moment, sir. I am going to play for you. ये चल नहीं रहा है, क्या करना? One moment. Please, okay. मैं जब बोलूँगा तब अनचेक करना। आप वो बिगड़ जाएगा।
Yes, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. After that very energizing session which we had with Vasant Mukhari Rat, I'm sure you're all ready. And I'm going to be connecting it up with energy body and energy body healing. I'm indeed privileged to be here with this August gathering of professionals of alternative medicines, and I'm thankful to Dr. Kitabat for this. The topic of my presentation is preventive healthcare with chakra scanning. I'll take around 12 minutes for covering the subject and then conduct practical session with question answers. We human beings have two bodies. The visible physical body made of matter and the invisible energy body made of energy. The energy body is made of divine energy and is an integral part of our human body. But what I've seen is that most people don't have a concept of this body. Both in India and abroad, wherever I went, people get very disturbed to know that there is another body called the energy body which envelops the physical body. The soul or a super or higher conscious is the eternal and formless essence of a human being. It draws its spiritual or divine energy from the supreme conscious or God. This unique form of energy keeps us alive. Without this energy, a person is dead. What makes this energy unique and different from other forms of energy, like electrical, chemical, or nuclear, is that it has consciousness and can perform mental work like producing thoughts and emotions, which no other form of energy can do. The human body has 7 hub centers of energy called the chakras. These are basically hub centers of energy. They disseminate divine energy drawn by the soul from God to various organs of the body. Just as the blood flows through blood vessels, divine energy flows to all parts of the body through fine invisible channels called meridians or nadis. Dr. Maman Murthy had mentioned, we accept that there are about 72,000 nadis in the body. Negative thoughts and emotions create blockages in the body's energy pathways and impede or obstruct the smooth flow of divine energy in the body. Any deficiency in the supply of divine energy to the body leads to diseases. It needs to be understood that the energy body is the causal body, while the physical body is the symptomatic body. You have the problems showing up in your physical body, but the real cause for them lies in the energy body. In normal treatment of symptoms get addressed, but the cause is left behind unaddressed. Diseases first appear in the energy body before they show up in the physical body.
and therefore they can be prevented from manifesting in the physical body by healing the energy body. The best way to avoid any major disease is to treat it in the causal energy body before it afflicts the symptomatic physical body. This presents a preventive approach to healthcare which could be highly rewarding and highly economical. Our focus must be on preventive healthcare to maintain good health rather than on curative healthcare for treatment after we have fallen sick. We should ensure that we don't fall sick and remain healthy. That's a better approach, the preventive approach. For preventive healthcare, we need a device to scan the chakras correctly and convincingly, and with a timely warning. We need an instrument which is easy to use, which can give us quick results and show us whether a chakra is positively or negatively charged. We are very lucky that such a device has been invented by our intellectuals like Dr. Moti. It is called the Aura Scanner. The Aura Scanner is an invaluable tool for scanning the body chakras and measurement of body's aura. Earlier, healers used to use their hands for looking at polarity and intensity of the charge, but their findings were questionable, left to questioning, because they were doing it with personal expertise, nothing to demonstrate. But now we have this chakra scanner, that is the Aura Scanner, which can physically demonstrate to you, beyond any questioning, the charge and polarity of a chakra. The term aura is figured in the previous slide, so let me tell you what aura is quickly. Aura is the Latin word meaning a glow of light or a gentle breath of air. It's an energy field which surrounds or envelops the physical body. Aura of a person directly reflects his health. A stronger energy body enables a larger aura. A large aura indicates a strong energy body essential for good health and well-being. And large aura can be maintained by positive thoughts and emotions, meditation, breathing techniques, living in harmony with nature, and learning to cope with the stress and tensions of modern lifestyles. Each chakra is linked to certain organs of the body through a system of meridians and supplies them divine energy. Let us have a look at the 7 chakras of the body and the organs they are related to. Now here, this slide shows you how the organs are related to various chakras. There's a lot of data on this slide. We can refer to it, but suffice it to know that these are linked with the chakras. Blockages in the energy pathways reduce the flow of divine energy and lower the strength of the chakras. Persistent deficient flow of divine energy through a chakra makes it negatively charged. A negatively charged chakra adversely impacts the health of organs linked with it. A diseased organ of the body can make the chakra linked with it negatively charged. Scanning of the body chakras to monitor the health is fundamental to energy body healing. Positively charged chakras indicate good health, and negatively charged chakras are a warning for diseases already afflicting the body or diseases in the making. This is the warning which the chakras will give you, and if the warning is timely, the treatment is timely,
you can escape that disease. Any deficiency in the supply of divine energy to body chakras leads to weakening of the energy body, lowered positivity of the chakra, that means the charge is becoming less positive. Weakening of the organs, reduction of the aura, and resulting in ailments and diseases. Now let us look at the chakras and the ailments they are linked with. If you have a problem, if you have a medical problem or ailment, then the chakras which would be actually responsible is as shown in the slide. Energy body healing is all about removing blockages in the divine energy pathways to restore smooth flow of divine energy. Now this is the aim of all energy body healing, all therapies. The treatment of energy body is quick and economical, highly effective, and without medication and side effects. Now look at the enormous advantage that we get. No medicines, 5 minutes of treatment, and without any side effects. With body healing, body chakras turn positive and the aura increases. Diseases like cancer and depression are better fought in the energy body and must be prevented from afflicting the physical body. A 5-minute treatment of the energy body can prevent months of affliction of a physical body. Blockages in the energy pathways must be cleared as soon as possible. And these pathways can be cleared by Reiki masters and grandmasters and by practitioners of a new therapy which I have put together called Divya. Divya is an innovative and transformative therapy for clearing blockages in your energy pathways. And this has been postulated in my book, The Divine Yoga of Energy Body Healing. Now what I'll do is show to you how this chakra can be scanned, how a scanning of the body's chakras will tell you what is wrong with that person's medical status and what to do and how to heal it. And I would request a volunteer to come for that. I'll quickly do that. Okay, come please. Philip. Okay, now this is what I'm holding is a aura scanner or a chakra scanner. This comes from somebody in Chennai, and I'm going to scan her chakras with this scanner and show it to you as to what is the status of her. Okay. First of all, the first chakra is positive. How this positivity is shown is that these two. With your back to the audience. This scanner basically has two pods, these pods, and these pods are negatively polarized. When you point it towards the negative charge, like charges repel, so it will open out. And if you point it towards the positive charge, you get attracted. So if I show it to a chakra, and these two pods are together, that means it's a positive charge, positive chakra. Clear? Okay, so let's see.
आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। First chakra is positive. Ajna chakra is positive. Vishuddha chakra is positive. The heart chakra is not negative, but it is weak. Manipur chakra, the stomach chakra, Swadhisthana, reproductory, is all right, and Mooladhara chakra, the base, root chakra. So her chakras show that except for heart chakra, where there is a problem, and physical body, which is slightly weak, she's all right. Now, would you like to say something? Yeah, I think. I'm actually feeling some weakness because of some medical conditions, which I will be sharing later on. So this is correct. Okay. Now this was chakra scanning. Now, what do we do with this? Well, she had a problem here. Can I do something for her? Let me see. Now, what I'm going to do basically is use the powers that I have to clear the energy pathways of this lady. What's her name? My name is Anju Chadha. Okay, so let me see if 1 minute of this first aid I can give her, and we'll do a scanning thereafter. कैमरे की तरफ। Sorry, I missed that out. Let us look at her aura. And aura measurement is very simple. I'll point this towards her and make her walk away from this. थोड़ा दूर जाइए। चलते जाइए। Yeah, stop. Now, if you see here, these pods are focused onto her. One step towards me. Stop. Now start walking backwards. This is opened up. The pods open up when the threshold is lowered. That means the scanner can no longer sense the lady, then it will open out. One step back. This distance between her and the scanner is her aura. So we can make out about 15-18 feet is the aura. An average aura is around 20 feet. Now let me give her a little treatment and see whether her chakras improve or the aura improves. 1 minute you will have to stay focused on this. Okay, now what I've done is something close to first aid. Let us see what difference has it made to us. Powerfully charged, powerfully charged, powerfully charged, heart. Now the heart chakra is also showing positivity, and down the line, Mooladhara. At the moment, all our chakras are positive. Let us see the aura. How much of the aura gone up by? Okay, we'll start from here. लाइट ऑन कर दो ना भाई। ऑफ कर दो। ऑन। This distance is not enough to get an aura now. Now it is, actually our aura must have tripled by now. ऐसा कीजिए,
That day, picture. One is over the side. So aura has gone beyond. नहीं अभी नहीं आएगा क्योंकि बीच में बहुत सारे दूसरे auras आ जाएंगे. और आपका aura बढ़ गया है. जितना था उससे तो खैर ज्यादा बढ़ ही गया है, दिख रहा है यहाँ. आप दीवार के साथ खड़े हो जाना. Okay. So our aura is well beyond this distance. It's gone up. So that was a simple demonstration. Is anybody? Do we have the time for one more? What's up? सर मैं कुछ शेयर करूं ऐसा ऑनलाइन वाला एक्सपीरियंस हमारे साथ थैंक यू Can I speak two words? चलो जी बोले आप. चित्रा जी. क्वेश्चन पूछ रहे हैं. चित्रा जी क्वेश्चन ये है मुझे कोरोना से रिएक्शन हुआ था एक्चुअली इससे मुझे परेशानी हो रहा है. मुझे 80% नहीं किया होगा. ये ले जाओ ना. हाँ ठीक है. मेरा बाकी हो ये रहा. चलो स्कैन करा के देख लीजिए. चलिए अब ओके. I'll do one more scan. मैं डॉक्टर मनोहर भंडारी एमजी मेडिकल कॉलेज इंदौर से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रिटायर हुआ हूँ और सबका प्रेम हूँ. पंडित सर एक क्वेश्चन है. जब when you scan the body and you find out that there is a leakage of the energy from some part or there is a weakness in some chakra, so what is the method you use to heal that chakra or that body part? See, I've already explained to you that a chakra gets weak when the flow of energy to the chakra reduces. Yes. And the flow reduces because there are blockages created in the energy pathways. Okay? And these blockages are created by negative thoughts and emotions, bad conduct, bad habits, and negativity in your approach. Now, all that creates, I explained in my presentation, all that creates blockages. Blockages block the flow. Flow becomes less, chakras become less positive, and you have it. My question is different. My question is, how do you heal the blockages, or how do you? I've just shown you. You have shown the method. I'm asking you, what is this method? Is it a Pranic healing, or it is a Reiki, or it is a, because aura is a different subject. Okay, I'll answer your question. I mentioned in my presentation that this blockages can be cleared by Reiki masters and grandmasters. Reiki energy can clear these blockages. The Reiki channels, when they are instituted, this is done for them. Okay? Reiki, essentially it's all about energy. Whether through Reiki or what I've done here is not the therapy that I have used. I've just done a first aid. I've just used my hands to clear the pathways. Okay, let's play one more scan. मैं बताना चाहता हूँ कि आज से 20 साल पहले मैंने नई दुनिया में एक आर्टिकल लिखा था, कवर स्टोरी के रूप में छपा था. हर एक का होता है आभामंडल. उस पर फिल्म बनी थी और डॉक्टर हीरा तापड़िया कलकत्ता से आए थे. उनका उसमें इंटरव्यू हुआ था. वो ओरा हीलर हैं. Okay, we'll do a chakra scan for Dr. Bhandari. Which chakra first? Which chakra? Negative. Agya chakra. Negative. Thyroid, no problems. Anahata chakra, heart chakra is fine. Manipur, fine. Vishuddhi is fine.
Muladhara Suzuki. Yeah, Swadhisthha. Now what the scan is showing, you see? So this is one step back, this will open up. Now, with your permission, sir. With your permission, sir. Now, what we have found in this chakra scan is that this chakra, the Sahasrara chakra, and the Agya chakra are negative, negatively charged. Basically, what it means is that the person is worried, anxiety, there is mental trauma, there is worry of a different nature. So, this is about, these two chakras are all about energy chakras. They are energy chakras. The remaining 5 chakras are the body chakras. These are the mental chakras. And today, the major problem with our young individuals, 20s, 30s, are these two chakras. From imbalanced work, energy, lifestyles, petty tensions, problems. Now, these two chakras are essentially there. And these can be cured in 2 minutes. I'll show it to you. And these are the most dangerous. The mental chakra is turning negative, Sahasrara and Agya chakra. Agya chakra is the master utility, grand nurture. So let me just see. ये क्या है यहाँ पे ये फाइल है तो मैंने अभी थोड़ा सा वो मीन कर पहले धीरे धीरे सीखना गया ले गया Let us see what this couple of minutes have done for him. Let's see the aura. I'm sorry the stage is small, otherwise I would have shown you how much the aura has gone up by. But visibly it is doubled. So this is what energy body healing is doing. Thank you, sir. So you saw what the energy body healing does. Essentially, it is clearing the energy pathways. And a very major reflection of your body, right up to the big C, the cancer, depression. God heals, I only try. But there's a young girl in Missouri who was committing suicide. Mother rang up and said that please do something for her. 10 minutes later, she was okay. That is the speed with which you can cure with energy body healing. Now, does that generally give you an idea of what we can do?
how immensely beneficial this therapy can be. It will take months to do what we have done. These two chakras, the mental chakras negative, person suffering, not having good sleep, worried all the time, and you made the chakras positive. How would it sustain and constantly improve it? You just improve it. But what will the stage after 2 days? Tomorrow. Okay. Now that's a very good question. These chakras where the energy pathways have been removed, they have been removed for good, except if the person indulges in what was the reason causing that in the first place. Let's say your son is not settled and you're worried about your son every minute. Now I can clear the pathways, but if you continue to stick to your negative thought, then it will get the blockage again. I think we've finished with it. If there's any other question? Okay, ladies and gentlemen, the lunch is ready and waiting. Please proceed for lunch. लंच के बाद सभी हॉल में आ जाएं, पेपर प्रेजेंटेशन चालू होगा और समय का ध्यान रखें। जो भी स्पीकर्स हैं आफ्टरनून सेशन के, आप वहीं इसके बाद जस्ट हाँ अभी मतलब लंच के जस्ट बाद वो है इनको लगेगा क्या पॉइंट है ना, वो लेजर पॉइंट है। चलो कागज जी सर को लगेगा, ये दे दो मेरे को, दे दो ये रख लेते अपने पास ही। हाँ पॉइंटर है ना वो, हाँ स्लाइड मूवर पॉइंटर भी है उसके अंदर, दोनों ही है। हाँ दोनों है पॉइंटर, वो आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अभी ऑफ है, अभी स्विच ऑफ है, जो पेन का है ना उसका मुझे पता बोल के निकाल सर। आईडी भी है क्या आपके? वीडियो वगैरह है नहीं है ना? यार जरूरी नहीं है हर बार लगाना है, जब अगर वीडियो है तो नहीं। ऑडियो अभी नहीं ये ठीक है।
जाएगा तो उससे पीछे करके लेट रहा पेनड्राइव होगा सर चालू करा साउंड ऑन करेंगे अच्छा मुझे माइक चाहिए होगा मैं वहीं से बात करूँगा जो भी अच्छा चलता हो एनीथिंग और आप इससे भी रनिंग कर सकते हैं आपको लैपटॉप तक नहीं आने की जरूरत है आपके पास ठीक है रिजर्वेशन काम करवा कर दो 102 पर कर और आगे पीछे स्लाइड लेके देखो The best is increasing your laptop. जब आप केबल निकालेंगे ना तो आपका इंस्टाग्राम पे कभी कभी मेरे मैसेंजर में जब पेपर प्रेजेंटेशन में जरूर बनाएंगे आज है आज है नहीं इसमें मेंशन नहीं है नाम से बोलो माइक ऑन कर देंगे अभी बात Just finish the presentation, then 15 people will see it. देखिए
बेफिक्र हो गई अभी अभी ऑफ किया फिर वापस बंद नहीं ऑडियो अभी मेरी शिफ्ट ऑडियो से पता नहीं तुम्हारी हिंदी में ही है तो लाइव ऑन द few pages, 6-7 pages. Okay. Somebody you guys wanting to have a look at it. Yeah, somebody from the staff, I think. I will just check. मनीषी बना मुझे बढ़िया पंद्रह मिनट का ज्यादा बड़ा भी कोई मतलब बोरिंग लगने लगता है वहीं से नेक्स्ट करेंगे क्या मैं कर हो गया हाँ शुड आई हैव द बुक्स ये जो पेपर पोडियम पे जो पेपर हमारे पास आ गया अब अपन म्यूट कर दो इसको आपका हो गया हाँ मेरा हो गया है ना क्योंकि अब 1 घंटे बाद ब्रेक खत्म हुआ जब ही हाँ। करेंगे बाद में टाइम नाश्ता दे रहा वैसे क्यों से खाना दिया उसको मैंने ना वो एक तो पोहा और का तला हुआ था तो उसकी स्मेल आ रही थी उसको पेट करके अंदर माइक नीचे रखो पोडियम पे रखो वो सर को लगेगा ना क्या बोला कुछ और दिया दो बज रही ज्यादा है बार बार निकालने करने का काम हाँ तो खाना खा कोई तू खाया अरे तू वो तो कौन सा इस्तेमाल करना भी जाएगा ये लगातार इसे जैसे बाहर जाएंगे और जैसे जो कुर्सी लगी होगी उसे लगाना पहले एक कुर्सी और एक टेबल लगी एक सिंगल माइक जाएगा उसका प्रोग्राम होगा तो बोलिए यहाँ पे बैठे सिर्फ ऑफिस से टेबल कुर्सी आ रही है अमन ए रोहित नहीं बोलिए क्या हटाना वो जो प्रोग्राम नहीं नहीं कुछ मत करिए उसका प्रोग्राम हो जाए मतलब तो टेबल कुर्सी लगा आप यहीं पे हो ना भाई इसमें कुछ उंगली करना चालू है वो पेन ड्राइव लगी हुई है वो आगे हमने लाया हाँ हमने ये अभी यार आप पढ़ लो देख लो आई विल हाँ वो स्टॉप करिए फिर मत करना किसी तरफ चलो ऊपर आना है क्या कर रहे हो ये सिस्टम बैठा हो ना सिस्टम वो तो कुछ नहीं होएगा आजा हाँ देखो भाई ओ इसको लो इन दोनों चलो इधर इसको लो अरे खाना आधे घंटे बाद खाएंगे नहीं ये काम नहीं करवा ये है ना क्यों जी भैया छुट्टी हाँ ये अपने को नहीं ये अभी अपन वो जेबी को प्रोग्राम करवा लें कौन सा जेबी का म्यूजिक का हाँ उसके बाद ये आइए हाँ ये आ गया ये दिखना चाहिए ना जैसे इनको वो ब्लैक बाहर यार तो बाहर क्योंकि बैक हो जाता है हाँ तो वो साउंड वालों को बोलना पड़ेगा
नहीं थोड़ा सा आगे खसक जाएगा तो हाँ वो तो खसक जाएगा वो करेगा Yes, white background is better. लंच में पहले म्यूजिक है कि पहले प्रेजेंटेशन? पहले म्यूजिक एक है ना, एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, जैनम डॉक्टर, उनका म्यूजिक थोड़ा सा गिटार बजाएंगे ना। Your presentation is in Word format or PPT? PPT है तो मेरे को लिखना नहीं है PPT, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन दिखा है। आप ऑनलाइन अपन जो स्ट्रीम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे वो अलग दिख रही है, देखिए यहाँ से तो ब्लर हो जाता है ना, तो मुझे वो एक कॉपी चाहिए दिखाने के लिए PPT। हाँ तो मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट्स थे आपके? नहीं जी, मैं इसको भी दे ये बोर्ड है ना साइड में, ये ले लीजिए आप। मैं मुझे कॉपी कर दूंगा। जैसे अभी आपने राकेश सर का देखा होगा, तो जैसे वो यहाँ पे प्ले कर रहे थे, तो मैं ये कैप्शन कर देता हूँ छोटा आपका, और फिर जो पीपीटी है वो बैकग्राउंड फुल पे चलती है। बैकग्राउंड पे चलनी चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि ऐसे तो पिक्सल में तो आता नहीं है ये। तो चलो आप क्या चाहते हो? बस यही कॉपी करके अच्छा, इसमें बताऊंगा ना कौन सी आप खड़ा कर लो, बाहर निकाल इसकी स्वागत में का बोर्ड है ना, तो काम होगा। हाँ खड़ा कर लो, साफ कर लो। हाँ अब ये साफ करना पड़ेगा ना, ये चद्दर ये इधर रख लो, अपने निकाल लो लेके जाना, कॉपी कर दूँ सर। अपने इधर काम करना है, इधर से भी जाएंगे। Yes sir, which folder sir? इंदौर Indore conference 10 December. Okay. So 5,000 PPT. नहीं, आप देखिए इंदौर में खोल दिया साइकिक सेल्फ डिफेंस। Okay, one minute. Psychic self defense, yeah, folder. It is a folder. खोल दीजिए। Okay. हाँ 10 दिसंबर आ गया। इंदौर 10 दिसंबर। पीपीटी खोल दीजिए। हाँ खोल दीजिए। कौन सी है? कई सारी है उसमें। जीरो एनर्जी वाला है। जीरो एनर्जी। हाँ क्या लिखा है उसमें? वन एनर्जी बॉडी डन इंटीग्रेटेड। हाँ उसके नीचे क्या सीरियल है? 1 आवर एनर्जी बॉडी डन। नहीं बस जीरो वाले देख लीजिए, इसको खोल के देख लीजिए। ओके खोल के देख लीजिए। Sir, I mean, it's like it starts with the water flow on the water flow. है ना? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रीव्यू है। नेक्स्ट उसके बाद में इंट्रोडक्शन है। ठीक है। अच्छा जरूर आपसे छपाऊंगा, छपानी है।
I want to get the box rate. क्या रेट लेते हैं आप? तो वो पेजेस वाइज से ब्लैक एंड व्हाइट जो है 300 रुपीज का पेज, ये इस किस्म का पेज, ये क्वांटिटी आपकी क्या रहता है? क्वालिटी 100। अच्छा हाँ, ये खुल गया वो रखते के अंदर। धन्यवाद सर। अभी सिंक्रोनाइज रहेगा क्या? बस मैंने उसको सेव कर लिया। नाउ वी विल डिस्प्ले इन सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम। जैसे आप उधर चेंज करेंगे, मैं इधर चेंज कर दूंगा स्लाइड। So the viewer online means if you can also you can view it online afterwards at home. ठीक है, थैंक यू। क्या खाना नहीं कर रहे? सब आ जाना, फिर खाऊंगा। अभी मैं खोल के नहीं सोया। इनका नाम बताना जरा ठीक से, मैडम का मुंह से। एक मिनट, ये रहेंगी लंच के बाद कि नहीं रहेंगी? रहेंगे ना, रहेंगे। ये लाइए, दीजिए आप दे दो। हाँ, ये ब्रोशर ऑन द टॉप। ये क्या यही है, इधर पीछे लगा दे, बाद में कर देंगे। तो ये क्या है? पहनने में 3 4 5 होगी बस, कोई पूछा 6। हाँ बस ये चेयर लगी, ये हम ये वाईफाई का पासवर्ड अभी मिलता है आपको। वो कागज गया ना, कौन सा पे लिखा हुआ। कौन सा आईफोन? PM ये आईबॉल का। हाँ, क्या है? पहले तो जाओ। हाँ, बाकी नंबर है कुछ, वो उसमें लिखा हुआ है। अगर ऊपर क्या आ गया? मैंने उस पर लिख दिया था। फोटो खींच लिया था ऐसा आपने? ये हाँ हाँ, बट इसमें ज्यादा वो मत करना, क्योंकि अपने को अपन लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। हाँ, तो मैं तो अभी इसे बंद है, थोड़ी देर चला रहा हूँ। हाँ, चलाओ, आप वीडियो देख लो क्या रिकॉर्डिंग हो रही है अपनी, कैसे क्या हो रही है। तो इसलिए आप बैठो ना थोड़ी देर, बताओ तो मैं चेक कर लूँगा, मैं बताऊँगा कि मैं वही देख रहा हूँ। अच्छा, बोर्ड के सामने आप बोल रहे थे और आप देख रहे थे। शुरुआत में एक गलती हो गई थी, अपना इसको चल रहा था, कैसे बताऊँ? रिकॉर्ड हो रहा है? रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, इतना बड़ा रिकॉर्डिंग तो किसकी बन रहेगी। तो क्या होता है, ये जो डेस्कटॉप माइक भी बात कर रहे हैं ना, माइक चल रहा है, अपन नहीं बोल रहे, वो डेस्कटॉप और ये टेबल ये काम कर, ये टेबल उठानी है, तो ये कुर्सी है, ये खसा लेती है। नहीं में तो नहीं है। कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। क्या कहेंगे? नहीं, वो ब्रोकर अपने चार्ज में रख लो।
मैं ये रख लेता हूँ कार्ड आपका। इनका स्कीम ये रहेगी, ये लगे तो ये भी ले लीजिए आप नंबर है उसका अपना, लेकिन नंबर नहीं, नंबर व्हाट्सएप कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, फोटो दे दो, मैं नंबर दे दूँगा आपसे। ठीक सर। ये कुर्सी ये एक काम ये थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे। हाँ कुर्सी फोटो खींचना फोटो। अरे नंबर लिख लो यार, कराइए ना। हाँ क्या नहीं, 1 अच्छा अच्छा, थैंक यू। आपको बहुत मेहनत आप कहाँ कहाँ कैसे रहते। अरे वो आपको मिल गई या आई गॉट यू ईमेल मी ये 11 बजे यू ईमेल हाँ अच्छा दिन दो हूँ अभी there are so many presentations. Will we be able to चेयरपर्सन बोला है। हाँ है ना आपका है ना इवनिंग में आपको इनका ये अभी है, इनका तो ये था कि वो आपके पास मैंने नहीं बताया, हम लोग हमने बहुत अच्छा बनाया। क्या इसको शेयर कर दीजिए, राइट है नहीं ऐसे कैसे हमारा नहीं हमारा ये जो ड्राइव है अच्छा आपके स्टॉक नहीं पैक करिए यार वो एक मिनट वो मैडम आ रही है, ये टेबल खुद से आगे जमाना है, जमाना तो ये चाहिए वो जन्म के से वो ये आगे का वो हाँ वो फिर भी एक
थोड़ी बड़ी है क्या साइड में ये याद करें, वो जो बोर्ड है ना, ये जो पीछे वो जो बोर्ड पीछे खड़ा करा उसको भी चॉकलेट से साफ करके थर्ड गेट पे ले गया मेन गेट वही ये अमित सर को खाना खाने भेजो। हाँ जल्दी खाना खा जाओ, ये खाना खा खाना खा के आ जाओ, खाना खा के आ जाओ। लेने को वो है ना, उसको खुद ही बजाएगा। एक नहीं है क्या सर, साउंड सिस्टम वाला है तो एक माइक सिस्टम में जाएगा आराम सर। हेलो, जिन लोगों ने भोजन का लाभ प्राप्त नहीं किया है वह शीघ्र भोजन प्राप्त करें। हमें सेकंड सेशन में बहुत अधिक वक्ताओं को समय देना है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए जितनी जल्दी हो सके आप अपना भोजन प्रारंभ करें। तो भोजन के तुरंत बाद हॉल में आवे ताकि अगले प्रोग्राम शुरू किया जा सके। हाँ वो जो चेयर थी आनंद सर माइक ये माइक लगवाना है यहाँ पे राइट साइड स्टैंड वाला ये अरे बड़ा स्टैंड वाला माइक ये लगाना, वो छोटा है, बड़ा स्टैंड में चाहिए। ठीक है मैं बोलता हूँ ये लेवल तक आ सकते। ठीक है अभी आंदो लंच करने का आंदो सर, अभी आंदो वो आ गए सर। बोल के लगो हमारे भी साउंड लोहिया के बुरा मानना भैया, एक माइक की व्यवस्था और करना, स्टैंड वाला माइक। आनंद सर, आनंद सर यही है ना, ड्राफ्ट है ड्राफ्ट।
तो स्टैंड ये ले जाओ इधर रोटेट लगा तो ये वो और जब ये वायर लगा लो वो ले लो तुम्हारा बार बार लगा दे ये चले चले नहीं बाकी आएगा हाँ देखने नहीं आएगा बार बार लास्ट एक वाली देने अरे वाला बोल रहा है आराम सर इनका एक माइक और दे देना भैया ठीक कर रहे केवल रोल ऑफ नेचुरोपैथी तो आपका लंच हुआ नहीं हाँ कब तक ऐसा रहते अब ऐसे बैठना है क्या कर सकते हैं कि माइक यार ऐसा सुनिए नॉर्मल ले लिया सब चीजें बहुत कम का ये होता ये तो लगा दो डिस्को लगा दो मेरे पास लगा दो वैसे लगा देते ना
ये तो सब अपने काम में लगे हैं, तो आप अपना इस समय तो आप बात भैया आपने 1 बजे भेजी हुई। It's a PDF. One is PDF. मुझे PPT PPT. One is PPT and another one is but this is a PDF ही आ रहा है। showing you PDF. ये therapy एक बार PDF भी आ रहा है। नहीं ये PDF but we can show it on the screen. You can and my one video with you. YouTube भैया can send us
एक माइक स्टैंड वाला चाहिए स्टैंड माइक नहीं एक माइक दे दूँ आपको काय के लिए चाहिए बस ये गिटार यार बैठ के बजाऊंगा तो स्टैंड गिटार माइक करने के लिए तो चेंज ले लीजिए ना डायरेक्ट ले हाँ देखिए आपका गिटार में जो इनपुट आउटपुट होगा हाँ नहीं सेमी अकॉस्टिक ही है हाँ मुझे लगा माइक कर लेते हैं नहीं ये डायरेक्ट ले लीजिए ना मिक्सर में मेरे को कुछ भी चले आप बता दो सिंगल कोयल या डबल कोयल है सिंगल सिंगल मेरा बैटरी कितना है वो मुझे मालूम नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ माइक कर दो माइक का स्टैंड नहीं है स्टैंड नहीं है यहाँ बैठे आपका कितना परफॉर्मेंस है हाँ बैटरी अगर चार्जर लगा लीजिएगा आप बैटरी बैटरी वो डबल वाले ही है लेकिन मुझे पता नहीं कितना क्योंकि जब से खरीदा है अभी 3-4 दिन पहले खरीदा गिटार लेकिन मुझे पता नहीं कितना है कि बीच में ही बंद नहीं होता है तो होगा तो ना लो आप सब ठीक है मुझे जैक दे देना सही बोल पहले आपने इस तरफ उसी का बहुत अच्छा कोई आ रहा है यहाँ पे आ गई अब इसमें 6 लगा दो 6 सर आपका लैपटॉप को ऊपर
अच्छा अभी जो आपकी प्रगति की क्रिया है फिर उसके हिसाब से प्रवेश करेंगे सर अभी आ रहे हैं उससे प्रवेश करेंगे किसी के रेस्पेक्ट करेंगे आपको पीछे तुम्हारे लिए यार हम बार बार ये लागू कोई बात नहीं इन बनने वाला अपने 1 घंटे बैठे क्या 1 घंटे बैठे दूसरा बैठा होता ही है आपके कारण मेरे आप लोगों ने कनेक्ट कर जाओ ना तो कोई आएगा जाएंगे चला रही के दोनों लैपटॉप अमित भैया का अमित भैया का क्या मालूम काम है चल रोहित लंच करने चलो कोई भी नहीं ये सर बैठे ना फोटो खाते हो बैठ जाओ
Nothing is without.
Hello. I request all the delegates, please take your seats in the auditorium. We are starting our afternoon session. मैं सभी डेलीगेट से निवेदन करता हूं, कृपया ऑडिटोरियम में आ जाएं। सभी को समय का ध्यान रखना है। जिसका जो समय दिया है उस समय पर उन्हें उपस्थित होना जरूरी है। अनिल जी देख लें चेयरपर्सन कौन कौन है, आप लगवा दें जरा प्लीज। जन्म कहाँ है?
Janan, please you start so that after your session we'll start our scientific session. Ishita Upadhyay, please come in the hall. Ishita Upadhyay. यहाँ वो प्लेट्स रखें चेयरपर्सन की. तालियां बजाएं. ये हमारे भारत का भविष्य है. संगीत तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जैनम जो है, मैंने सुजाता को एक बात कही कि वन डे यू विल बी नोन बाय हिज नेम. आई एम सो कॉन्फिडेंट. ही इज गिविंग मास हीलिंग. और ये जब बजाए तो ये मत सोचना संगीत प्ले कर रहे हैं, सोचना ये आपके शरीर के ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं. हो सकता है कुछ लोगों का अद्भुत अनुभव हो इस संदर्भ में. कितने लोग सभी डेलीगेट से निवेदन है, कृपया हॉल में आ जाएं और थोड़ा धीरे करें.
अभी आप लोगों ने सुना मिस्टर जैनन सिंह जी का गिटार वादन। आप एक गिटारिस्ट, म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर हैं। आपने अपनी संगीत यात्रा को 3 वर्ष की उम्र से शुरू किया था। सबसे पहले आपने पियानो सीखा, फिर 7 वर्ष की उम्र में तबला और उसके बाद 9 वर्ष की उम्र में आपकी रुचि गिटार में हुई। अब तक की यात्रा में आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है और हाल ही में आपको एशियन म्यूजिशियन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऑडियंस को देख करके, उसकी वाइब्रेशन को फील करके म्यूजिक को कंपोज करते हैं। तो कृपया ताली बजाइए और उनका उत्साह और गति। चेयरपर्सन एक के बाद एक।
अब हम बेटा वो देना बेटा लोशन। अब हम हमारा साइंटिफिक सेशन शुरू करते हैं और आज के हमारे जो चेयरपर्सन हैं वो हैं डॉक्टर नीता जोगनपुत्रा, डॉक्टर विभा सिंघल मैम, डॉक्टर आर्यन वर्मा, डॉक्टर शीला रेड्डी, डॉक्टर गजानन अग्रवाल और डॉक्टर अजय सिंह चौहान। कृपया आप लोग मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इसमें जो है आज के दिन का बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड जो है वो चेयरपर्सन डिसाइड करेंगे। अभी हमारा आफ्टरनून सेशन हो रहा है, फिर टी ब्रेक के बाद इवनिंग सेशन होगा और उसमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उन्हें डॉक्टर एस.सी. चोपड़ा साहब उनकी धर्मपत्नी की स्मृति में फर्स्ट प्राइज वाले को 5100, सेकंड प्राइज को 3100 और थर्ड प्राइज को 2100 का नगद पुरस्कार देंगे। इसमें डॉक्टर विभा सिंघल मैम को न्यूट्रलाइजर बनाया गया है। जो भी लोग यहाँ पर पेपर प्रेजेंट करेंगे उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो समय है वो 15 मिनट का है आपके पेपर प्रेजेंटेशन का और 5 मिनट क्वेश्चन आंसर के। और जो भी अगर समय ज्यादा लेता है या अपने टॉपिक के अलावा कुछ भी दूसरी बात बोलता है तो विभा मैम उसको रोक सकती हैं। विभा दीदी इधर आप न्यूट्रलाइजर हैं, इसमें कोई भी अगर अपने विषय से संबंधित नहीं बोलता है या ज्यादा समय लेता है तो आप उसको रोक सकते हैं बेल बजाकर। अब हमारे आज के जो स्पीकर हैं, हमारे फर्स्ट स्पीकर हैं मेजर जनरल एमपी सिंह साहब। आप प्रोटेक्शन एंड क्लीनिंग ऑफ नेगेटिव एनर्जी पर आपको जानकारी देंगे। आज हम उनके ज्ञान के सागर में से कुछ मोती हम भी चुनेंगे। डॉक्टर एमपी सिंह बस ये नहीं रहता। What next? अपने मोबाइल पर साइलेंट पे रखें। वो कोइंसाइड कर पाएंगे आप? आज हमारे बीच में बहुत ही अद्भुत विषय पर बोलने के लिए भाई साहब आए हैं, बहुत ही अद्भुत स्पीकर हैं। तो कृपया सभी लोग अपने मोबाइल साइलेंट पर कर लीजिए ताकि किसी को भी किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो और आप उन बातों को समझ सकें जो आपको यहाँ बताने आए।
अच्छा वो उधर का ना तो बेनेशन तो ऊपर नहीं ये तो लगा अब होगा So by the time he's setting up, with your permission, can I present this book to you now? We'll save time, sir. It's my proud privilege to present a book to my Guru Dev Ji, Dr. Sudhir Pitawar Ji. I started my journey with his blessings. So I feel obliged to present this book to him for future blessings. I would now request, now this is for you, I'll come back. एक आपके पैर Anika, my esteemed teacher, she was my first teacher in Acupressure. जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। Thank you. Good afternoon. Today I'll be presenting to you the psychic self-defense. I'll rather speak in Hindi so that everybody benefits. तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है psychic self-defense है। वजह ये हमारे जो आज के रिलेशनशिप है बहुत फ्रैगमेंटेड है, प्रॉब्लम्स होती हैं, फील होता है कि हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे। कुछ लोग समझते हैं कि पैसा होने के बावजूद पैसों की कमी महसूस करते हैं,
कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, चाहे वो खुद जिम्मेदार हो या जो भी चीज हो, हेल्थ के मामले में थोड़ी सी परेशानी, कामों में रुकावटें, डोमेस्टिक इनफेलिसिटी, यानी कि घर में ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अनबन, प्रॉब्लम, रिश्तों में कमी, मिठास में कमी। कुछ लोग सोचते हैं कि लाइफ में कुछ काम नहीं हो रहा, फेलियर, एकदम परेशान। और कुछ समझते हैं कि बहुत स्ट्रेसफुल जीवन चल रहा है, बहुत एंजाइटी चल रही है। ये सब क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हम लोग पिकअप कर लेते हैं। आज एडमिरल पंडित ने बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया कि एनर्जीज क्या होती है और हमारी बॉडीज क्या होती है और किस प्रकार से एनर्जीज का इफेक्ट हमारी बॉडीज पे होता है। वही पे उसको ही थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारा एक जो कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेटेड माइंड बॉडी कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो खाली फिजिकल बॉडी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। फिजिकल बॉडी के अलावा एक एनर्जी बॉडी होती है और इन दोनों के मिलने से, इंटीग्रेशन होने से टोटल बॉडी बनती है। 10% ऑफ द बॉडी, 90% ऑफ द बॉडी, इनविजिबल, विजिबल, इक्वल टू होल बॉडी, दैट इज द टोटल बॉडी। और जो इनविजिबल बॉडी है, जैसे वो बता रहे थे, उसे ऑरा कहते हैं। और ऑरा इस प्रकार से सिंडिकेट करता है, चेंज होता रहता है, डायनेमिक होता है। इसके जो एनर्जी फील्ड है उसके 7 लेयर्स होते हैं, अलग अलग कलर्स हैं और अलग अलग इनके फंक्शन भी है। इंडिविजुअल ऑरा कुछ इस प्रकार से होता है जैसे कि बताया गया, 15 फुट, 20 फुट, 10 फुट, अलग अलग किस्म का ऑरा है हर एक इंसान का। जब दो लोग एक साथ खड़े होते हैं, ही वाज सेइंग कि आपका अभी ऑरा बाकी लोगों के साथ मिक्स हो रहा है, इसलिए मैं मेजर नहीं करना चाहूंगा। यानी कि ऑरा जो है, चाहे 2 लोग हों चाहे ज्यादा लोग हों, उन सब के ऑरा आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और अगर किसी का ऑरा वीक है, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव ऑरा जो, अगर ये नेगेटिव ऑरा है, इसके पॉजिटिव ऑरा पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अपने ऑरा को हर समय मजबूत रखना है। चक्रास बड़े ब्रीफली बताऊंगा। ये जो चक्रा है, ये स्कोर है, ये एक बीच में वेब होता है, इसको प्रोटेक्टिव वेब बोलते हैं। जब ये पंचर होता है, डिस्टॉर्ट होता है, जो भी होता है, उसकी वजह से सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है। ये हमारे मेरिडियंस है। इस प्रकार से शक्ल है चक्रास की, और 7 चक्रास होते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और इन सब के अलग अलग लोकेशंस हैं, अलग अलग कलर्स हैं, जिसके ऊपर वो वाइब्रेट रेजोनेट करते हैं, डिवाइन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। पीस, प्योरिटी, पावर, लव, ब्लिस, हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। ये 7 डिवाइन क्वालिटीज हर एक इंसान के साथ ईश्वर देता है, उन्हें इंडो करता है। एलिमेंट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑर्गन्स एंड साइकोलॉजिकल एंड मिसलेनियस एस्पेक्ट्स, तो इन सब से इन चक्रों का बहुत गहरा रिश्ता है। तो कुल मिला के जो चक्रास हैं, हमारे फिजिकल और नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स को गवर्न करते हैं। तो चाहे वो लोकेशन हो, डिवाइन क्वालिटीज हो, लेयर्स ऑफ ऑरा को भी, 7 लेयर होते हैं ऑरा में, उनको भी इफेक्ट करता है। हमारे एलिमेंट्स को, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, स्पेस एंड ऑल दीज एलिमेंट्स, 5 ऑफ देम, एंड ईथर एलिमेंट्स, ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, साइकोलॉजिकल एंड मिसलीनियस एस्पेक्ट, इन सब के ऊपर इन चक्रों का असर होता है। तो नॉन फिजिकल और फिजिकल रैम के अंदर इन चक्रों का असर होता है और इन चक्रों का ऑरा से लेन देन होता है। अब पॉइंट ये है कि हमारे को साइकिक अटैक होता कैसे है। अब बात करेंगे साइकिक अटैक की। तो साइकिक अटैक जो है, या तो हम किसी साइकिक कंटेमिनेटेड एरिया में जाएं, या अपने ही थॉट से हम अपने आप को कंटेमिनेट करें, या दूसरों के थॉट से हम करें, उससे हमको मिलेगा साइकिक अटैक। और इन सब का क्या है, एनर्जी प्ले होता है। और ये सब जो है इंटेंशनल या अनइंटेंशनल भी हो सकता है। कुछ लोग आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं बिना किसी इंटेंशन के। मैं कुछ एग्जांपल्स अभी दूंगा। फिर बात करेंगे थॉट्स एंड फीलिंग्स की। इसकी बहुत बात चली है। एवरीथिंग इज एनर्जी। आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शन, देयर आर एनर्जीज। और इनकी पावर देखिए। अब आप पॉजिटिव थॉट्स होंगे, इस प्रकार का डिफाइंड फॉर्मेट होगा उसका। ये एम्बिशन का फॉर्मेट है, ये लव का फॉर्मेट है। और नेगेटिव थॉट्स का फॉर्मेट डिस्टॉर्टेड, डर्टी, रेंज मिलेगा आपको, पॉइंटेड, शार्प। ये सब नेगेटिव थॉट्स है। ये पॉजिटिव थॉट फॉर्म है, ये नेगेटिव थॉट फॉर्म्स है, अलग अलग किस्म के। अब जब भी हम सोचते हैं तो हमारी जो बॉडी में एक एनर्जी पैदा होती है, उसको हम बोलते हैं रेडिएटरी, इसको बोलते हैं साइकिक रेडिएटरी फील्ड। तो ये हम इसको एमिट करते हैं इस प्रकार से। जहां भी जाएंगे, जो भी मेरी सोच होगी, उस
पीआरएफ का असर दूसरे इंसान पे होगा, सबसे पहले मुझ पे होगा। अब कंटेमिनेशन क्या होती है? जब हम साइकिक कंटेमिनेशन की बात कर रहे हैं तो क्या होती है? साइकिक कंटेमिनेशन, ऑफिस में स्ट्रेस, सख्त बॉस, परेशान करने वाला इंसान आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी से पीआरएफ देगा, और उस पीआरएफ से आपको चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ हो, जिसमें भी हो, उसके ऊपर आपको इफेक्ट पड़ेगा। तो आप साइकिक कंटेमिनेशन को पिकअप करेंगे। उसके अलावा आपके कुछ रिलेटिव्स, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, उनके नेगेटिव होने की वजह से आपके ऊपर भी उसका असर पड़ता है। आपके घर के अंदर अगर आपके पेरेंट्स के बीच में कोई बातचीत होती है, बच्चे चाहे दूसरे कमरे में भी हो, तब भी उनके ऊपर वो नेगेटिव एनर्जी क्योंकि फैली होती है, उसका असर बच्चों पे होता है। तो नेगेटिव ये कंटेमिनेशन उनको भी मिलता है। चाहे सोसाइटी में आप बाहर भी चले जाइए, ब्रॉथल्स, गैम्बलिंग, कैसीनोस, इन जगहों पे जाएंगे, आपको भरपूर नेगेटिव कंटेमिनेशन आपको मिलेगा। किसी किसी सिटीज में जैसे दिल्ली में हमेशा स्ट्रेस, लोग गुस्से में परेशान आपस में रहते हैं, जिसकी वजह से आपको कंटेमिनेटेड साइकिक कंटेमिनेशन आपको मिलता रहेगा। आपने अगर एक ऐसा टर्न ले दिया और पीछे की गाड़ी आपकी वजह से रुकी, उसको ब्रेक मारनी पड़ी, वो डेफिनेटली आपको फ्राउन देगा, आपको नेगेटिव आपके बारे में सोचेगा। आपने वो नेगेटिव एनर्जी पिकअप कर ली। इसी से बचना है, इन चीजों से ही बचना है। आप जा रहे हैं, आपके कोई बिल्कुल बाइं से निकल गया, बिना हॉर्न दिए, बिना कोई स्पेस को छोड़ते हुए, आप हमेशा उसको कुछ ना कुछ कहेंगे या सोचेंगे, कहेंगे नहीं तो सोचेंगे जरूर। नेगेटिविटी। आप कुछ खा रहे हैं, आपके बगल में भिखारी खड़ा है, आप उसको वो चीज नहीं लेके दे रहे या 10 रुपए नहीं दे रहे, तो आपकी तरफ किस निगाह से देखेगा? यू आर पिकिंग अप साइकिक, नेगेटिव साइकिक कंटेमिनेशन। इस प्रकार से ये। तो अब पावर ऑफ थॉट देखते हैं। पावर ऑफ थॉट क्या है? हमने सब ने सुना है, देखा है। एग्जाम्पल से बाबर, जब हुमायूं, उनका बेटा बीमार हुआ, डेथ बेड पे था, उन्होंने प्रे किया, प्रे सुनी गई और वो ठीक हुआ। पॉजिटिव एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ थॉट्स। एक सोलोमन आइलैंड है जहां पे ट्राइबल्स रहते हैं। अगर उनको पेड़ काटना होता है, हरा भरा पेड़, तगड़ा पेड़ काटना होता है, उसको सब मिलके 30 दिन 20 दिन के लिए कर्ज करते हैं और वो पेड़ सूख के नीचे गिर जाता है। ये है पावर ऑफ थॉट, नेगेटिव उसका असर। आपने सबने सुना होगा इमोटो जी के एक्सपेरिमेंट्स। जब वो उस पानी को लेके जो भी सोचेंगे उस प्रकार के क्रिस्टल्स बनेंगे। आपने इसके बारे में भी सोचा होगा। पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स से किस प्रकार से इफेक्ट होते हैं, आपने पावर ऑफ थॉट को महसूस किया। तो अब इन सब का थॉट्स का इंटरप्ले विद ऑरा होता है। पंडित जी भी ये बता रहे थे, आपके अगर थॉट्स चेंज नहीं होंगे तो मैं हील भी करूंगा तो वो फिर से वैसी रिस्टोर, बुरी हालत आपकी वैसी ही होने वाली। अब इनका थॉट्स के ऊपर असर पड़ेगा ऑरा पे, ऑरा का चक्रा, क्योंकि जो हमारे जो चक्रास है वो हमारे मेटाफिजिकल प्लेन, बॉडी के बाहर ऑरा के अंदर होते हैं। उसका असर चक्रों पे पड़ेगा, जिनका फिजिकल नॉन फिजिकल एस्पेक्ट सब के ऊपर बुरी तरह से असर पड़ेगा, क्योंकि चक्र जो है आपके नॉन मेल फंक्शनिंग करने लगेंगे। अब साइकिक अटैक। साइकिक अटैक क्या होता है? जब भी कोई भी इन्फ्लुएंस ऑफ डर्टी एनर्जी ऑन योर ऑरा, साइकिक अटैक। ये चाहे वो वैम्पायर से आए, चाहे नेगेटिव इंटेंशन से आए, चाहे कोई आपको कर्ज करे, इस प्रकार से आपके ऊपर साइकिक अटैक होगा। ये चाहे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, आप ही अपने बारे में नेगेटिव सोचते रहे, खराब सोचते रहे, आपके ऊपर होगा, या दूसरे कर सकते हैं। इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है। वैम्पायर, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनके साथ बैठिए, आपकी पूरी एनर्जी को गजलिंग कर लेंगे, एकदम एनर्जी सोख लेंगे, आपको लगेगा कि मेरे साथ क्या हो गया। उनसे दूर रहना है। साइकिक अटैक, यहां तक कि शमन्स को बुला के लोग कर्ज करवाते हैं दूसरों को, उसके ऊपर भी आपको साइकिक अटैक का इफेक्ट मिलता है। अब इस सिम्टम्स के होंगे, अगर आपको लग गया कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, एंजाइटी हो गई, रात को सोने में नींद नहीं आ रही, फटीग ज्यादा महसूस कर रहे हैं, सोचिए आपके ऊपर साइकिक अटैक हो चुका है। अभी उसका इफेक्ट ऑरा पे होता है। सबसे पहले अगर आपका ऑरा हेल्दी है तो काफी हद तक आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी को रिपेल करते हैं। अगर आपका ऑरा कमजोर है तो आप उस नेगेटिव एनर्जी को पिकअप कर लेते हैं। इस तरह से आपके चारों तरफ वो नेगेटिव एनर्जी भर जाती है। ये नेगेटिव ऑरा, पॉजिटिव ऑरा, नेगेटिव अनहेल्दी पॉजिटिव, वीक ऑरा स्ट्रॉन्ग ऑरा। तो अभी उसका इफेक्ट चक्रों पे भी होता है। ये चक्रा यहां से क्रैक होगा, उसमें होल्स बनेंगे, नेगेटिव थॉट एंड एलिमेंटल्स आएंगे। इस तरह से ये जो नेगेटिविटी है आपकी क्रैक्स के थ्रू, होल्स के थ्रू, जो आपके इसके प्रोटेक्शन जो टूट जाता है उससे अंदर आती है।
इस प्रकार से आपके चक्रों की हालत हो जाती है, डिस्प्लेस्ड टोटली। या चक्रास आपके इस प्रकार से होने शुरू होते हैं, ये नेगेटिव चक्रास। अब क्या करें? प्रोटेक्शन। हमारे साथ ये सिचुएशन होनी नहीं चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए साइकिक सेल्फ डिफेंस। अभी तक अटैक, अब डिफेंस कैसे करें इसके लिए? इस पहले हम डिफेंस करेंगे, और अगर आप एफ्लिक्ट हो गए उसको हटाएंगे कैसे? दो बातें देखेंगे। तो सबसे पहले अपने जो ऑरा है उसको ही स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आपके ऊपर आप वल्नरेबल कम हो जाएंगे। तो कैसे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे? ये आप इस प्रकार से हाफ पोजीशन बनाएं। आपका अपर एरिया जो है कॉम्पैक्ट, डेंस, स्मॉल, इसलिए वो वल्नरेबिलिटी से बचेगा। या आप नीचे का पैरों को इस तरह से क्रॉस करेंगे। अगर आप किसी बॉस के सामने बैठे हैं, नेगेटिव एनर्जी फेंक रहा है, आप ऊपर तो कर नहीं सकते, खराब लगेगा, नीचे से कर लीजिए, पैर क्रॉस। आप उसकी काफी सारी नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंचेगी। दोनों ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में झगड़ा है, प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है, दोनों नेगेटिव एनर्जी फेंक रहे हैं दूसरे के ऊपर। इस प्रकार से अपर लिम्स, लोअर लिम्स को क्रॉस कर लीजिए। एक्सरसाइज करने से बॉडी की नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो फिजिकल बॉडी की नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे चक्रा से हो, चाहे कैसी भी हो, उससे बाहर कंटेमिनेशन से जितना भी है डिकंटेमिनेट होना शुरू होता है। उसके बाद मेडिटेशन, वो तो रास्ता है ही, मेडिटेशन करेंगे, आपका और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और धीरे धीरे आपको इन चीजों का असर कम होगा। स्विच ऑन पोजीशन। जब आप टंग को पैलेट के साथ लगाते हैं तो उसको स्विच ऑन पोजीशन बोलते हैं। जैसे ही वो करेंगे आपकी बॉडी जीवी में फ्लो करेगी ज्यादा और आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड होगी, बाहर नहीं जाएगी। आप अगर चाहें तो आप हाथों को इस तरह से बंद कर सकते हैं। एक उंगली को इसको अंदर कर लीजिए, थंब को अंदर फोल्ड करें और उसको दाहिने हाथ से क्लैस्प कर लेंगे, तो जो एक्सेस एनर्जी फ्लो करनी होती है वो आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी। तो इससे प्रोटेक्शन होगी और आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा। हाँ जी, 30 मिनट्स हो गए, 2 मिनट्स। ओके, इस प्रकार से कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने ऑरा को, और आप शील्ड बना सकते हैं। और एक शील्ड बना सकते हैं, 4 किस्म की और एक शील्ड होती है, उसको प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है। और इन शील्ड्स को परमिएबल बनाया जाता है, और चाहे एथरिक शील्ड हो, चाहे वो आपकी इमोशनल शील्ड हो, चाहे मेंटल शील्ड हो, स्पिरिचुअल शील्ड हो। शील्ड बनाने के तरीके हैं जो सिखाए जाते हैं, बता देंगे बाद में। और इस अपने मकान को भी आप इन एनर्जी से बचाया जा सकता है। और एथरिक ग्लव पहनने से, बहुत लोगों से जब हाथ लगाना होता है तो एथरिक ग्लव पहनने चाहिए, क्रिएट बाय योर ओन सेल्फ। एंड जब बहुत सारे बस में ट्रैवल करना हो, सिनेमा में जाना हो, कहीं जाकर जाना हो, तो उसको बोलते हैं एथरिक बॉडी फिट को आप लगा सकते हैं। वर्लिंग कर सकते हैं, ऑरा को वर्ल कर सकते हैं और बॉडी को भी वर्ल कर सकते हैं, उससे भी आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। आप क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं, कैक्टस को यूज कर सकते हैं। ये डिसइंटीग्रेटर्स है, नेगेटिव एनर्जी को लेके एब्जॉर्ब करके और डिसइंटीग्रेट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इन सबको लेके चल सकते हैं। बैड ड्रीम्स आते हो तो ब्लैक क्रिस्टल आप रख सकते हैं। वॉलेट लाइट रात को लगाइए, बच्चों को परेशानी नहीं होगी। और अपने किसी ईश्वर को, देवी देवता को मानना हो, कोई टेलिस्मैन करना हो, तो आप किसी होली ऑब्जेक्ट को रखना हो, इनसे किया जा सकता है। अब रिमूव कैसे करेंगे नेगेटिव एनर्जी को? आप ब्लैक ले लेंगे हटाने के लिए और व्हाइट चार्जिंग के लिए। और इस प्रकार से यहां से क्रिस्टल लेके ऐसे आप घुमाएंगे और फिर उसके बाद 2 minutes. You can start with question. Okay. So you can remove the negative energy using the crystals. So I end over here. Are there any questions? Any questions? अगर मैंने 15 मिनट लिया ना सर। अच्छा, if there are no questions, I'll complete this portion. If there are no questions, okay. So क्या है, ये जो ऑरा है, हम ब्लैक क्रिस्टल लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज उस क्रिस्टल को यूं घुमाएंगे, उसके ऊपर व्हाइट लाइट फेंकेंगे और उस नेगेटिव एनर्जी को एक फायर जलाइए मन से, इमेजिनरी फायर विजन से, और उसके अंदर उसको भस्म करते चले जाए। एवरी टाइम यू फ्लिक भस्म, यू निकाला बाहर कर दिया 21 टाइम्स। उसके बाद पूरे को सेंट्रलाइज कर दीजिए, यहां से ऊपर से लेकर नीचे तक आप क्रिस्टल से उसको एनर्जी को खींचिए और उसको डिस्ट्रॉय करिए उसी फायर के अंदर। फिर उसके बाद इसी चीज को
अभी अभी हमने ऑरा को क्लीन किया, अभी चक्रा को क्लीन करेंगे, ऊपर से चक्रा को क्लीन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सभी चक्रा को क्लीन करेंगे और इसी चीज को ये होगा। ये इसी को रिपीट कर लेंगे और जब चार्जिंग करना होगा तो हम पहले चक्रा को चार्ज करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ और उसके बाद हम चार्ज करेंगे ऑरा को। ऑरा को इस प्रकार से चार्ज करेंगे क्लॉकवाइज। करने के बाद उसको हम ओवरलैप करेंगे और इस प्रकार से एक सिंबल भी बनाएंगे और इस तरह से हम ग्रेटिट्यूड से उसको फिनिश करेंगे। अपने मकान को सबको इनसे आप क्लीन करके रख सकते हैं। एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी क्लीन करना हो, नेगेटिव एनर्जी रिमूव करना हो, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। जब आपको चार्जिंग करना हो, क्लॉकवाइज जाएंगे। दैट इज वन पॉइंट। जब भी क्लीन करना हो ऊपर से नीचे आएंगे और जब आपने चार्ज करना हो नीचे से ऊपर जाएंगे। जैसे बकेट में पानी भरता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो नीचे के चक्र, रूट चक्र को पहले चार्ज करेंगे, फिर यहाँ पे चार्ज करेंगे और जब क्लीन करना हो यहाँ से क्राउन से लेकर नीचे तक क्लीन करेंगे। सो दिस इज द वे यू कैन take preventive measures, and if you get afflicted, you can remove the negative energy, but the methods are shown. Are there any questions? Sir, your question, sir? Can he suggest something? Sir, please. हम लोग बुढ़ापा में बुढ़ा लोगों ने क्या करते हैं, फाइल वार करते हैं, फाइल लेके आइटम करता है। जब कोई भाई अच्छा चीज करता था, मेरा मम्मी तो लाल मिर्ची को लेके ऐसे ऐसे घुमाते हैं, क्या है वो बताता हूँ। ऐसे ही तेल वॉश, वाटर वॉश विथ साल्ट, दिस विल रिमूव सब पूरे का वन। Are there any other questions? What is the name of the stone which you are using? Beg your pardon, sir? What is the name of the stone which you are using? Which stone? ये for Black stone. अच्छा, crystal, black crystal. Black crystal is to remove the negative energy. White crystal is for charging. What is the crystal name? Crystal name, you can take any quartz or anything. Whatever you want. Tourmaline ले लो, कुछ ले लो. Yeah, tourmaline ले लो. And these are available on Amazon. All crystals are available. हाँ जी. यदि आपने ये बोला कि नेगेटिव एनर्जी हमें निकालनी है, तो घर में कौन से स्थान पर निकालनी है? घर में कौन से स्थान पर? टाइम खत्म हो चुका है क्योंकि वहाँ पे सर क्वेश्चन आंसर का टाइम खत्म हो चुका है, प्लीज। ओके। नंबर से क्या? I'm sorry, लेकिन जो टाइम था उसका हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं अगले स्पीकर को बुलाना चाहूंगी, डॉक्टर सुधीर खेतावत सर, जो कि आपको के बारे में बताएंगे। और आपके बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। खेतावत सर ने जब सफर को शुरू किया था तो शुरू में काफी परेशानी आई और आज आप देख सकते हैं कैसे काफी रुकता गया। डॉक्टर सुधीर खेतावत। देखिए, हाँ जी सर का भी टाइम फिक्स है। डॉक्टर अनीता और मेरा नाम बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन के लिए चयनित नहीं होगा। वी आर आउट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, तो प्लीज डोंट यूज एनर्जी बियॉन्ड कंपैरिजन। देखिए, कोरोना काल में मैंने इस 3 फिंगर टेक्निक को चक्रों पर आजमाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, भारत का पहला प्रयोग किया पटना में। एक लेडी को गायनेकोलॉजिस्ट ने कह दिया इसको एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता और उसकी डिलीवरी होना थी।
काफी कॉम्प्लिकेशन थे, उसने कांटेक्ट किया। तो हमने और अनीता जी ने और हमारी टीम ने तय किया कि उसको ऑनलाइन पेनलेस डिलीवरी करवाई जाए। ये पहला प्रयोग था इंडिया का। उसकी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क किया, उसके माइंड को कंडीशन किया और 10 दिन तक उसको हमने 3 फिंगर टेक्निक की ट्रेनिंग दी। 3 फिंगर टेक्निक की ट्रेनिंग से ऐसा हुआ कि वो 10 तक गिनती थी, गिनते अंगूठा उंगली से चिपक जाता और चिपकते ही यूट्राइन कंट्रैक्शन वाज अंडर कंट्रोल। गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत ताज्जुब हुआ कि इंदौर बैठा हुआ व्यक्ति पटना में नर्सिंग होम में भर्ती उस लेडी को कैसे कंट्रोल कर रहा है। 20 दिन बाद जैसे ही उसको पेन्स चालू हुए, मैंने और अनीता जी ने उसका ट्रीटमेंट ऑनलाइन शुरू किया। अनीता जी ने ओम ध्वनि चालू करी और आप विश्वास नहीं करेंगे, 15 मिनट के अंदर जैसे उसने अंगूठे को उंगली से चिपकाया, द पेन कन्वर्टेड इनटू प्लेजर, हंसते हुए डिलीवरी हुई है। दिस वाज फर्स्ट मिरेकल। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह थी, जो वहां के अखबारों ने कवर किया, जो बच्चा पैदा हुआ उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट थी और उसकी भी उंगलियां ऐसी थी। बच्चा अभिमन्यु का हम किस्सा सुनते हैं। जब हम उसकी मदर को ट्रेनिंग दे रहे थे तब बच्चा भी सुन रहा था और उस बच्चे का आईक्यू इतना बढ़िया है कि उनके परिवार में विश्वास नहीं होता है। उस बच्चे ने उसके बाद में मंत्र बोलना सीख लिया और बहुत तेजी से ग्रास्प कर रहा है। 3 फिंगर टेक्निक इसलिए भी आवश्यक है। आज मैं आप लोगों को कंडीशन करवाऊंगा और अगर आप लोगों ने सीरियसली उसको फॉलो कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपको ब्रेन में इंफ्रैक्ट होता है या आपको कार्डियक अरेस्ट होता है, कुछ भी होता है, और केवल अंगूठे को उंगली से टच कर लेंगे, सारे प्रोसेस रिवर्स हो जाएंगे। इस 3 फिंगर टेक्निक के द्वारा आई हैव डेवलप्ड a rapport with my internal systems. I have given one number to my heart. सोमवार के दिन मैं आधा घंटा अपने दिल से बात करता हूं। I sit in my cabin. 3 बार लंबी गहरी सांस लेके I tell my heart, I love you. I love you. बोलने के पहले मैं मेरी पल्स चेक करता हूं। अगर मेरी पल्स 80 है, 15 मिनट आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलते बोलते मेरे मेंटल स्क्रीन पर हार्ट की इमेज आ जाती है और वो इमेज आते ही मैं बोलता हूं हार्ट को, इफ यू हैव एक्सेप्टेड माय फ्रेंडशिप प्लीज शो मी फ्लक्चुएशन। पल्स रेट गोज टू 100। फिर मैं कहता हूं अब थोड़ा सा कम करके बताएं। मंगलवार किडनी को, मंगलवार के दिन सिर्फ किडनी से बात करता हूं। आई कंसंट्रेट ओनली ऑन किडनी। तो पिछले 2-3 साल में ऐसा हो गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, आई कुड रिवर्स माई डायबिटीज। मैंने 500 लोगों को डायबिटीज के लिए सेशन दिए। मनोहर भंडारी भी जानते हैं, उनको मैं बार बार कहता था, बी सीरियस, कंसंट्रेट ऑन योर पेंक्रियास, लेट बीटा सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन। व्हाई बीटा सेल्स कैन नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन? अगर चिंता डायबिटीज का कारण है तो चिंतन डायबिटीज का निवारण है। लेकिन चिंता करना सब जानते हैं। आज मैं आपको कहूं कि आप सब अपने शरीर के अंगों से बातचीत करते हैं तो आप बोल दोगे पॉसिबल ही नहीं। क्यों?
जब आप गुस्सा होते हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि नहीं? तो आपने बात किया ना हार्ट से। जब आप बहुत ज्यादा सदमे में होते हो तो एसिडिटी होती है कि नहीं? फिर when you can develop rapport with negative suggestions, why you cannot develop rapport with positive suggestion? Destructive thinking leads to degeneration, constructive thinking leads to regeneration. और मैंने इस पे बहुत काम किया है। लोगों को सेशन घंटों देते मैंने कहा शायद नोबडी सीरियस, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि हम मीठा खाना शुरू कर दें। वो तो डायबिटीज में मीठा खाना चाहते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि थोड़ा त्याग करके हम क्यों ना परमानेंट मीठा खाना शुरू कर दें। जब मैं उनको बोलता हूं कि अब तुम्हारी डायबिटीज रिवर्स हो रही है, तो उस समय उनको जलेबी दिखती है, उनको मीठा दिखता है। मैं कहता हूं उस समय मीठा नहीं दिखना चाहिए। इफ यू रिमेंबर मीठा, हाउ योर पेंक्रियास विल वर्क। मेडिकल कॉलेज इंदौर में आई गेव वन डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्ग बैक। वो डेमोन्स्ट्रेशन इतना सक्सेसफुल रहा, सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन। जैसा कि एमपी सिंह जी ने बताया, हमारा विचारों का पानी पर कितना गहरा असर होता है। तो कई ऐसे प्रयोग किए। एक प्रयोग बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स ने मेरे को चैलेंज कर दिया था कि हम नहीं मानते। मैंने बर्फ का आइस क्यूब मंगवाया, सारे डॉक्टर्स की उपस्थिति में मेरे हाथ पर आइस क्यूब रखा, मैंने कंसंट्रेट किया और आइस क्यूब को मैं फील करने लगा। ये जलता हुआ कोयला है, जलता हुआ कोयला है। 5 मिनट बाद मेरे हाथ में ब्लिस्टर था। आई कुड प्रोड्यूस ब्लिस्टर विद द आइस क्यूब। दिस वॉज इफेक्ट ऑफ माइंड ओवर बॉडी। एक को पानी पिलाया शक्कर का, ये कहते हुए कि तुम्हारे पेंक्रियास का फंक्शनिंग थोड़ा कमजोर रहेगा। माइंड कंडीशनिंग के बाद, उसकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं थी डायबिटीज की। जब 2 घंटे बाद चेक किया, his blood sugar was 250। और जब उसको ये सजेशन दिया गया कि नाउ योर पेंक्रियास विल प्रोड्यूस इंसुलिन, और दोबारा चेक किया, his blood sugar was 120। तो गिविंग सेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन, मैंने कहा लोगों को फायदा हो नहीं हो, मेरे ऊपर रिवर्स हो जाए तो क्या दिक्कत है। माय ब्लड शुगर यूज्ड टू रिमेन 300 फास्टिंग, क्योंकि माय फैमिली हिस्ट्री वाज ऑफ डायबिटीज। तो करवाते ऐसा हो गया कि अब घर के लोग मुझे मीठे के लिए पूछते रहते हैं, ये मीठा खिलाएं तो मेरी ब्लड शुगर डाउन हो जाती। आई वॉज टेकिंग ग्लाइकोमेट 500 लॉन्ग बैक, लेकिन पिछले 2 साल से माई डायबिटीज इज 100% क्योर्ड। मेरा -3 चश्मा था, वो उतर गया। आई कैन रीड। आई एम हैविंग हर्निया प्रॉब्लम फ्रॉम लास्ट 20 years। 2 बार ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। डॉक्टरों को रिक्वेस्ट किया था नायलॉन प्लेट रख देना, डॉक्टर साहब ने सॉरी बोला, डॉक्टर साहब आई फॉरगॉटन। तो कोई बात नहीं, बोला आप बेल्ट लगा के रखो, एब्डोमिनल बेल्ट, उसके बिना आपको कभी भी अटैक आ सकता है, इंटेस्टाइन फंस जाएगी। और आप जहां तक है घूमना और साइकिलिंग थोड़ा अवॉइड करें, उस पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। मैं आज भी 15 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, that too I cover in 15 minutes। तो आप सबसे एक प्रॉमिस लेना है, जेंटलमैन प्रॉमिस, बेस्ड ऑन माय इंप्रूवमेंट एंड क्योर। जब हम 24 घंटे इस मस्तिष्क से और शरीर से काम ले रहे हैं, why we cannot give 24 minutes to our mind and body। आप सब लोगों को 24 मिनट अपने शरीर के लिए निकालना है, और वो 24 मिनट मेंटल रिलैक्सेशन, वो 24 मिनट आप, अगर आप वॉकिंग के लिए नहीं जा सकते हैं तो आप अपने बॉडी में मूवमेंट लाएं बस, और किसी से भी हाथ मिलाएं। अगर आपकी जेब में एक तुलसी का पत्ता है तो यू विल नेवर गेट नेगेटिव एनर्जी। तुलसी का ऑरा
एडमिरल साहब ने नापा, मेरे को बताया। मैंने सोचा कि ये तो पता करना बहुत मुश्किल है कि कौन मन में क्या लेके आया है। नेगेटिव एनर्जी तो ज्यादा है सब जगह, पॉजिटिव बहुत कम है। अगर तुलसी का पत्ता आपके पास में है या मोर पंख आपके पास में है, यू विल नेवर गेट अटैक ऑफ एनी नेगेटिव एनर्जी। अब ये 3 फिंगर का कंसेप्ट बहुत पावरफुल है। अभी अरविंदो यूनिवर्सिटी में मेरा हुआ था, वहां डॉक्टर मनोहर भंडारी भी थे। एक नर्स को कंडीशन किया, ऑक्सीमीटर लगाया 99, 5 मिनट उसने कंसंट्रेट किया, लंग्स को देखा और फिर मनोहर भंडारी साहब को मंच पे बुलाया था। व्हाट वाज द रीडिंग डॉक्टर भंडारी? 85 जस्ट इन 5 मिनट्स। इन्होंने आके प्रूव किया कि 99 से 85 कोरोना के अंदर जिनका भी ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन लेवल 85-80 था, वो सब हॉस्पिटल भेजे गए, और जो हॉस्पिटल भेजे गए वो कभी वापस नहीं आए। जो घर पर रह गए वो सब बच गए। दिस इज माय एक्सपीरियंस। रोग इतना बड़ा नहीं होता जितना रोग की कल्पना उसको बड़ा बनाती है। ये अंगूठा साधारण नहीं है। एकलव्य से अंगूठा मांगा क्यों गया? क्योंकि दुर्योधन उनको द्रोणाचार्य को मालूम था कि द ब्रेन इज इन द थंब। अंगूठा ले लेंगे तो इसका जो कंसंट्रेशन पावर है वो कम हो जाएगा। अर्जुन को कभी डिफीट नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने उससे अंगूठा मांगा। इस अंगूठे के द्वारा ये आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ बॉडी में मानता हूं, दिस इज योर पावर ऑफ द सबकॉन्शियस। You can have voluntary control on involuntary processes of the body if your mind is conditioned for 3 finger technique. Next, ये देखिए पेंक्रियास में मैंने जिन को पिक्चराइज करवाया कि स्टिमुलेशन इज टेकिंग प्लेस। कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब आप भी मूवमेंट फील कर सकते हैं मेरे पेट पर। जैसे वो 1 to 10 काउंट करते हैं, अंगूठा उंगली से टच होता है, they used to feel vibration, stimulation in pancreas, which resulted production of insulin by regeneration of beta cells. Next, ये ऑक्सीमीटर की रीडिंग है, आप देख रहे हैं धीरे धीरे चेंजेस आते हैं इसमें। Everything is governed by the mind, whether it is lung, kidney or any organ. Next, ये एक लड़की ऑस्ट्रेलिया से आई थी, इसकी एक्यूट पेन चेस्ट था, बॉम्बे कलकत्ता सब जगह चली गई थी, कहीं पर भी इसको फायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली शी केम टू आवर इंस्टीट्यूट एंड within 7 days when her mind was conditioned, from this you will come to know कि she learned the art of controlling pain। जैसे ही वो उसको इंडिकेशन लगता था कि एक्यूट पेन चालू हो रहा है, she used to touch the thumb with the finger and pain used to come under her control. Next, ये एक साइंटिस्ट है डॉक्टर जोगी जॉर्ज RR कैट में, उन्होंने भी अपनी डायबिटीज रिवर्स की है। उन्होंने अपनी खुद की फाइंडिंग्स दी, उनको नींद नहीं आती थी। नेक्स्ट, ये ग्राफ है किस तरह से उनको साउंड स्लीप आने लगी, हाउ ही कुड रिवर्स हिज डायबिटीज। पूरा स्मार्ट वॉच के द्वारा उन्होंने पूरे पैरामीटर्स को तैयार किया। ये उनका ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट, ये वो नर्स है देवास की, आई है क्या वो पूजा? नहीं आई। तो ये इसने इतना पावरफुली डेवलप कर लिया है, काश ये अगर मेरे को पहले मिल जाती तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होने देता किसी। ये इंस्टेंट विथिन 5 मिनट्स 99 को 84 कर लेती है, 84 को 99 कर लेती है ऑक्सीमीटर।
और कई जगह डिमॉन्स्ट्रेशन किया। शी वॉज द गर्ल हु डिमॉन्स्ट्रेटेड एट अरविंदो इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, ये पेपरों में न्यूज आई थी, इंदौर के सभी अखबारों में। नेक्स्ट, ये ग्राफ है, जैसे अंगूठा उंगली से टच होता है, अल्फा लेवल कम्स इन दी ब्रेन, दैट इज थॉटलेस कंडीशन। नेक्स्ट, ये कलेक्टर साहब ने बुलाया था मेरे को, तो ये एक एडीएम साहब थे, बहुत ज्यादा बोल रहे थे, मैं नहीं मानता ये सब बकवास है। मैंने आधा घंटा इनका हाथ तंगवा दिया था, नीचे नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा आप करके बता दीजिए, आपकी सारी सेना भी लग जाएगी तो आपका हाथ नीचे तब तक नहीं होगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा। अल्टीमेटली इन्होंने सबके सामने सॉरी बोला, तब फिर इनका हाथ नीचे करा। नेक्स्ट, हो गया। ये है वो मनोज भंडारी साहब जो जिक्र कर रहे थे, ये इसोफेगस कैंसर का केस था। आई एम रियली thankful to Dr. Manoj Bhandari who gave me this opportunity to help this person. यहाँ छेद कर दिया था, पानी तक नहीं पी पा रहे थे। एक मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, 3 फिंगर टेक्निक डेवलप करी, और मेरे को फोन करके बोला डॉक्टर खेतावत में प्रेमचंद। अब मैं बोलने लगा, मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने मनोहर को उसी वक्त फोन करके बोला, क्योंकि जब पेशेंट फर्क होने के बाद अपना अनुभव शेयर करता है, कितनी खुशी मिलती है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स। नेक्स्ट, ये सेमिनार है, सारे मेडिकल कॉलेजेस में आई एम कंडक्टिंग। नेक्स्ट, 3 फिंगर टेक्निक इन फ्यूचर कैन हेल्प वन फॉर इंस्टेंट कंट्रोल ऑफ एनी पेन, ब्लीडिंग एंड एनी इमरजेंसी कंडीशंस। मैंने अपनी मदर को, मेरे पास खबर है कि शी इज नो मोर, सारी वो लाइन लंबी आ गई, सब घबरा गए। मैंने मदर के कान में जाके कहा कि 3 फिंगर टेक्निक जो आपने डेवलप की है, अब आपके अंगूठे को मैं टच कर रहा हूं। जैसे अंगूठे को टच किया और बार बार मैंने कहा कि मेरे से बिना मिले नहीं जा सकती, आपने कहा था कि जाने के पहले तुमसे मिलके जाऊंगी। ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। 15 मिनट बाद उन्होंने आंख खोल दी। CHL अपोलो के अंदर सारे डॉक्टरों का ब्लड प्रेशर हाई। ओपन योर आइज, बोला बेटा तूने लेट कर दिया, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूं 24 घंटे तेरे पास आने के लिए। एंड शी क्लोज्ड हर आइज। दिस मिरेकल हैपेंड। तो जो प्रैक्टिकल पार्ट है, अपन लोग 3 दिन तक हैं। व्हेन आई विल सी कि कोई स्पीकर नहीं है, at that time I will take my practical session. I have to obey my chairpersons, respected chairpersons. I am sorry for taking 5 minutes more. Any questions? I am so sorry, sir. I have abided by the rules. Rule is rule. Yes. Next speaker. क्या हुआ? हमारी नेक्स्ट स्पीकर है सुजाता मैम, उनके बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। पहले, आप एक सर्टिफाइड लाइफ कोच, साउंड एंड स्पिरिचुअल हीलर हैं। आप एक सुप्रसिद्ध लेखिका भी हैं। आपकी बुक पावर ऑफ साउंड को अब तक 17 बार नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। आप एक TEDx एंड इंटरनेशनल स्पीकर हैं और पिछले 25 सालों में आपने लगभग 3 लाख से अधिक लोगों को विश्व भर में लाभान्वित किया। आपका मिशन है पावर ऑफ साउंड के द्वारा खुशहाल व स्वस्थ जीवन प्रदान करना। आप हमारे बीच अपने 25 वर्षों के अनुभव को शेयर करने आई हैं और एक लेखिका के तौर पर, एक थॉट हीलर, ट्रांसफॉर्मेशन इन्फ्लुएंसर के रूप में आपको अब तक अनेकों बार नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। और आपकी जो बुक है पावर ऑफ साउंड, उसका हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रणव मुखर्जी ने भी मानव जाति के लिए वरदान बताया। आपको जो प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं उसमें नेशनल आरोग्य रत्न, अशोक स्तंभ अवार्डी 2021, डॉक्टर अब्दुल कलाम नेशनल बिल्डर अवार्ड 2021, नेशनल अवार्ड एशियन ऑथर अवार्ड आपको 2022 में मिला।
ग्लोबल आइकॉनिक अवार्ड 2021 में, और अब तक 5 बार आपको डॉक्टरेट भी प्राप्त हो चुकी है और 27 से अधिक देशों में आप अपनी इस विधा का प्रदर्शन कर चुकी हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आए और हम लोगों के बीच में अपने ज्ञान को शेयर करें। और मैम अपनी बुक का विमोचन भी करना चाहती हैं, तो आप बुक ऊपर ही आपकी। लैपटॉप चाहिए रहेगा यहाँ पे, वो जिस पे पीपीटी है ना वो वाला लैपटॉप, पीपीटी वाला लैपटॉप। ये प्ले कर सकती हैं आप? वो बड़ा है आपकी। You want to see? Okay. ये लैपटॉप वहाँ पर इसका एडाप्टर निकाल दो। एडाप्टर निकाल दो। दोनों निकाल दो। शॉर्ट साइड है अपने पास। एक बार बता क्या जॉब पे जाए। हाँ आजू भी ना वीडियो हो रहा है। Namaskar and thank you once again for bringing me here. And I take this honor to share the power of sound. Now, sound के बारे में मैंने सुबह I'd shared a little bit about how sound is and how it works. लेकिन यहाँ पे हम उसके बारे में थोड़ा विस्तार में जानेंगे. I'm trying out my Hindi to my best, if there is, because I know all of you speak really good Hindi, but I'll try to do my best here. Like if the wood loses its frequency, the table which is made of that wood is going to start getting degenerated, and one day it's going to creating disharmony, and they start reverberating those vibrations which does not contribute to their good health. So this is a very, very important aspect, that this musical instrument called the human body needs to be tuned, fine-tuned on a regular basis. And the next aspect is when the body is held together, when we are fit, when we are healthy, when we are continuously resonating to the positive vibrations, we are considered to be healthy, and diseases cannot find its home in us. And of course, as human beings, we are here to live a happy and joyous life, not become a home to diseases. Now we come to the chakras, and very quickly I'm going to run through this particular slide, which is very important. You can capture this picture in your mind, which talks about how each of the energy portals is actually, when open, a developmental aspect for us, a progressive aspect for us, and when blocked leads to diseases. The most important aspect is when a person is fearful, he doesn't understand this, there's a possibility of living happily. The survival comes at stake. When the person is blocked with guilt, he's housing those particular emotions of guilt, that person is going to not understand the pleasures of life. The person who is blocked by shame will not understand the importance or the power he holds of this willpower. Again, when there is grief, the person is not able to understand the love aspect within him. Again, the throat chakra, when it is blocked by lies, they're not able to understand the concept of truth. And when the third eye chakra is blocked by the illusions, they will never know what the reality of the world is. They will never able to have the intuitive powers or understand the insights. And finally, when the third eye chakra is blocked, we automatically understand the crown chakra has no other pathway but to flow back the energy, whatever it gets, being blocked, and then the ego creates a cap of not being connected to the cosmic energies. Now, all these things put together
anything which you see, I see on my right side is going to give me diseases. And anything which is on the right side, which you can see, if I harbor them, I'm going to have a happy, joyous life. So Power of Sound looks at a mission of creating joyous living. Because as humans, we have come to earth to enjoy life, to create experiences which will be with us over various lifetimes. And not to come here to suffer and play the blame game. Here I'm going to share one testimony of a patient and how she has been able to, this doesn't play? Yeah, you just have to click the Full image. screen on the right side. On the image? Full screen, down, bottom, go down, go down, go down. No, you want full screen. Maybe somebody could help me. Okay, before I go to the videos, because I know they're going to ring the bell. But the video is playing here. It's playing? You can connect it there? No, I Can't. Okay. Just go to slide mode. Just go to slide mode. This one. Yeah. This one. This one. Okay. Okay. But this is not the video, but the video which I wanted to watch. Okay, these are the various hospitals where I had worked in. Now, okay, this is a testimonial which I wanted to share. Does it play here? Playing there. Oh, how's that? No, but what he says is much more important than what I say. Okay, now this girl had a condition. Okay, let us see if I have time later on. Okay, let me go to this particular. This happened to a stroke patient in Singapore, 86-year-old Mr. Kong. And his granddaughter gave me a call when I was in Mumbai that there is my grandfather who has been hospitalized and it's 28 days and we see no improvement. And the doctor said you can try out whatever you want to. So would you be able to come over to Singapore? It was a divine plan. I was to anyway go to Malaysia for the conducting a workshop and speaking at an international conference again. So I said, yes, it is possible. And when I went there, the patient, of course, was in the ICU and couldn't be moved. He didn't open his eyes. There was no movement at all. And when sound was administered to him, he was shifted to the physiotherapy room. As you can see, he was shifted to the physiotherapy room from the ICU. And day one, this treatment was given. Specific frequencies were administered. And during this process, there was no response. So again, I thought he has taken what he has to, and he was taken back to his bed. Next day, when I go there, I see his bed empty. And as we all know, I thought probably he is gone. And I was a little surprised when the nurse started laughing and she said, you see at the corner, there is a man who's speaking. That is Mr. Kong. So day two, Mr. Kong is fully revived. And you see the shine on his face. He told that I am not allowing you to go back to India unless and until I am sent back home. And when I spoke to the doctors, they said it is a protocol. After he coming back to his senses so quickly, we need to observe him for another 2 days and only then he will be sent back. Now, how did he revive? All the emotions which were pent up within him. One, he woke up. That was a miracle. Second, after waking up, all he blabbered was his emotions, which he had suppressed over various years. That included his wife, that included the doctors who were treating him there in the hospital, that included the nurses, I don't know what, because he was speaking in Cantonese or Mandarin, which I didn't understand. But yes, he spoke so much. And today, it's almost 4 years, Mr. Kong doesn't forget to give me a call to thank me whenever I'm in Singapore. He looks forward to be there because I'm there almost 4 times a year. And Mr. Kong is always there to welcome me there. And this was at St. Andrew's Mission Hospital, which is the oldest hospital in Singapore. Coming to the next day, the 14-year-old girl with muscular myositis. Doctors couldn't figure out exactly what's happening to her because she did not revive and she was in extreme pain. All her muscles had swelled up. There was so much of inflammation. And they had to literally give her steroids of very high doses on a regular basis. Her cycle was going on regular basis, which is pretty dangerous for a girl who is 40. And as you can see, this girl had to be stacked with rugs around her so that her muscles do not move and she doesn't cry out in pain. Day 2, miraculously, this girl stands up and goes for a walk in the hospital. And I was as a medical lady from India at the Singapore hospital as well as the Pentire hospital in KL. The father sends me a message after 2 days when I'm seated in the lounge just to leave for
India that this is the best birthday gift you could have ever given me. My daughter is back. When the daughter is back home, the father is so happy, and you can see they celebrated it in the bed here. And the girl, after coming home, she is in the bed at her home. And today, after almost 3 years, she has not missed school. She's doing very well with her basketball, leading a happy, wonderful life. So these are some of the things which I wanted to share. But yes, there were few more, many more, I would say. They are in the video forms. This is a lady from US whose daughter suddenly collapsed in the flight when they were moving from Los Angeles to Singapore. And she had to be rushed to the hospital immediately. And there they couldn't figure out what happened that she collapsed. After that, I guess you people will have to see on the YouTube channel, because there are so many such cases. And I would say I'm blessed to be that channel to have helped these people. I can never see that I have helped them. I'm blessed to be the channel to have been able to be of some service to save some lives. Not only with human beings, I have worked with 6,500 cows. There are 3 big gaushalas which have been handed over to me to take care of those cows. There is municipal hospitals with 500 dogs and 350 cats in Mumbai, which is getting this treatment and the healings on a regular basis by my students when I am not around. When I'm around, if I can find time, I'm there to meet them. But definitely all my students are doing a wonderful job. So there is a lot of cases, again in oncology, where the doctors at AIMS couldn't figure out what's going wrong. There was a 4th stage cancer patient of AML who got revived, who could go through the bone marrow transplant, and today he is a healthy, happy 38-year-old man after 7 years. So there are so many cases. Please read the book, Power of Sound, which has all those documented cases. And that is why I was given the award as Boon to Mankind. Now, this award is because it has to be given to a person, but the award goes to sound, because it is that which did the work. I was just the medium, I tell again. Now, on the outside, you will be seeing the QR code of the YouTube channel and the QR code of the website. Please go scan so that you receive the various recordings and you see that there is always a hope. As Dr. Khetawat had told me, hope for the hopeless. Yes, there is definitely hope. And if you want to know more, you can look at these numbers. Contact me directly, but remember one thing, where medicine ends, the universal energies comes at play. I wanted to give you all an experience of maybe 1 minute, if you people allow, with the sound, as an exception, if you can give. 1 minute. 1 minute is all I need. Okay, so I will request all of you to be seated with your spine erect. Keep your hands free. Relax. If you have bags on your legs, on your thighs, please place them down. This is the time for you. And only 1 minute, so 60 seconds. We always also lost 5 seconds right now with the instructions. Take a deep breath in. Gently breathe out. And we try to maintain silence and request nobody to talk here so that we can hear the power of sound. Jyotirgamaya Mrityormamamrutam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Visualize yourself opening up to the cosmic energies. Each and every cell in your body reverberating in the frequencies and vibrations of the cosmic energies. At this point of time, choose to unite yourself in this higher frequency and choose to let go all that which is in you, which no more serves you. Telling yourself, I love myself immensely. Each and every cell of my body is vibrating in the frequency of good health at the mind, body, and the spirit levels. I am happy. I am joyous. I
cosmic intelligence. Gently inhale and exhale. Feel your whole body drop down to the energies of gravitation. Feeling relaxed and your mind in a state of peace and bliss. At this point of time, you choose to let go all the unwanted and open yourself to receive all that you want to manifest in your life. Gently inhale and exhale as you visualize the happiest moments of your life. And relive those moments right now, right here. Allow it to settle in your heart chakra. And from your heart, radiate it to each and every cell of your body. This is you, the true you, happy, joyous, healthy, and loving. Gently inhale and exhale. Take a deep breath in and gently open your eyes. Question answer, you can have one or Can I have a question also 5 minutes? Yes? Okay, anybody any questions? Because I really ran through the whole process because the bell was in my head. Sujata ji, you have 3 minutes. You can go ahead with question answer. Oh, lovely. Yes, any questions, please? You can ask me. Yeah? Yes, we have seen the blockages of the chakra, and when we talk about Muladhara chakra, the fear is the main cause to block. How to remove that? Very good question, yes. See, understanding that something is blocked and bringing your awareness to it. The next step is accepting. Many a times we are living in a denial mode. We know there is a fear, we do not accept that fear. Right? Because it's the conditioning of the society, of the environment, of the family, whatever. But yes, we need to understand that there are 3 A's we all have to follow. Now I would request all of you to pay attention. The 3 A's are very important. That is awareness, acceptance, and action. So if you are aware, how do you become aware? Meditation, going into silence. That is when you become aware. Accepted, yes, I am fearful. It's no harm in understanding that yes, you're fearful. Third is action. The action, you have various ways of opening up your or unblocking your root chakra. Now, if I have to talk with sound, there are specific bowls which are used only for the root chakra. So when those frequencies are in use, the person starts giving very violent jerks. Because all this suppressed emotions causes these fear, guilt, shame, anger, all these are suppressed emotions. So when they come out, it becomes like a tsunami. It bursts out, right? So that thing has to come out. And when we use sound, it is very simple. I would say sound, it was very complicated. When I was studying this, it took almost like 2 decades to understand this particular concept. But when the protocols were made, I have very strict protocols which are being made. And every student follows that. So if you want to understand how it works, I would say the frequency which is for the root chakra has to be in use, and then you will be able to see that. But yes, you are already in the second stage of acceptance, only action. So you can choose. Right? So any other question? 3 minutes or more, the question is better for me. Any other questions? Okay, quickly, do you want me to give you the frequencies of all the chakras? Yeah. If you work on the sound of the organs, yes, every organ has a frequency, a movement, then there is a sound which cannot be heard by our ears. Right. But if you can know the sound of different organs, and if you can improve the frequency of that particular organ, which is not in this harmony, I think you can improve the functioning of that organ. Yes. So
Now for organs. What is that particular frequency of a diseased organ, if I ask? Now, all the organs, they will be having their own frequencies. And these frequencies, we can only say they are the parameters to understand. It could be place finance. How to measure those frequencies? That is the big story, and that is where the research is coming in. That is the biggest story. The day you will be able to measure the frequency of the organs, I think that will be the day of declaring 100% cure. Cure, yeah. Right now we are getting 100% cure, but again, if we have to talk from frequency point of view, Do you have any experience of how chakras moving? Yes, of course. In which direction? Yes, actually, I will say people put it as directions. According to my experience, chakras are always vibrating like this. People put it as clockwise, anti-clockwise. This is my experience I'm talking about when I was when I got my Kundalini. Second step is moving. Yes, second stage is moving, but moving with very high frequency, where you can't hold yourself. Now, one thing is very important for us to understand, that we as humans, when we are in a physical body, physical form, we should focus more on the vibrations, because movement will automatically come when it is in the right form, when it is in the right frequency. But first we have to look at vibrations, because once there is vibrations, when vibrations are accelerated, we get movement. तो पहले वाइब्रेट तो होने दो, इतने ब्लॉक्ड है वो तो वाइब्रेट भी नहीं हो रहे. So we have to focus on that, and after it starts vibrating, according to me, I always tell, let us take baby steps first. Because when we are looking at a bigger version, we become over ambitious, and then we say somewhere we are not able to reach our goals. Of course, the final goal is it should be moving in the directions. All those are there, but right now, because even the yogis, if we look at them when they are doing the TM, there is a very big concept of understanding vibration. What is the vibrations we are vibrating at? We do not check at what is the movement of my chakra that I am moving at. I hope I'm making sense there, because I'm taking it as a baby step right now. So I guess there is no time for me to share the frequencies of the chakras. Already. Yeah, so maybe some other time I will definitely share it. And you can read the book. Yes, you can read the book Power of Sound. You will find everything there. So even if I'm not around, let me say, right? Books are the legacy which lives on beyond us. So even when we are not around in the physical form, the books will keep teaching. So this book is available, very much available. You can read that. And wishing you all a very happy, high vibration life, full of health and happiness. Thank you and namaskar. You can have the QR code from out, and you can see and get the recording which was used in quarantine center, because of which I was given the COVID Warrior Award. Thousands of people got cured in the quarantine centers only by listening to the recording. So that is also. थैंक यू सुजाता मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी. अब मैं हमारे दिल्ली से आए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर श्री एस.सी. चोपड़ा साहब को आमंत्रित करती हूँ. हीलिंग पावर ऑफ एक्यूप्रेशर. मिलना चाहिए आपको इसके सॉरी थैंक यू. लैपटॉप चाहिए रहेगा. ये लैपटॉप चाहिए रहेगा. ये यहाँ से निकालना पड़ेगा सर. हाँ. एक बाइक ऊपर आदरणीय डॉक्टर खेतावत सर, आदरणीय ऑनरेबल ऑल द डेलीगेट्स एंड ऑल मेंबर्स. अभी हमने 3-4 नंबर को देखा सुना, जिसमें सिर्फ एनर्जी को, बॉडी की एनर्जी को बढ़ाने का
अलग अलग तरीके बताए और उसका निदान भी बताया। सबसे पहले तो आपने सुना, आपने साउंड के बारे में अभी सुना ही है, साउंड में कैसे वाइब्रेशन पैदा होते हैं, कैसे ब्रेन में एनर्जी जाती है, ये सुना। 3 फिंगर टेक्निक के ऊपर डिटेल में सुना हमने कि 3 फिंगर टेक्निक को कैसे इफेक्ट किया जा सकता है, कैसे बॉडी में इफेक्ट करती है, कैसे ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन पैदा करके पॉजिटिविटी क्रिएट करके नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है और दुनिया भर की प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। उसके बाद एक और हमने सुना एंडोक्राइन ग्लैंड को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, ये भी सुना। फिर तीनों का एम और जितनी थेरेपीज है सबका एम एक ही है कि हमने अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को बढ़ाना है। एनर्जी जब बढ़ेगी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी दूर होगी और कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच एंडोक्राइन ग्लैंड वो बराबर बना रहेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं 2-4 लाइनें भी बढ़िया लिखी हैं, इसके बारे में बताऊंगा। Good health depends on the balanced flow of superpower. Superpower is our life energy. In our body, this force depends on health of the body, mind and soul. Until any imbalance is corrected, good health will not be possible. The root cause of all the diseases in terms of acupuncture is disorder of vibration. Vibration के बारे में अभी हमने सुना या डिटेल में कैसे इन्होंने बताया कि vibration is positive energy. It creates kinetic energy. जब तक काइनेटिक है, वाइब्रेशन हो रहे हैं तो एनर्जी ब्लड विल रीच देयर, अदरवाइज ब्लड विल नॉट रीच। ये अभी हमने सुना ही है, तो बात बिल्कुल सही बताया इन्होंने किया। एनर्जी सेल इन द बॉडी वाइब्रेट्स एट ए स्पेसिफिक रेट एंड वाइब्रेशन ऑफ कोर्स इज एनर्जी। वाइब्रेशन इटसेल्फ इज एनर्जी। जब तक वाइब्रेशन नहीं है तो ब्लड पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि उस चीज में तो ब्लड जाएगा नहीं। तो वी नीड टू वाइब्रेट ईच सेल ऑफ द बॉडी। वो कैसे करना है वो एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छे ढंग से हम लोग कर देते हैं। द वाइब्रेशंस आउटसाइड द नर्वस रेंज आर सिनोनिमस विद द डिजीज। द प्रेशर पॉइंट्स एड द restoration of correct and harmonious vibration and in this way restores health, means we become healthy again. अगर हमारा वाइब्रेशन दोबारा वापस आ जाता है तो हम अपनी हेल्थ दोबारा वापस आ जाएगी। Our body itself has sufficient energy to heal itself, but somehow something in the body cells behave abnormal and become imbalanced. The desired energy released by mitochondrion, ये एक सेल के अंदर के वाइब्रेशन जो सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस में तो अपने न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियस के बाहर माइटोचॉन्ड्रियन होता है, लेकिन अंदर जो होते हैं 23 पेयर्स होते हैं उसके। तो उससे एनर्जी वो जब तक उसको एनर्जी मिलेगी माइटोचॉन्ड्रियन को तब तक बॉडी के पूरे फंक्शन बने रहेंगे। इसी से डिजीज काफी कंट्रोल हो जाती है। स्पेशली अपने जो हेल्दी सिस्टम है वो काफी कंट्रोल में रहता है और बॉडी के सिस्टम में और जगह बढ़ाने के लिए ब्लड बहुत जरूरी है। अच्छी क्वालिटी का ब्लड चाहिए हमें, वो पावर इसी से मिलती है। इसको एडिसोनिक ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एज ए सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ईच सेल टू डाउन इट्स वाइब्रेशन, बॉडी रेजिस्टेंस पावर एंड द सेल इम्यून सिस्टम बिकम्स वेरी वीक, thereby producing a state of illness. Proper circulation of blood to even the remotest part of the body, each cell is essential to keep it free from any congestion and stagnation of the way. So to remove any imbalance in the proper flow of vital energy to body, each cell, acupressure therapy helps us a lot to remove any disorder and several theories. और इसको करने के लिए बहुत सारे थ्योरीज हैं आज की डेट में, और थ्योरीज है सबका थ्योरीज है उसके लॉ भी है। ये जिंक एंड यांग लॉ ये चाइनीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिंक लॉ, थ्योरी ऑफ 5 एलिमेंट, मदर लॉ, ये 5 लॉज हैं जिसके ऊपर हमारा एक्यूप्रेशर पूरी तरह से डिपेंड करता है। अदर थेरेपीज सच एज जोन थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी, पेयर्ड ऑर्गन और कई थेरेपीज हैं जिनका सबका एम है कि बॉडी के अंदर वाइब्रेशन को पैदा करना है। कैसे पैदा करना है वो हम इससे थेरेपी द्वारा ही कर सकते हैं। ये इसी को थोड़ी हमारे पुराने जमाने में और एंशिएंट स्ट्रक्चर वो भी पुराने किताबों में सब ये लिखा हुआ है कि वो एंशिएंट टाइम में अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर द पीपल पैटर्न देमसेल्व्स अपॉन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी। वो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी वो सब जानते थे फोर्सेस एंड लिव्ड इन हार्मनी एंड मेंशनड harmony, temperature in eating and drinking, regular hours for sleeping and rising, doing yoga, pranayama and the life extending was extended for more than 100 years. The literature also mentioned that the blood is under the control of
heart. The heart is in accord with the pulse and which regulates all the blood, and blood currents flows in a continuous circle and never stops. They also found that in the book that how adverse climate conditions and harmful emotions such as anger, hatred, jealousy, etc., fear, worry and anxiety, which produces disorder. The people also learned how the vital forces are formed and they become unbalanced and how to make them well balanced to keep us healthy by natural therapies. The superpower, the force of nature is guided by the superpower. That is the unknowable, which becomes expressed in the formation of dual forces yin and yang. It is this force that brings about the ever-recurring changes, such as day and night, just opposite. One is positive, the other is negative. So, until we can well balance, understand this essential relationship and man-cosmos, we can begin to comprehend the basic concepts of acupressure, the superpower enters with. अब तीनों लॉस हैं, पांचों लॉस के ऊपर ही एक्यूप्रेशर डिपेंड करता है. सबसे पहला लॉ जिन एंड जॉन्ग है. जिन एंड जॉन्ग पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे कॉस्मोस में, पूरे यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी देयर. इट इज ऑल डार्क एंड कोल्ड एंड डार्क, बट दे कीप इन बैलेंस. यही बड़ी साज है हमारे. पॉजिटिव एनर्जी वहां से मिलती है. तो द मेन लॉ ऑफ यूनिवर्स इज टू क्रिएशन टेक प्लेस ऑलवेज इन डार्क. डार्क में सूर्य निकलता है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का बैलेंस बना रहता है. According to this yin yang theory, the universe formless, it is formless. Matter was originally in a state of chaos, without force. It was complete disorder and utter confusion from its substance. It then dissolved into the negative and positive forces due such they were present, and order was produced out of some superpower. It is said that the balance exists in the universe in the form of state. Normal balance took place because negative and positive forces relate to each other. यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक. उसके बाद भी हमारे पुराने जमाने में भी एनर्जी को कैसे बैलेंस करते थे हमारे जितने स्कॉलर थे, वो सब एनर्जी को, बीमारियां तो तभी रहती थी, अभी है तभी होती थी, लेकिन उस समय में जो स्कॉलर्स हमारे थे, दे यूज्ड टू रिसर्च एवरीथिंग हाउ टू कीप योर बॉडी हेल्दी. उनमें अपने योगा में पतंजलि हुए हैं, वो उन्होंने अष्टांग योगा के बारे में बहुत लिखा. अष्टांग योगा तो पहले 4 जो अपने सेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चारों सेक्शन इंपॉर्टेंट है. क्या हम क्या हैं, हमारे अंदर हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए. अगर ये हो जाए तो हमारी आदि तो लाइफ जैसे ठीक हो जाएगी. उसके बाद हमारा योगा आता है, योगा के बाद प्राणायाम सीखते हैं. लेकिन जब तक हम अपने आप को इंटरनली बैलेंस नहीं कर पाते तो इंटरनल सिस्टम बैलेंस नहीं होता. उसके लिए उन्होंने जंग हो जाए अहिंसा, हमें अहिंसिक होना चाहिए. मगर काइंडनेस हमारे अंदर सबसे पहले होनी चाहिए. अगर काइंडनेस रहेगी तो हम अपने आप को वैसे ही एनर्जी बढ़ेगी. उसके बाद कहते हैं कि वो सत्य, हमेशा सच बोले, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करें. ये जो चीजें हमारे अंदर गुण आएंगे, इन गुणों से देखते हुए आप पाएंगे कि हमारे अंदर एनर्जी का बैलेंस बना जा रहा है. बस ये बड़ी और हमारे अंदर इंटरनल की पावर बनती है. और इसके बाद एक और हमें लालच भी नहीं करना है. हमारे ऊपर लालच नहीं होना चाहिए, कोई किसी चीज पर लालच नहीं करना चाहिए. और नियम करते हैं वो एक चीज और बोली हमारे लिए, अगर हम हमारे अंदर प्योरिटी है, सत्य है, स्वस्थ रहेंगे हम. उसके बाद वो कहते हैं संतोष होना चाहिए. प्योरिटी विद इन संतोष, सच संतोष तब हमें को तब भी करना चाहिए जब तक हमारे अंदर तप है, हमारे अंदर जीत पैदा हो जाए, तब हम कंट्रोल कर पाते हैं. अपने आप को तो नहीं कर पाते. किसी चीज को अचीव करना है तो मन में तब करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. तो ये जो नियम बने हुए हैं, सत्य नियम, तो उस पुराने जमाने में इन्हें को लेकर के हम जब लोगों को फिट करते थे तो बहुत लाभ होता था. तब जाके आसना आता है और प्राणायाम. इन चीजों को फॉलो करने के लिए बड़े नियम को फॉलो करना पड़ता है.
अच्छा, इसके बाद एक और हमारे बहुत बड़े इश्यू हुए हैं, सुश्रुता। सुश्रुता ये क्या किया है इन्होंने, एक्यूप्रेशर तो अब नाम आया, लेकिन पहले मर्मा पॉइंट करके इन्होंने अंडर 7 डिग्री मर्मा पॉइंट कैलकुलेट किया, पूरी बॉडी में लोकेशन इसकी देखी जाती है। तो दे वर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक एक पॉइंट का अगर आज की डेट में हम मेरिडियन को देखें तो मेरिडियन लाइन भी ऑलमोस्ट वहीं से गुजरती है जो पहले इन मर्मात पॉइंट पे गुजरती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मानी है, लेकिन उसके बाद वो उतना चला नहीं, लेकिन उसके बाद एक इतनी रिसर्च वर्क हुआ, रिसर्च के बाद एक रिसर्च होता गया, तब जगह के पूरा डेवलपमेंट हुआ, पूरे लॉज बने, और उसके बाद देखे एक और शास्त्र ये आपकी जापान में है, ऐसी विविधता है जिसमें नॉन इन्वेजन थेरेपी है शास्त्र। उसका काम ये है कि अपने बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं, टिश्यू के साथ साथ वो चलती है, पॉइंट माने जाते हैं। सुयोग थेरेपी में बहुत एक्सपर्ट है यहाँ पर, वो तो सुयोग थेरेपी से काफी ठीक लोगों को कर लेते हैं। मॉक्सीबक्शन है, ये भी हीट द्वारा भी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बॉडी के हमारे सिस्टम कितने हैं, बॉडी का सिस्टम को लेके हमको चलना है कि बॉडी के अंदर सिस्टम जब तक ये नहीं समझेगी कि कौन सा ऑर्गन कैसे काम करता है, तो इन एन एडल्ट बॉडी हमें देयर आर 37 to 53 trillion cells depending on the body structure. Several cells together form a tissue, and several tissue form an organ, and several organs form a body system. 11 systems together form our body, and all the systems work in very coordinated way to run the body functions. There are 11 systems which include integumentary system, skeletal system, muscular system, lymphatic system, respiratory system, digestive system, nervous system, endocrine system, cardiovascular system, urinary system, and reproductive system. ये सारे सिस्टम बॉडी के एक एक फंक्शन को एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, तो हमारी बॉडी का फंक्शन नॉर्मल होता है। अगर ये एक ही एबनॉर्मल हुआ तो पूरी बॉडी के फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएंगे। देन वी फॉल इन। अच्छा, 2 मिनट कह रहे हैं हमारा, तो मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई हमारे पास पेशेंट आता है कि आपके जॉइंट में पेन है, और जॉइंट के पेन तो क्यों होती है, कैसे होती है, इसमें सब डाइजेस्टिव सिस्टम ही सारे इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इंटरैक्ट होते हैं, तीनों का डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ये डाइजेस्ट नहीं होगा तो यूरिक एसिड फॉर्म होगा, और यूरिक एसिड जो है ये बॉडी के अंदर चला जाता है, वो ब्लड के साथ मिक्स होकर के हर जॉइंट को कवर कर लेता है। जॉइंट को कवर करते ही वहाँ ब्लड लूज होगा और स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन इसका अगर मेन रीजन देखें कि प्रोटीन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों खराब हुआ, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों गड़बड़ कर रहा है, उसकी रीजन हम बैक में देखें तो थायराइड ग्लैंड थायरिक्सिन T4 है, एक थायरिक्सिन बनती है, उससे वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को नॉर्मल करते हैं, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम ठीक रहता है। लेकिन उसका कारण हाइपोथायराइडिज्म थायराइड में हो सकता है, लेकिन T4 जो है ये इसको कौन निकालने वाला है, हाउ इट इज प्रोड्यूस, इट इज प्रोड्यूस बाय TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो उसको पाया जाता है। TSH इज प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पांसिबल फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। नॉट ओनली दैट, इट इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी। तो हम जब ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का तो सबसे पहले यही पिट्यूटरी ग्लैंड को लेते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को लेते हैं। लेकिन आजकल तो हम इनकी एक नई टेक्निक जो होगी डॉक्टर चेतावत साहब ने बताइए, इससे भी इमोशनल लेवल जो है काफी नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, टेक्निक 5 मिनट के अंदर ही अगर हम बिठाते हैं पेशेंट को तो उससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वो मिलते हैं प्लस पिट्यूटरी ग्लैंड पॉइंट लगाते हैं, तो एक बार पिट्यूटरी ग्लैंड और ये नॉर्मल हो जाता है तो उसको पेशेंट भी एग्री करता है कि ये इज फीलिंग बेटर एंड इज रेडी फॉर द ट्रीटमेंट। अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे हमें पेशेंट अपने को ठीक सकता है। तो ये तो मिस्टर चोपड़ा, आपके पास 5 मिनट है क्वेश्चन आंसर के लिए। आप उसमें अगर अपना बोलना चाहते हैं तो बोलिए, क्वेश्चन आंसर शॉर्ट कर दीजिए। लास्ट पेज राधा लेकिन इसमें मैंने एक ड्राइंग दी है
इसमें क्या है, हमारे 15-20 पॉइंट मैंने दिखाए हैं, और हम ये 15-20 पॉइंट भी हम डेली प्रेस कर लेते हैं तो इसमें बॉडी के अंदर हमारा सर्कुलेशन बना रहेगा, और जो सर्कुलेशन बनाएगा तो अपने बॉडी के अंदर हर ऑर्गन के अंदर वाइब्रेशन पैदा होगा, और वाइब्रेशन अगर पैदा हो जाएंगे तो हम अपने आप को सही तो ये नोट करना चाहें तो हर एक नोट। Anybody questions, please? Any questions? No, thank you. आज हमारे कुछ डेलीगेट्स हैं जो आज ही जा रहे हैं, और आज जाने से हमें इस बात का बुरा तो लगेगा कि वो आज ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो सम्मान देना है वो हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड मेडल में डॉक्टर नव्या चोपड़ा जो अभी हैमिल्टन में है, तो उनके पिताजी आए हुए, मैं उनको इन्वाइट करना चाहती हूँ। मिस्टर संदीप चोपड़ा, आप स्टेज पर पधारें, और उसके लिए मैं हमारे मास्टर में है वो उस मैम को आमंत्रित करती हूँ। श्वेता, इस मैम को लेके आइए ऊपर, जो अवार्ड देना है। डॉक्टर खेतावत सर, एपी सिंह जी साहब, पंडित जी साहब, आप पधारिए प्लीज। भाई साहब आप थोड़ा क्या आपको मिलेगा अभी? बड़ी टाइम अच्छा लगेगा। तो जाने का है ना, फिर वो इसलिए मतलब मैं डॉक्टर मेरे मास्टर मूस की हार्दिक इच्छा है कि जिनको भी अवार्ड दूं मैं अपनी यूनिवर्सिटी की ड्रेस में दूं, आशीर्वाद के साथ। फ्रंट में आ जाइए। ये राइट ये आपका वही खड़ा हो गया, मैं चालू कर दिया। ये वहाँ पे खड़े होकर वो बारकोड में सब लगा हुआ है, इसलिए माइक लगा पे रखा। टाइम का माइक आपको क्या हुआ? सब लगा हुआ वो ऊपर जाता अपने तो मालूम नहीं, अपन गए नहीं, फिर 2-3 दिनों को ऊपर नहीं चढ़ा। मिस्टर संदीप चोपड़ा, प्लीज आप स्टेज पे आइए, और नव्या चोपड़ा चोपड़ा जी का अवार्ड गोल्ड मेडल। भाई साहब आप भी आगे आइए। एडमिरल साहब आप भी आगे आइए प्लीज। हाँ बैठे प्लीज यहाँ पे। मतलब खड़े होकर के लेना है, सब खड़े हो जाएंगे मैम के साथ।
तो सब आप ही खड़े रहे माइक ऑफ एप्रिशिएशन में मिस्टर संदीप चोपड़ा का भी अवार्ड है, वो भी ले आएंगे प्लीज। अब मैं मिसेस अविनाश सिंह को बुलाना चाहूंगी गोल्ड मेडल के लिए। मिसेस अविनाश सिंह आप हमारे जनरल साहब की वाइफ हैं, कह सकते हैं। अनुराधा चौहान, डॉक्टर अनुराधा चौहान। डॉक्टर अविनाश सिंह, बधाई हो। थैंक यू। डायमंड के लिए हमारे डॉक्टर अजय सिंह चौहान, प्लीज तालियां बजते रहना चाहिए, इससे जो हमारे हमारी उनका उत्साहवर्धन भी होता है, ताकि वो आगे बहुत ज्यादा सेवा कर सके। आप रिटायर्ड डीएसपी साहब हैं, आपने रिटायरमेंट के बाद इस फील्ड को चुना और अब आप लोगों की सेवा इस तरह से कर रहे हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौहान, डॉक्टर खिताब सर के 9 रत्नों में एक हमारे अजय सिंह चौहान साहब हैं, डायमंड हमारे। डॉक्टर सुजाता सिंह मैम, आपको भारतीय रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर सुजाता सिंह जी मैम, मैम कैमरे में आएंगे। सर आप लोग थोड़ा इधर आइए तो कैमरे में आएंगे। इधर इधर और बैक इधर मत करिए, थोड़ा इधर। आउट ऑफ फोकस हो गया सर। ओके, सुजाता मैम की बुक का विमोचन किया जा रहा है। बहुत ज्ञानवर्धक बुक है ये, इसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति अपना जीवन बदल सकता है। बहुत बहुत बधाई हो मैम।
I would like to share with you the great work she did today, right here during this Congress, of healing a doggy in our college building in Sanjan who had lost all 7 of her puppies. First 5 were killed by another female dog, and then she lost the last 2 due to her sadness. And Dr. Sujata gave mantra healing over the video, WhatsApp video, to the doggy to relieve her pain. It is a wonderful thing. Everybody asks everyone to stand up and applaud her, for she is really the miracle woman of India, and I'm so proud of her. ये साउंड थेरेपी पर साउंड बढ़ना चाहिए। हम लोग सभी सुजाता जी की 100 वर्ष की उम्र के लिए दुआ करते हैं। आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो अभी आपकी पीठ आ रही है उसमें, प्लीज थोड़ा सा इधर। मैम सुजाता मैम, सर आप लोग प्लीज थोड़ा सा इधर आ जाइए। ठीक है, आ रहा है? हाँ, अभी फाइन है। हाँ, ठीक है। मैडम साहब कहाँ गए? देखिए, जो संगीत सुजाता जी ने शुरू किया है, हमें पूरा विश्वास है कि जो इन्होंने साउंड थेरेपी का हमें जीवित उदाहरण दिया, आप 3 बार लंबी गहरी सांस लेके प्रतिदिन उसको सुनने का प्रयास करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि थोड़े दिन बाद आपको वो अपने आप सुनाई देने लगे, और हर दिन कोशिश करें अपने कोई ना कोई ऑर्गन पे उसका इफेक्ट को ले लें। तो हम ईश्वर से दुआ करते हैं सुजाता पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में करे और भारत विश्व गुरु बने। इसमें सुजाता जी का योगदान महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। Thank you to all of you, and special thanks to Dr. Khetawat, who told me that you have to come. भले कुछ भी हो आपके प्रोग्राम, आपको इधर पहुंचना ही है. And so I'm here. I wouldn't have been here if it was not for he pressurizing me that I have to be here. And through past life regression, somewhere is seen the connect between us. So I'm sure that आप सबके साथ कुछ बहुत गहरा रिश्ता है, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ. Thank you so much, and thanks to this dear auntie. Now she's become my auntie. Of course, 2017 से हम एक दूसरे को जानते हैं. मिलना कभी हुआ नहीं बीच में. And of course, being connected and not being connected वो सबसे दुख भरी बात होती है. But thanks to you that we both are here today. So thanks to all of you and wishing you all the very best. May Nath Ananda be in you always. Thank you. डॉक्टर केदार सर ने जैसे कहा कि सुजाता मैम पूरे विश्व में भारत का नाम करें, उसके लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी सर कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। This book is for you. I will sign it. I'll sign it. अब मैं आइकॉन अवार्ड के लिए डॉक्टर एस.सी. चोपड़ा साहब को आमंत्रित करती हूँ वे पधारें और अपना अवार्ड ग्रहण करें। डॉक्टर एस.सी. चोपड़ा साहब। मैम अभी 2 और बाकी हैं। मैडम, डॉक्टर चोपड़ा साहब ने पूरे विश्व में इंदौर शहर का ही नहीं पूरे भारत का नाम ऊंचा किया है। आपने लंदन में और एक्यूप्रेशर शिकागो में जो कैंप्स किए हैं उससे हमारी इंदौर इंस्टीट्यूट का नाम रोशन हुआ है। आपको ये हाईएस्ट अवार्ड आइकॉन अवार्ड देते हुए हमें गर्व हो रहा है। आपने मेजर जनरल एमपी सिंह साहब को आमंत्रित करती हूँ कि वे पधारें और अपना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त सर आप भी वहाँ चले गए।
इधर आइए ना प्लीज। The web camera range is only up to here. On the net. भाई तो आप सामने आइए। It has been shown in all the countries through web communication. अब दिख रहा है? हाँ, अब आ रहा है वीडियो। We should have this. मेजर जनरल एपी सिंह साहब को Our next recipient. Oh, general. Why? चलिए भाई ताली बजाइए। ऐसा है कारगिल में दुश्मनों का खात्मा करने वाला अब हमारे साथ रोगों को दूर करने में लगा। Let's all give a thunder applause to our general that he has joined the team for life and left the team for death. जैनम सिंह जी, एक्सेलेंस अवार्ड फॉर जैनम सिंह जी। Sujata will be known by his name one day. This is my blessings to him. जैनम की एक बात कहना चाहूंगी सर। हाँ। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। अभी जैनम को बहुत ऊंचाई पर जाना है। बहुत बहुत बधाई हम सबकी ओर से, बहुत बहुत बधाई। Wow. This side, okay. Correct here? Yes, all set. Congratulations once again. Congratulations, beta. No, thanks, ma'am. Thank you, Dr. Congratulations for everything that you have done for bringing this about. इसका है पॉइंट है 6 आगे मैं अंदर की पानी मिलाएंगे ना वहाँ रखा बोर्ड नहीं क्लियर कर देते हैं 15 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक है चाय के लिए। प्लीज फुर्ती से जाइए, चाय पीजिए और तेजी से आइए, क्योंकि उसके बाद फ्लोरिडा से गुरु अमृत जी का सीधा लाइव प्रसारण होगा। तो तेजी से आप लोग तो जाइएगा प्लीज, और जितनी जल्दी आएंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद लेट होगा रीडर बहुत ठंडा होगा। हाँ मैम बच्चे अपने ध्यान रखने चल रहा है, चालू हो गया, ब्रेक कर दिया।
शीट मुझे दे दो, मुझे दे दो। टोटल मिला के आठ बजे चार होना, 8 And that was a natural one, I think so. ये तो यही natural आ गया।
फोटो तो कोई भी खींच लेगी बट वो ना स्लो चल रहा है ये थोड़ा चल रहा है थोड़ा जल्दी हाँ ये आपका है चेयर पर मैडम मेरा किन दोनों के बाद उनसे दोनों बता देंगे थोड़ा अलग उसके बाद आपका करते हैं मूर्ति जी के बाद करवा देंगे 6:55 पे करवा देंगे सर अब अपने हाथ में रह ही नहीं गया 6:55 का 7:30 हो सकता है 6:55 पे करवा देना आगे पीछे करके मैंने सबसे लिंक भेज दी और सब लोग 6:50 पे ऑन करके देखेंगे यूट्यूब मैडम मैंने टाइम 6:50 लिख कर भेज दिया लिंक भेजेंगे बाद तो 6:50 पे सेट कर लेंगे दोनों साइड में अच्छा लगता है मैंने बोला इसलिए मैंने आपको बताया ये तो मैं नहीं बताती मैंने बोला है ना मेरे कल हाँ बोले
लीजिए मैडम। एक कॉल इस तरीके से कॉल बच्चे को बोलो ना जरा नहीं क्या हुआ भाभी साथ से जाके कुछ वो
चला के देखो ना डाउनलोड ही कर लूंगी नहीं बार लॉकआउट क्यों करना पड़ता है आपको? अरे उसमें मैसेज आपको प्रेजेंटेशन चल रही थी, मैसेजेस आ गए थे 10 मैसेज लगे थे नहीं उसका वो कर दो, बंद कर दिया, करने की जरूरत नहीं है, टैब बंद कर दिया ना हो जाता है। इन्होंने पूरी व्हाट्सएप पे कर दी, फिर व्हाट्सएप पे लाइव भी कर देना चाहिए। हमने अगर पकड़ देखते ले कौन गया? ये मेरे हिसाब से श्वेता दी लिखी है क्योंकि यहाँ पे श्वेता को बैठी थी और वो लोग लिख करो तो सबसे मेन काम यही रहता है इसका। बाद में तो स्टार्टिंग में 17 मिनट रीडर अगर आज क्या नाम है? कुरैशी नहीं है कोई। हाँ इसमें ऑडियो आउट करना है अपने को। ऑडियो आउट करना है राउंड दोनों कर लेंगे वो खाली है क्या
Good evening, everybody. Chairpersons, मेरी छोटी बहन अनीता जी और above all, my profound regards to Shetawat sir, who is my mentor, Guruji and whatnot. आज मैं इस फील्ड में जो भी हूं वह सिर्फ खेतावत सर के कारण और नो डाउट अनीता जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरा आज का जो सब्जेक्ट है पावर ऑफ सबकॉन्शियस, उसमें भी स्पेशली हाउ टू हील इंजुरीज, burn injuries with the power of subconscious using hypnotherapy. I would like to go firstly to the facts because we have the time limit. ओके, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए एक पॉज लेता हूं। मूर्ति सब तैयार है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद राइट He's our family video. No, ma'am. Sorry, ma'am. What for? If somebody is speaking, we should respect the speaker. I don't know why they have been stopping. No, I don't know. That's why energies become negative energies become. He's our family member. Please. आप बता दें। He has to present before 6:30 because then we. The negative energies will be more. So the sensitivity of the instrument will be. So that is the reason. I'm really sorry to have stopped, Mr. So it was necessary. पिछला ने क्या Hello, good evening, my dear divine delegates. Now we have developed intimacy.
So I want to say my मन की बात. What is my मन की बात? 20 years of research work cannot be completed in 30 minutes. Therefore, I am transferring this work to my daughter and can abridge it to the minimum without any questions. One thing. Second thing, after this, energy will be falling down. You will all agree, as sun sets, the energy will also fall down. And in a medical field, you should know what is negative energy and positive energy. Without that, you cannot understand the subject. That I am talking. I want to speak about Wakatula Mahasaya, the universal energy. What is that? I am also talking that. Third thing, I will be asking here, because earlier the energy of this hall was 30 positive energy. We have used our magic bands raised to 100. If you want, we can show. That is also loss of time. So I invite my daughter and I will be a spectator. I will learn and interfere in that work. Okay? She is equally capable. She has done more than 7,000 talks so far in throughout the world. नमस्ते. तो मैं हिंदी में बात करूंगी और अंग्रेजी में भी. कोशिश करती हूँ दोनों में बैलेंस करने की. और हमने गुरुदेव का इतना बड़ा अच्छा योग निद्रा किया है, तो काफी निद्रावस्था में हम चले गए हैं, काफी हम रिलैक्स हो गए हैं. एंड द टाइम ऑल्सो इज ऑलमोस्ट 6 o'clock एंड आई नो आप लोग सब बहुत टायर्ड भी हैं. तो मैं थियोरी से ज्यादा प्रैक्टिकल्स करने की कोशिश करूंगी ताकि आप थोड़ा सा लाइवली बने रहें, और साथ साथ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश पूरी तरह से करूंगी, क्योंकि सब लोगों ने चक्रों की बात की है, सब लोगों ने एनर्जी की बात की है, लेकिन ये ऑरा होती क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है, और why does it affect us and why energy healing is coming off late. Off late energy healers क्यों बढ़ते जा रहे हैं? Okay, this is the reason. क्यों, वो मैं आपको क्लियरली एक एक स्लाइड बाद में लूंगी. Just change. Dr. Maniam Murthy has left his nuclear work, what he was doing, because बचपन से इनको था कि साइंटिस्ट बनने से कुछ इन्वेंशन करने की बहुत बड़ी वो सोच थी उनकी कि साइंटिस्ट बनूंगा तो कुछ इन्वेंट जरूर करूंगा. सो इन्होंने 18 years काम करके he has taken voluntary retirement and he has come up with beautiful energy instruments जो एनर्जी को नापते हैं. हम लेते हैं, एक छोटी सी बच्ची है यहाँ पे, इनको केस स्टडी की तरह आपके सामने मैं दिखा सकती हूँ कि एनर्जी के रूप में क्या क्या कर सकता है ये स्कैनर, और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी. बेटा माइक पकड़. रचिता है हमारे साथ. अपनी उम्र क्या है? 20. रचिता इज 22 years old. आई एम चेकिंग हर एनर्जी, और मैं आपको बताऊंगी कि इतनी छोटी बच्ची 22 years की है, इसको प्रॉब्लम है तो क्या है, प्रॉब्लम नहीं है तो क्या है, इसके चक्रास कैसे हैं, इसकी मेरिडियंस कैसे हैं. हम जो एनर्जी हीलर्स हैं, हम यही देखना चाहते हैं ना, इनके 5 इंद्रियां बैलेंस है कि नहीं, ज्ञान इंद्रियां, दैट इज, और इनकी जो 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत बैलेंस है कि नहीं, ये सब हमारा स्कैनर इजीली बताएगा. और आप में से कोई हीलिंग भी दे रहे हैं तो कितना हीलिंग इस पे असर कर रहा है वो भी हमारी स्कैनर आपको दिखाएगा. एंड फॉर दैट ऐसा नहीं है कि हमें सैंपल्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके सलाइवा सैंपल हम लेंगे, मतलब इनकी डीएनए लेंगे, उनका डीएनए उन्हीं के बारे में बताएगा. ऐसा नहीं है कि हम बिना सैंपल्स का कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सर्टेन फ्रीक्वेंसीज है सैंपल्स में.
वो फ्रीक्वेंसीज आपको क्लियरली बता देंगे कि इस बच्ची में अगर प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो वेरी गुड, क्योंकि एक 22 इयर्स की बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी ऑरा या बायोमैग्नेटिज्म फुल स्विंग में होती है ना, तेजस्वी लगते हैं बच्चे। हम अपनी शक्लों को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा किसकी बायो मैग्नेटिज्म कितनी स्ट्रांग है। जिसको तेजस्वी कहा जाता है उसकी बायोमैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रांग है, मतलब आपको वो तेजस्वी जो तेज है वो दिखाई देती है उनकी बॉडीज में। तो हम थियोरी थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले हम प्रैक्टिकल्स करेंगे और पता करेंगे कि इस बच्ची के साथ क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। Without touching the patient. Without touching the patient, क्योंकि हम गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में डेमोन्स्ट्रेशन दिए थे, रैंडम पेशेंट्स हमें दिया गया था और हमने बिना पूछे पेशेंट को बताया कि उसका प्रॉब्लम क्या है। तो डॉक्टर्स वर अमेज्ड, क्योंकि किसी ने किडनी प्रॉब्लम का पेशेंट को दे दिया, किसी ने कार्डियो वाला को दे दिया, और किसी ने कार्डियो वाले को पता नहीं है कि पेशेंट को कहाँ और प्रॉब्लम है, वो तो सिर्फ हार्ट के बारे में जानता है। पर जब हमने बताया इसको यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, तो पेशेंट ने एग्री किया, हाँ जी मुझे यहाँ पेन है, यहाँ मुझे प्रॉब्लम है। तो स्कैनर बहुत अच्छे से आपको बताएगा। तो व्हाटएवर आई एम चेकिंग, मैं आपको बताऊंगी कि मैं चेक क्या कर रही हूँ, और उसका थ्योरी मैं आपको बाद में समझाऊंगी ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे। Okay, so she has IR radiation in her body. Okay, so let us check where the IR radiation is. It is showing her waist. इस एरिया में इस बच्ची को IR रेडिएशन है। ओके, We are checking for negative UV radiation. ये डॉक्टर मन्यमूर्ति जी की इन्वेंशन है, ये डिस्कवरी है, बहुत बड़ी डिस्कवरी है, जिससे हम काफी लोगों को रिलीफ दिए हैं, सिर्फ ये दोनों नेगेटिव एनर्जीज को पता करके। This is D energy. I'll explain to you what it is. Okay, इतना से इतने जगह में इस बच्ची को डी एनर्जी है, मीन्स द ऑरा हियर हैज टर्न इनटू रेड कलर, जो डेंजरस है। दैट समथिंग फ्रॉम हियर टू हियर इस बच्ची के अंदर आइदर एब्डोमेन में या बैक में वो एनर्जी है, उसके वजह से इसको शायद कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अभी मैंने शायद वर्ड यूज किया है। That's geopathic stress. There is geopathic stress in her body. Let's see what is the aura of geopathic stress. Just around 1.2 meters. Okay, अगर ये 3 होता ना, कोई ऑर्गन फेल हो जाएगी। ऐसे किसी के बॉडी में आपको मिले 3 मीटर्स का ऑरा, ये नेगेटिव एनर्जीज का, तो डेफिनेटली कोई ऑर्गन फेल होने के चांसेस पूरी तरह से होते हैं, या कैंसर आने के चांसेस होते हैं, या सेकेंडरी कैंसर्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो आप डॉक्टर से पहले बता सकते हो कि इनको इस जगह पे सेकेंडरी कैंसर्स डेवलप हो रहे हैं। अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो इतना क्लियरली आप बता सकते हो। We'll scan for her chakras. Give me her saliva sample. ये बच्चे का सलाइवा सैंपल है, हमने लेके रखा क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं था। हमने बड्स लिया, इसकी थूक लगाई इसमें, और इसके डीएनए की तरह हम यूज कर रहे हैं टू चेक हर एनर्जी इम्बैलेंस। ये किसी और को नहीं दिखाएगा क्योंकि बच्चे का ही सैंपल है, तो बच्चे को ही दिखाएगा। आप फिर देख सकते हो नेक के पास से मूलाधारा तक ये स्कैनर खुल रहा है, मतलब आप ये देख सकते हो कि यहां से इम्बैलेंस स्टार्ट हो रहा है एनर्जी का, और यहां आके खत्म हो रहा है। इतना क्लियरली आप बता सकते हो कि यहां तक फिर बंद हो गया, पैरों के पास एकदम एनर्जी ठीक है। मींस द सेम थिंग, द रेड कलर एनर्जी विच आई वाज टॉकिंग फ्रॉम हियर टू हियर,
और उसका अपनी ऑरा भी यहाँ से यहाँ तक इम्बैलेंस दिखा रहा है, मतलब उस जगह में शायद इस बच्ची को कोई प्रॉब्लम है। इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे? चक्रास के साथ कंफर्म करेंगे कौन सा चक्र काम नहीं कर रहा उस एरिया में, या डेफिसिट है या एक्सेस है, कंजेस्टेड है चक्रास, उसको भी आप स्कैनर से बता सकते हो और उसको करेक्शन करने के बाद ये भी बता सकते हो कि वो करेक्ट हुआ कि नहीं, इतना क्लियरली। So I have taken the Mooladhara sample. I am checking on her. It has opened and it is fluctuating. Okay, that means the energy is not stable in the Mooladhara. Actually, एक जगह आप लोग कोई हीलिंग मत कीजिए. I can see hands going up and all. आप कुछ मत कीजिए प्लीज, क्योंकि आप लोग एनर्जी भेजोगे तो स्कैनर हिलते रहेगा, राइट? तो मूलाधारा इज not functioning properly for this girl. अभी ये नहीं बताई हूं कि congested है कि deficit है, हमने सिर्फ देखा है कि imbalance है. The moment it opens, ये कहता है कि इसमें imbalance है, पर क्या वो congestion है? Suppose it is a pregnant lady, उसको congestion में दिखाएगा तुरंत. आप दूसरे दिन या तीसरे दिन बता सकते हो if she is pregnant or not. इतना quick scanner से आप बता सकते हो. Unless जैसे आपको टाइम लगता है टेस्ट जब करवाते हैं प्रेगनेंसी है कि नहीं बताने के लिए, बट द मोमेंट कंसीव होता है तुरंत आपका मूलाधारा गोज इनटू कंजेशन और एक्सेसिव वर्किंग. नेक्स्ट, सेक्रल चक्र, दैट इज द स्वादिष्ठाना. आई एम जस्ट चेकिंग हर चक्रास. ओके, हर नेवल ऑल्सो हैज ओपन 40%, क्योंकि हम इस जगह पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कम होने के कारण. मैं आपको शॉर्ट में दिखाऊंगी आपको, और फिर हम अपने थियरी पे जाएंगे कि इस बच्ची को, इतनी छोटी उम्र की बच्ची को जो भी प्रॉब्लम हुआ है हुआ क्यों है. हार्ट चक्र देख रही हूं. थ्रोट चक्र. सो इम्बैलेंस इज बेसिकली इन चक्रा से. तो आपको क्या लगता है जो स्कैनर बता रहा है इस हिसाब से इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? तो हम इसको कैसे टारगेट करेंगे? हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैनर खुल रहा है, बंद हो रहा है. बेटा उल्टा हो जाए. टू मिनट्स that's all बेटा. सुबह से बैठी थी, सॉरी. She has problem here. हाँ बेटा, I have you. So she has a back problem. A 22-year-old girl is having a problem from here to here. क्यों? Why? जबकि इसकी बायोमैग्नेटिज्म फुल स्विंग में रहना चाहिए. She must be full of life. But ऐसी क्या चीज थी जो इतनी छोटी बच्ची को, जो 22 years की है, उसको एक बैक, I can understand 60 years, 70 years, 80 years, you may have a back problem, but इतनी छोटी 22 years की बच्ची को यहाँ से यहाँ पे बैक प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? Thank you so much. Let's clap for her. So now we are going to see कि इस छोटी सी बच्ची को हुआ क्या है और why is it so? Okay, so let us see. डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको दिया है. सॉरी, मैंने अभी इसके मेरिडियंस चेक नहीं किए हैं. जो मेरिडियंस भी चेक करके कौन से मेरिडियन में ब्लॉकेज है वो भी स्कैनर आपको इतना क्लियरली बताएगा कि ये मेरिडियन में प्रॉब्लम होने के बाद कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है. और आप अगर हीलिंग दे सकते हो या एक्यूपंक्चर कर सकते हो और तुरंत स्कैनर आपको रिजल्ट भी बताएगा कि आपका एक्यूपंक्चर कितना काम किया है या उस पर काम नहीं किया है. बिकॉज लेट मी टेल यू अ सीक्रेट. जो मैं 20 इयर्स से काम कर रही हूँ इस सब्जेक्ट पे, एक सीक्रेट मैं आपको बताऊं कि चक्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी.
चक्रास एक फिजिकल स्टेट, एक मेंटल स्टेट और एक स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ अ पर्सन के बारे में बताता है। और जितने आपके प्लैनेट्स हैं, आई थिंक एवरीबडी इज सीइंग दैट। Madam, I've released her pain forever. Oh, great. Let's check. I take 2 minutes. So sorry. Leave it. नहीं एक्सेप्ट कीजिए, छोड़ दे, नहीं बाबू, नहीं। Really so sorry. There is a compression L4, L5. L5 as well. L5. But better don't cry. It's painful. Whenever I touch anybody, it's my record. Pain goes on. If pain is gone, yes, so I won't cry. I've taken her saliva samples to see the energy difference because I want to show you now what happens. हम alternative therapy में जो दे रहे हैं उसकी असर क्या हो रही है, अभी मैं आपको लाइव दिखाने जा रही हूँ क्योंकि अभी खितावत जी ने इसको अपनी हीलिंग दी है। Okay, now I've taken her saliva sample. अब बच्ची को प्रॉब्लम हो रही है करके मैं उल्टा लिटा के नहीं दिखा सकती हूँ आपको क्योंकि ऑलरेडी शी इज क्राइंग इन पेन। कैन यू सी व्हाट इज द स्कैनर टेलिंग? पहले कितना खुला था? बहुत खुला था। अभी क्या हो रहा है? दोनों स्कैनर गिर रहे हैं, मतलब अभी हार्मोनाइज चल रहा है, मतलब शी इज स्टिल रिसीविंग दैट एनर्जी। जब ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा दैट मीन्स शी इज बेटर और द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, अभी इसको जितना चाहिए उतना मिल चुका है। वो अभी भी स्कैनर ऐसे दिखा रहा है, तो अभी भी ऐसे कर रहा है, मतलब अभी एनर्जी हार्मोनाइज हो रहा है। इतना क्लियरली आपको स्कैनर दिखाता है कि असर क्या हुआ। मेरिडियन का है, कोई मेरिडियन हम चेक करते हैं, उसमें आपने नीडल डाला, उसमें आपने एक्यूप्रेशर किया, क्या वो वहां पे रिलीज हुआ? जो कंजेशन था या ब्लॉकेज थी, क्या वो रिलीज हुआ? दैट इज व्हाट द स्कैनर कैन टेल यू। तो चलता है इसके लिए ताली बजाएं। Next. Feeling a little better, not gonna lie. But yeah, pain is still there, but feeling a little better than before. Next. Okay, so let's see what is health. According to WHO, World Health Organization ने इसको कैसे define किया कि it is not only a physical state of well-being but also mental and social well-being. तो एक्चुअली हमें अगर हेल्थ के बारे में पता होना है, ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, सब हीलर्स हैं, हम लोग सब हीलर्स हैं। भले हम आदमी को हील करते हैं, भले हम एनिमल्स को हील करते हैं, प्लांट्स को हील करते हैं, घरों को हील करते हैं, पर है तो एट द एंड ऑफ द डे वी आर हीलर्स ओनली, इजंट इट? तो अभी हम देखते हैं कि अगर हम हीलर्स हैं तो क्या हमें सर्टेन बेसिक चीजें पता है कि बॉडी में हमारा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। नेक्स्ट, फॉर सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ हमें 3 क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर हम एज क्यों करते हैं, हम बुढ़े क्यों होते हैं। हमारी बॉडी 120 इयर्स जीने के लिए बनी है, क्या हमें पता है? 120, पर अभी क्या हमारा 60 to 70 इयर्स इज द मैक्सिमम वी कैन एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है। क्यों? व्हाई? दिस इज द क्वेश्चंस वी हैव टू आस्क। व्हाई डू वी फॉल सिक? Diabetes, arthritis has become a way of life for us despite the advancement in technology, medical technology. लेकिन हम arthritis अरे ठीक है, और हो ही जाता है 40 साल के बाद, इरेज सॉरी, ओके। ये भी बोलते हैं हम लोग कि डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल बीमारी, लेकिन क्यों हो रहा है भाई? किसी ने ये पूछा अपने आप से आखिर क्यों? Why is our body experiencing all these things? Okay, why do we die?
क्यों मरते हैं हम? क्यों मरते हैं? डू यू नो द सीक्रेट? देयर इज अ ब्यूटीफुल सिद्धा सीक्रेट इन दिस कि ये हमारे साथ क्यों होता है, बट आई डोंट थिंक वी हैव सो मच टाइम टू डील विद दिस। तो इसको समझने के लिए हमें ह्यूमन सिस्टम को समझना जरूरी है, स्पेशली ऑरा के बारे में। क्यों ऑरा के बारे में? क्योंकि हम एनर्जी हीलिंग में है। आप जानते हो एनर्जी है, आप जानते हो ऑरा है, लेकिन ऑरा कैसे प्रोड्यूस हुआ कोई जानते हैं? बॉडी में ऑरा कैसे बनती है? ऑरा कैसे बनती है? नेक्स्ट, जो ह्यूमन सिस्टम है, मैं सिर्फ 3 पॉइंट ले रही हूँ, वैसे इससे नहीं बनी है और है, जैसे फिजिकल बॉडी हो गया, लाइफ फोर्स हो गया, बायोमैग्नेटिज्म है, पर मैं और माइंड है, ऑल अदर थिंग्स आर देयर, बट मैं ये 3 पॉइंट को जरा क्लोजली दिखाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। जो डॉक्टर में गई थी कुछ कंप्लेन के साथ, उसने क्या लिखा है मेरे डायग्नोसिस में? GOK लिखा है। I asked what is GOK? He says God only knows. Doctors don't know unless 5-6 हजार के टेस्ट नहीं डालते हैं। हमारे साथ क्या हो रहा है डॉक्टर्स को नहीं पता है। क्या हमें पता है हीलर्स होने के नाते? पर हम हीलिंग दे रहे हैं और ठीक हो रहे हैं लोग। क्यों हो रहे हैं? दिस इज वेयर दिस कम्स इन। द फिजिकल बॉडी छोटा सा है, नॉट बट इंफॉर्मेशन वेरी वाइटल फॉर अस बिकॉज वी आर हीलर्स। ये जो फिजिकल बॉडी है, इट कंटेन्स न्यूमरस सेल्स। जो सेल्स है, ओके, दिस सेल्स आर अ कंप्लीट लैबोरेटरी इन इटसेल्फ। एक मिनी सिटी है जो कम्युनिकेशन में दूसरे सेल्स के साथ है। लेकिन ये सेल्स कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ? क्या हमें पता है? पोलर अट्रैक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को नोट कीजिए। पोलर अट्रैक्शन मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। अगर ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, बॉडी विल फॉल अपार्ट, द सेल्स विल डिसइंटीग्रेट, हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड एज पोलर अट्रैक्शन। जिस तरह इजिप्ट के गीजा पिरामिड बना हुआ है, मेन स्टोन, फीमेल स्टोन, मेन स्टोन, देयर इज नो सीमेंट। दे न्यू द सीक्रेट, प्लस चार्ज माइनस चार्ज जोड़ दिए इतने टन्स ऑफ स्टोन्स को और बन गया पिरामिड, आज तक खड़ा है। तो हमारी बॉडी भी पोलर अट्रैक्शन से द सेल्स जुड़े हुए हैं और इस सेल्स में अंदर प्राण शक्ति जो है वो घूम रही है। द प्राण शक्ति इज वाइब्रेटिंग इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंटिन्यूअस, और जितनी प्राण शक्ति है वो पूरा मिला के एक वेव बनाती है जिसको हम बायोमैग्नेटिज्म कहते हैं। दिस बायोमैग्नेटिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज ये बायोमैग्नेटिज्म है जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही है। यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या इसी को ऑरा कहते हैं। अगर ये ड्रेन हो गई, हमारे सेल्स की डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी क्योंकि पोलर अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी सेल्स के बीच में और हमारी सेल्स जो है वो डिसइंटीग्रेट करने लग जाएंगे। और बॉडी हीट जो ये ऑरा मेंटेन करती है, जब आदमी मर जाता है क्या होता है? बॉडी ठंडा पड़ जाती है ना, कोल्ड। तो ये बॉडी हीट और इंटेंसिटी ऑफ द बायोमैग्नेटिज्म और ऑरा हैज टू बी मेंटेन्ड। और ये ऑरा, according to Dr. Manyam Murthy has done research, we have done in every hospital, ICU जाके हमने हजारों पेशेंट्स को टेस्ट किया है and we have found that a normal healthy person को 2.5 meters से 2.8 meters की ऑरा रहने से he is healthy। उससे गिरते रहने से 2 meters तक आप सस्टेन कर सकते हो, पर उसके बाद आपको मेडिसिन की सपोर्ट की जरूरत है, हीलिंग की सपोर्ट की जरूरत है। बट पावर हाउसेस ऑफ एनर्जी जो है वो होते हैं तपस्वी लोग जो मेडिटेशन करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं। 3 meters, 4 meters, 10 meters, मैंने 60 मीटर तक ऑरा नापा है लोगों का। सो दे आर एनर्जीज एक्चुअली। सो दिस बायोमैग्नेटिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पेन क्या होती है? जब ये बायोमैग्नेटिज्म कहीं ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो क्या होता है? वो मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रीफाई कर देता है और जब इलेक्ट्रीफाई हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सेल्स एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं या टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो वहां बर्निंग या इन्फ्लेमेशन होती है। और जब बर्निंग या इन्फ्लेमेशन होती है मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो आपको पेन महसूस होगी, पेन पेन पेन, पर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। पर अगर लॉन्गर ड्यूरेशन ओवर अ वास्ट एरिया है तो वो डिसीज कहलाता है।
तो आपको स्कैनर बताता है यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, लुका प्रॉब्लम आ रही है, 20% है, 30% है, अब मेरे से नहीं हो रहा है। बच्चे के साथ क्या हुआ, उसको यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रही थी, यहाँ पे प्रॉब्लम है, पता नहीं बच्चे को कब से हो रहा था कि आज इसकी ये हालत है कि स्टेज पे बैठने के लिए रो रही है। 22 years old girl, right? Next please. So what are the energies actually जो subtly हमें impact कर रहे हैं, इसके बारे में डॉक्टर मान्य मूर्ति has done a beautiful research and I'm really fortunate to have him as my father because ये knowledge जो है हमारे इनके द्वारा हमको मिली है। He says there are certain radiations in the energy field जो भूमि में से 7.83 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमें मिलना चाहिए, जो हमारी मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। हार्मोनियस, मोस्ट हार्मोनियस एनर्जी आर द ह्यूमन वेव्स। पर अगर एक जगह पे 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है तो क्या होगा? अगर 150 हर्ट्ज की एनर्जी आ रही है जो 7.83 हर्ट्ज होना चाहिए, इफ इट इज 200 to 250 हर्ट्ज तो आपका क्या होगा? वही आपके बेड के नीचे है तो क्या होगा? That is the energy which is impacting each and every one of us in our houses. Where we sit, we don't know. बाहर अच्छा लगता है, घर में आते ही pata nahi yaar, fatigue होती है, बहुत problem हो रहा है. Let's see what it is. Next. छोटी सी है, यहाँ देख लीजिए. This is the visible spectrum. जो हमारी 9 रंग से पूरी सृष्टि जो चल रही है, हमारी शरीर चल रहा है, प्लांट्स चल रहे हैं, एनिमल्स चल रहे हैं, ये सारी जो है ये फ्रीक्वेंसी में मेंटेन हो रहे हैं. ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी को राहु केतु करके वेदास में कहा गया है. वहां से इनको आइडिया आया, डॉक्टर मूर्ति को आइडिया आया कि अगर इसमें ही पूरी सृष्टि पल रही है तो ये एनर्जी क्या कर रही है? जो बोथ साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम है, एक नेगेटिव अल्ट्रावायलेट, एक नेगेटिव इंफ्रारेड. बच्ची के बॉडी में नेगेटिव इंफ्रारेड था, मतलब जहां ये सो रही है या बैठ रही है, she is getting impacted with that radiation, and this you will not find in the internet because it is unique to his invention, Dr. Murthy's. और ये you can ask our students, they have done wonderful research. किसी के बॉडी में माइनस IR, नेगेटिव IR या नेगेटिव UV मिलती है तो आप तुरंत बता सकते हो नेगेटिव UV हेड और ऊपर के भागों को इम्पैक्ट कर रही है और इंफ्रारेड पूरी बॉडी को इम्पैक्ट कर रही है. तभी आज हॉस्पिटल्स पूरी बिजनेस कर रहे हैं हर गली नुक्कड़. व्हाई? एंड वी एज एनर्जी हीलर्स एनर्जी देते हुए एनर्जी को संतुलन में लाने की कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए वी आर थ्राइविंग एंड विल डू वंडरफुल इन द कमिंग ईयर्स. जितने हीलर्स है, बिकॉज we know we are tracking the biomagnetism fields या biomagnetism का flow या एनर्जी चैनल्स को हम जानते हैं कि कहाँ पंचर करें, कहाँ पे एनर्जी टच दें या कलर एनर्जी दें और उसको संतुलन में लाएं. बट माइंडेड, ये एनर्जी और ये एनर्जी आपके पास रहेगी आपके घरों में या आप जहाँ काम करते हो. तो आप कितना भी आप हॉस्पिटल जाओगे, ठीक हो गया आओगे, वहीं सोओगे, वहीं प्रॉब्लम फिर आपको आने के चांसेस फुल्ली हैं. ओके, नेक्स्ट. सो दिस यूनिवर्सल स्कैनर मैंने आपको ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट किया तो मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगी इसके बारे में. प्लीज नेक्स्ट. सो राइट नाउ आई स्पोकन अबाउट द विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड हमारा हार्मोनाइजर है. इससे हम तुरंत नेगेटिव एनर्जीज को बॉडी में से निकाल देते हैं, जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस हो गया, माइनस UV हो गया, माइनस IR, एंड बॉडी को बायोमैग्नेटिज्म को, क्योंकि बंदे का एक फ्रीक्वेंसी लेवल होता है, जैसे इनका एक लेवल है. जो मैम बात कर रही थी सुजाता मैम, शी इज टॉकिंग अबाउट रिदम. इनकी बॉडी की रिदम है, आपकी रिदम है, एक सुर है, उसमें से सुर बिगड़ गया तो असुर हो जाएगा. असुर मतलब कोई बाहर से नहीं है, दानव या असुर. असुर मतलब आप सुर में नहीं हो. सिंपल, आप सुर में नहीं हो तो आपका मानसिक स्थिति क्या होगी, आपकी बॉडी की स्थिति क्या होगी? वो प्रॉब्लम असुर वहां पे है. कोई राक्षस बाहर से आके आपको अटैक नहीं कर रहा है. आपके अंदर जब संतुलन हो और मानसिक और शारीरिक, तब आप सुर में हो, आप रिदम हो, आप योगा में हो. मतलब यू आर इन अलाइन विद द एग्जिस्टेंस, क्योंकि आप और वो एक रिदम में है. पर यही नहीं, आप वो और आपका घर भी रिदम में होना चाहिए.
क्योंकि आपको जो पंच महाभूत, जो अर्थ भगवान जिसको बोलते हैं, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, ये मिल रहा है कहां से? आपके घर से। इसीलिए वास्तु कहते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो चीज आपके बॉडी में, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो आपको वहां प्रॉब्लम डेवलप होने के चांसेस बन जाते हैं। सो नेक्स्ट, आपका ज्ञान बहुत अधिक है और इस थोड़े से समय में हम शायद पूरा नहीं ले पाएंगे। या प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सो ये है जियोपैथिक स्ट्रेस, जो घरों में एक्सीडेंट स्पॉट्स है, मतलब जहां पे मैंने आपको बोला 200 to 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आपको वहां पे मर्डर्स होते हैं, वहां पे सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं। कोई भी सुसाइड करा, पहले उस जगह से हटाओ उसको, उसकी एनर्जी में शिफ्ट लाओ, तुरंत वो सेट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे असुर की एनर्जी निकल रही है जो आपको सुर में नहीं रखेगी। सो इसीलिए ऑल दीज एनर्जीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन छोटा क्वेश्चन था, किसी ने किसी को पूछा कि हीलिंग हमें कौन सी जगह में करनी चाहिए? घर पे। घर पे आप नॉर्थ वेस्ट में हीलिंग कीजिए, नॉर्थ वेस्ट साइड में बैठ के आप हीलिंग करोगे तो आपका हीलिंग बहुत इफेक्टिव रहेगा। और I don't think we have time for questions. I'll be there, and we have a very good student, Vaishali, and she's doing the work in Indore here, and she does very beautiful healing and work. आपको कोई भी क्वेश्चन है, मैं हूं कल, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम चाहेंगे मैम कि कभी हम आपकी एक अच्छी वर्कशॉप लगाएं जिसमें मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें और वो उसे पूरी तरह से सीख पाए, क्योंकि अभी क्या है ना, सबके मन में क्वेश्चन तो बहुत होंगे, लेकिन समय की कमी के कारण हम माफी चाहते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते। करती हूँ। आइए चौहान साहब, मैंने गीता जी से रिक्वेस्ट किया है कि हमारे इंस्टीट्यूट के और डेलीगेट्स अगर ये और मशीन लेना चाहें तो यू शुड गिव सम डिस्काउंट। तो ये क्योंकि बहुत यूजफुल है, राकेश पंडित जी यूज कर रहे हैं। कोरोना काल में जो राकेश जी ने काम किया है, इट्स रियली वंडरफुल। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, अनेक लोगों को जीवन दान दिया है सिर्फ इस मशीन के कारण। तो जो लोग भी लेना चाहें, गीता हैज गिवन मी हर कंसर्न कि मैं स्पेशल डिस्काउंट दूंगी अगर ये मशीन को लेना चाहे। हाँ, उसको सीखना पड़ेगा। और राकेश जी को जब भी आप सीखना चाहेंगे तो आई हैव ऑल द राइट टू इनवाइट राकेश जी टू इंदौर। हाँ, यस, आइए। मैं दीपाली मैम को और जय जोशी सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ मंच पे एज ए प्लीज एज ए चेयरपर्सन। Once again, I'm here. Thank you. Hard to get back then. Well, begin with ABC. Begin with ABC. टाइम शेड्यूल है, समय का बंधन है। हम लोग we have time schedule, so पहले facts देख लें, इसके बाद then we will discuss the facts. In fact, I am talking about the how to heal up the injuries with the help of hypnotherapy using the power of subconscious mind.
Next, next, please. So we have the topic, power of subconscious mind in the healing of burning injuries through hypnosis. Yeah, hypnotherapy. One day I got a call from London, a patient, Abhilasha Pushpa. She sustained. There was a call from Abhilasha Kushwaha, London. She sustained the burn injury while cooking on her face, chest, and wrist. Her source was one of the previous patients, Roshni Gupta, patient of acute migraine. She healed up perfectly. So, one can see the blisters, discoloration, burn injury. Yes. She went to the hospital in the London on 12th of the March 2017. Doctor said it will take at least 2 to 3 months to heal her. She declined. No, नहीं चाहिए हमें वो कोई मेडिकेशन वगैरह लो. She consulted her friend from Indore, got my contact. There is a gap only for 6 days. First checkup on 12th March and then second checkup on 18 March. In between this time, she got my therapy on video call, got cured miraculously. She overcome the injuries, also the scar marks. I gave her only 3 sessions on video call. She overcome the injuries, and I asked her, is there any scar mark? यहाँ पे छोटा ही. Next day, I gave her one more session. Within next 24 hours, she will overcome these scar marks, and miraculously she overcame. Just 4 session period of 6 days. और डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले हाउ कम, कैसे हो सकता है ये, बट देखा डॉक्टर ने बताया भी. सो इट कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ डीप काउंसलिंग. मैंने उसको बहुत डिटेल से समझाया द प्रोसेस ऑफ हिप्नोथेरेपी, जैसा कि अभी कई डेलीगेट्स ने बताया भी है.
हमारे ब्रेन में among endocrine glands there is a master endocrine gland, that is pituitary gland, hypophysis. This pituitary along with hypothalamus secretes hormone, one can say neurotransmitter, endorphin. Endorphin means दो वर्ड हैं, endogenous and morphine. Endogenous within the body and morphine, that is painkiller. So this is endorphin, neurotransmitter. Second, I explained her the power of subconscious to regenerate the cells. हीलर कैसे हील करता है? हम लोग पहले उसका जो एक्सपीरियंसेस हैं, let us see the experiences. We have the video clip. ये देखिए, this one. This is the first day pic before session. Second one, it is the pic after 2 sessions. See that gradually healing. And there starts 3rd session, and after 3rd session, there are 2 scar marks, one at the lip and second near the eyes. And after 4 sessions, she overcame these scar marks also. This is the miracle of our subconscious, power of subconscious. Next, volume, please. This is the video clip. Actually, I want to share one incident that took place with me on 11th of March 2017. I was preparing dinner for my family and the boiling gravy fell over my face, and I had few stacks over my neck, wrist and chest. Next morning, on 12th of March, I went to the hospital in the urgent care unit, and Dr. Jen examined me there. She saw my injuries and everything, and she said that this will take at least 2 to 3 months to heal the skin, and these scars will take 4 to 5 months to fade away completely. You can see the chart letter here, written out of hospital. I got burns over my eyelids, under eye, cheeks, above my mouth, and tiny blisters, and discoloration was also there. Now, on the same day, after coming back from the hospital, I had word with my childhood friend, Roshni Gupta, who lives in Indore. So she advised me to go for hypnotherapy and share the contact details of Dr. Ajay Chakras, who is a very well-known hypnotherapist. Ajay gave me 4 sessions after the detailed counseling. He might have everything about the process of hypnotherapy, and 3 sessions were planned on video call for the next 3 days consecutively. Now, the experience of hypnosis was truly divine. During the session, when Ajay said that I'm going deep into the trance and I'm lying in the sea where fishes are eating up my bone skin, and the sea water is healing the injuries, I felt it deeply in real. And I shared my photos throughout the process of hypnotherapy with Sir. On the 4th day, I was very surprised to see my face. All the injuries and blisters were gone. Then Sir asked if there were any scar marks left on my skin, and I said yes. There was one near the eye and somewhere here near the lips. Then Sir gave me the 4th session, and I was completely surprised to
see the results because within 24 hours, these scars were gone totally. They were cured. On 18th March, she said all my injuries, all the blisters, discoloration, scars, everything was completely rehabilitated. I'm very grateful to Dr. Ajay Sir to do this miracle. Thank you. Let's come back. Back. I tell you the theme of this miracle. Second. This is the theme. Life is 10%. What you experience, and 90% how do you respond. This is just a response. The patient responds 90%. That caused this miracle. ये miracle अकेला नहीं है. I overcome my infarcts. self hypnosis से मैंने अपने ब्रेन स्ट्रोक से अपने इन्फॉर्ट्स ठीक किए हैं. आप जानते हैं इन्फॉर्ट्स ठीक होना इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स क्लियर. और बताता हूँ, देयर इज माय वाइफ, शी सस्टेन्ड PID, prolapsing disc, slip disc. मैंने वो डिस्क ठीक की है, स्लिप डिस्क. प्लीज जरा झुक के बताइए, जरा झुक के बताइए. देयर इज नो प्रॉब्लम, नो सर्जरी. दिस इज हिप्नोसिस, दिस इज hypnotherapy. There are so many miracles. ये मैंने अकेले नहीं किए हैं, और जितने प्रैक्टिसिंग हैं सबने कभी ना कभी इस टाइप के मिराकल्स किए हैं. Any questions from someone? Any questions? Very odd question is there in my mind. Yeah, please. If you permit me, then I'll say it. Sure. बताइए please. You are DC. Sorry. Correct? How did you convert yourself into this one? Because that line is totally different line. Over there, Marfad and everything. And how now your voice and everything is so tuned up, and the way you are talking is a totally different way. This is a big miracle. This is a big miracle in your life. Okay. देखिए, मैं हम लोगों ने पहले तय किया था कि विषय से भटक के हम ना तो कोई दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ना ही हम कुछ जो भी आपको पूछना है बाद में आराम से पूछ सकते हैं. अभी एक्चुअली क्या है ना, हमारा टाइम वैसे बहुत ओवर हो चुका है, तो दूसरे जो सॉरी ये यूं हुआ था कि जब मैं एक पुलिस स्टेशन में इंचार्ज था, there was custodial death and I faced the consequences for the next 5.5 years. So there, with my guru, I developed forensic hypnosis. My guru,
Khitawat sir. Forensic hypnosis means how to reveal information. बगैर एक भी डंडा मारे कैसे कबूलवाना? That helped me with a lot. उसके बाद से it worked. उसके बाद से फिर मैंने देखा कि हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस में इतना पावर है, मैंने इसको ट्विस्ट किया टुवर्ड्स हिप्नोथेरेपी एंड आई स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स. राइट जेंटलमैन, थैंक यू सो मच. अब मैं निष्ठा गुप्ता मैम को आमंत्रित करती हूँ. रोल ऑफ नेचुरोपैथी इन बूस्टिंग इम्यूनिटी. आप लखनऊ से आए हैं और आप नेचुरोपैथी सेंटर चलाते हैं वहाँ, और काफी पेशेंट्स को आपने लाभान्वित किया है. निष्ठा गुप्ता मैम. मुझे बात ही लगे हैं कि आपको मैं खाली कॉपी ठीक है. आप सभी को हमारा प्राकृतिक नमस्कार. जैसा कि आपको बताया गया है कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा की ट्रेनिंग भी कराती हूँ और प्राकृतिक चिकित्सा भी करती हूँ. पिछले 20 सालों से 21 सालों से मैं लखनऊ में अपना नेचुरोपैथी सेंटर चलाती हूँ. मैं लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना चाहती हूँ कि जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा, इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है और हम इन्हीं 5 तत्वों से ठीक हो सकते हैं. हमको किसी और चीज की जरूरत नहीं है. तो मैं विदाउट मेडिसिन ड्रगलेस सिस्टम पे काम कर रही हूँ. एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन, फीलिंग, आई नो ये कैटलिस्ट का काम करते हैं. हिप्नोथेरेपी ये आपकी ऑरा को अच्छा करते हैं, एनर्जी बॉडी को अच्छा करते हैं. अभी आप इतना सारा सुन भी चुके हैं तो उसमें समय नहीं वेस्ट करना है. वो सब मैं इसलिए करती हूँ कि वो एक मेरे नेचुरोपैथी सिस्टम को बूस्ट कर सकें, एक कैटलिस्ट का काम कर सकें. पर बेसिकली आपकी बॉडी में कोई भी डिफॉर्मिटी आई है तो अगर आप उसको नेचुरोपैथी से हैंडल करते हैं, नेचुरोपैथी मैं थोड़ा और समझाना चाहूंगी, नेचुरोपैथी से हैंडल करते हैं तो आप यकीन मानिए आप पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की तरफ बढ़ रहे हैं. आप उस ऑर्गन का वाइटल फोर्स और वाइटल एनर्जी भी अच्छी कर रहे हैं और आप अपनी हैबिट को भी अच्छा कर रहे हैं. आप उस प्रॉब्लम को टाइम नहीं निकाल रहे हैं, आप हमेशा के लिए अच्छे हो रहे हैं. जो आज का टॉपिक है जो डॉक्टर खितावत जी ने हमें दिया कि द रोल ऑफ नेचुरोपैथी इन बूस्टिंग इम्यूनिटी, कैसे हमारी इम्यूनिटी पावर हम नेचुरोपैथी से अच्छी कर सकते हैं. कुछ वर्ड्स हैं. सर मेरा पीपीटी लगा दीजिए. सॉरी. तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ. इम्यूनिटी क्या है ये आप सभी जानते हैं कि शरीर में रोगों की जो लड़ने की क्षमता होती है, वो एक लेमन शब्द में, लेमन भाषा में उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं. और उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है. अब प्रतिरक्षा तंत्र के लिए अगर हमें उसको अच्छा करना है तो हमें क्या करना होगा? हम 2 तरीके से बीमार पड़ते हैं. एक होता है एक्यूट डिजीजेस, एक होता है क्रॉनिक डिजीजेस. क्रॉनिक डिजीजेस में हम सब कुछ करते हैं, एक्यूप्रेशर भी, होलिस्टिक हेल्थ भी, मेडिटेशन भी, हिप्नोथेरेपी भी, एलोपैथी भी. सर्जरी जरूरत है तो सर्जरी भी, क्योंकि हम इतने दिनों से उससे लड़ रहे हैं. पर हमें काम कहाँ पे करने की जरूरत है? एक्यूट डिजीजेस में. अगर हम फर्स्ट एड के तौर पे एक्यूट डिजीजेस में नेचुरोपैथी को इनकलकेट करें तो यकीन मानिए क्रॉनिक डिजीजेस आएंगी नहीं. ये इतना सारा कैंसर जो कॉजिंग चल रहा है वो सिर्फ सिंपल हमारे एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस को लिंगर ऑन करने से है कि हम थोड़ी सी टैबलेट खा करके, थोड़ा इनो पी करके मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका. जहां पर उसको क्योर करने की जरूरत है वहां क्योर नहीं कर रहे, और जहां क्योर नहीं करना है, जहां हमारे हाथ से चीजें निकल गई हैं, वहां सारे फाइल लेकर के नेचुरोपैथी, हिप्नोथेरेपी इन सबको ढूंढते हैं.
तो जहां पर क्योर करने की जरूरत है वहां पर हिट करना चाहिए। एक्यूट डिजीजेस इन द सेंस कि जो हमारी बॉडी में इमीडिएट आई है ना, तुरंत आई है, जो हमें तुरंत दिख रही है, क्या हो सकती है वो? हमारा फीवर है, हमारा गैस्ट्राइटिस है, हमारी नेजल लीकेज है, हमारा कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग है। तो इन सबको हम जब सप्रेस करते हैं मेडिसिन से, तभी हम कन्वर्ट करते हैं इनको क्रॉनिक एलिमेंट्स में। ठीक है, हल्की सी कफ है लेकिन हम उसको नेचुरोपैथी के एलिमेंट से नहीं निकाल रहे, नेचुरोपैथी विधियों से नहीं निकाल रहे। क्यों इतनी आवश्यकता है नेचुरोपैथी की, बताइए? नेचर तो नेचर क्योर था, नेचुरोपैथी की इतनी आवश्यकता क्यों कि इतने सेंटर खुलने लग गए हैं? बिकॉज हम नेचर से दूर हो गए हैं। ना तो हम फ्रेश एयर ले रहे हैं, ना तो हम फ्रेश वाटर ले रहे हैं, ना तो हम फ्रेश ब्रीदिंग ले रहे हैं। तो हमें इन्वायरमेंट को उठा के आपके पास लाना पड़ रहा है, इसलिए सेंटर खुल गए हैं। तो भाई आप पानी के पास नहीं जा रहे सही तरीके से, तो हम पानी को आपके पास सही तरीके से लाते। बिकॉज पहले तो पोखरा स्नान होता था, आज हम शावर को पानी ऊपर से डालते हैं और सारा पानी वेस्ट करते हैं। उससे बॉडी को कोई फायदा नहीं होता, कोई भी फायदा नहीं होता। जब तक आप पानी के अंदर मर्ज होकर के नहीं स्नान कराएंगे, जिसको हम अगर नेचुरोपैथी में के प्रक्षालन, अगर हम किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को स्नान कराते हैं तो हम उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को हील कर रहे होते हैं। एक्यूप्रेशर और इनके संदर्भ में हमने जाना कि हर बॉडी ऑर्गन की अगर वो डिजीज है तो एक बायोमैग्नेटिक फील्ड है जहां पर एनर्जी को डिप्लीट किया है या पड़ी हुई है, हम उसको देखते हैं और उसको ठीक करते हैं। इसी तरह नेचुरोपैथी में हम सिंपल ब्लड सर्कुलेशन को चेंज कर रहे हैं, सिंपल ब्लड सर्कुलेशन को चेंज कर रहे हैं, वहां से शिफ्ट कर रहे हैं और वहां पे जो कंजेशन है या डिप्लीशन है उसको ठीक कर रहे हैं। और वो आपकी सिर्फ एक ऑर्गन को ही नहीं हील कर रहा, वो आपकी पूरी बॉडी ऑर्गन को ठीक कर रहा है। सो आप सोचिए कि अगर आप सिंपल कोल्ड एंड कफ हो रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल। सर हमारा लगता है ये आपका ही है। अच्छा, इसको आगे बढ़ा दीजिए, काफी आगे निकल चुके हैं, और बढ़ाइए। हाँ जी, ये मैंने एक्यूट डिजीजेस की बात कही जिसमें कि फीवर, वोमिटिंग, लूज मोशन, हेडेक एंड लैक ऑफ स्लीप, जिनके लिए हम बेसिकली बहुत सारी टैबलेट खाते हैं। और जैसे ही हम टैबलेट खाएंगे, कुछ भी करें, ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी कह लीजिए, अगर मान लीजिए हम अपने धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश से इन चीजों को ठीक करना चाहें तो सिर्फ यही ठीक नहीं होगी बल्कि पूरी बॉडी ठीक होगी। तो जो हम अपनी पूरी बॉडी को ठीक करें, पूरी बॉडी को रिजेनरेट करें, जिससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो, जिससे एक्यूट डिजीजेस क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट ना हो। सो नेक्स्ट, ये भी नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। थैंक यू। तो एक तो इसमें हम सबसे पहले जो डाइट की बात करते हैं, कितना सिंपल है, आज कितनी तरीके की डाइट चली हुई है। बट अगर हम नेचुरोपैथी डाइट की बात करें तो सिंपल, अगर हम अल्कलाइन डाइट 80% ले लें और 20% एसिडिक डाइट कर दें, सो हम ठीक होने लग जाएंगे। तो जो लोग सिर्फ जीरा पानी, अजवाइन पानी, काला नमक पानी को ही सब नेचुरोपैथी समझते हैं, तो नेचुरोपैथी सिर्फ उतनी नहीं है, नेचुरोपैथी उससे बहुत वास्ट है। ये नेचुरोपैथी का एंड हो सकता है कि हमारा डाइट कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मोटा मोटा जो डाइट कॉन्सेप्ट का काम है वो ये कह सकते हैं कि हम 80% अल्कलाइन डाइट फॉलो करें। अल्कलाइन डाइट क्या होती है? बहुत सिंपल, जब आप रॉ खाते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में खाते हैं या सेमी कुक्ड खाते हैं, बॉइल खाते हैं, सूप पीते हैं, ये अल्कलाइन फॉर्मूला है, मोटा मोटा सा। और एसिडिक क्या है? जब आप ओवर कुक करते हैं, बहुत कुकिंग करते हैं, वो सब एसिडिक है। अगर आप कहते हैं कि हम सब्जी खाते हैं पर सब्जी खूब सारी भून के खाई गई है, तो वो एसिडिक है। यही कारण है कि लोग कहते हैं हम तो घर का खाना खाते हैं फिर भी इतनी गैस्ट्राइटिस है, इतनी एसिडिटी है। सो घर का खाना खा रहे हैं पर कुक्ड खा रहे हैं, हर टाइम कुक्ड खा रहे हैं, तो फिर अगेन आप प्रॉब्लम में हैं। सो अगर इसको हम इस तरीके से करें कि हर बार का हमारी जो सर्विंग है उसमें 80% हमारे अल्कलाइन डाइट हो, मतलब फ्रेश फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, रफेज हो, सूप्स हो, जूसेस हो, ड्राई फ्रूट्स हो, तो आप एक डिजाइन कर पाएंगे कि एसिडिक और अल्कलाइन नेचर को। और जब आप बीमार हो तो अगेन आप 80% पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएं, एक मील या जूस फास्टिंग या सूप फास्टिंग, तो आप रिकवरी करने लग जाएंगे। सो नेक्स्ट कर दें। ये एक पीएच स्केल है जिसमें दिखाया गया है कि हमारा बॉडी का पीएच, ब्लड का पीएच 7.3 होता है। तो हमें अपने ब्लड के पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा
हम बीमार हो इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा ब्लड का पीएच एसिडिक हो रहा है। सो अगर हम उसको मेंटेन कर लें, मतलब अपनी डाइट को चेंज करें और हम अल्कलाइन डाइट लें, तो हमारी पूरी बॉडी क्लींजिंग मेथड पे चली जाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन पे चली जाएगी। नेक्स्ट, ये हमारे क्लिनिक की पिक्स हैं जिसमें मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देती हूँ, और ये पहली बार है मुझे बताते हुए खुशी होती है कि लोग मुझे इस नाम से जानते हैं कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑनलाइन इतनी खूबसूरती से कैसे करा सकती हैं। नेचुरोपैथी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑनलाइन कराना बहुत कठिन है, लेकिन मैंने बहुत सारे लाइव प्रोग्राम्स क्लिनिक में लाइव कैमरास रख के लोगों को सिखाया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाहर इंटरनेशनल जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा और वो बहुत ज्यादा उन्होंने रिकवरी की। इवन फाइब्रॉइड्स, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, सिंपल पानी में बैठ के, कुछ भी नहीं डलवाती मैं। अगेन आयुर्वेदा, आपको दवा की जरूरत ही नहीं है, आयुर्वेदा भी आप कुछ समय तक कर सकते हैं, वो भी मेडिकेशन है। नेचुरोपैथी आप होल लाइफ कीजिए, होल लाइफ कीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप अपने जीवन में उतारिए। सो ये एक मडबाथ का पिक है। मड थेरेपी काम करती है फीवर, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, एसिडिटी एंड वोमिटिंग। और इसको सिंपली आप घर में अपने घर के गार्डन से मड को निकाल के, या कहीं खुदाई हो रही है उसको आप अरेंज कर सकते हैं। सो ये अगेन मेरे क्लास से बाहर जाएगा, तो अगेन डॉक्टर खिरावत जी जब कभी हमको बुलाएंगे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, तो एश्योर है कि आप सभी को, अगर उसमें आप जो भी कर रहे हैं उसमें अगर नेचुरोपैथी की थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स ऐड करेंगे आप, तो और ज्यादा आप लोगों को प्रोडक्टिव दे पाएंगे, फायदा उठा पाएंगे। नेक्स्ट कर रहे हैं सर, ये एनिमास हैं जो कि आप सभी ने सुने होंगे, बस्ती, ये हर किसी के घर में होना चाहिए, और ये इतना सिंपल है कि मैं इसको बहुत अच्छे से सिखाती भी हूँ, और ये बहुत अवेलेबल भी है अमेज़न पे। सिंपल 150-200 का डब्बा है, उसमें नीम का पानी, आप नींबू का पानी, इस तरह से सिंपल तरीके से आप एनिमास ले सकते हैं, जो कि जैसे आप पानी पीते हैं तो आपका टैप खराब होता ही है ना एक दिन। आप कितनी भी वैदिक डाइट ले लें, कितनी भी नेचुरोपैथी डाइट ले लें, टाइम आने पर आपके कोलोन में, रेक्टम में डिपोजिशन होना स्वाभाविक है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो होते हैं, आपकी इंटेस्टाइनल वॉर्मिंग बढ़ती है। अगर आप समय समय पर एक स्वस्थ आदमी भी एनिमास ले ले तो शायद वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच जाएगा। तो ये सिंपल जो चीजें हैं उनको हर व्यक्ति को आना चाहिए, और क्रॉनिक अगर प्रॉब्लम में है तब तो करना चाहिए, एक हेल्दी पर्सन को भी करना चाहिए। सर नेक्स्ट करें। जैसे कि हॉट फुट बाथ का पिक्चर है, कितना सिंपल है, इसके बहुत सारे वीडियोस हमने अपने ट्रेनिंग के दौरान भी बनाए हुए हैं। इससे बहुत सारे बच्चों का अस्थमा बचाया है उनको, क्योंकि जब आप कफिंग जाते नहीं है ना, तो डॉक्टर के पास जाके सर अभी भी नहीं ठीक हो रहा है, डॉक्टर क्या करेगा, अपने बच्चों को नहीं लिखेगा, बट वो आपको लिखेगा, क्योंकि आप जेन्युइनली उसके पास बार बार जा रहे हैं। सो आई एग्री, एक्यूप्रेशर काम करता है, आई एग्री, और चीजें काम करती हैं, बट द थिंग इज कि अगर आप इस तरह के गर्म पानी की बकेट में पानी पैर डाल के बैठते हैं, ये छोटा सा सिंपल फोटो है, तो उसमें जब पानी बढ़ाते हैं तो थेरेप्यूटिकली क्या हो रहा है कि पैरों की नसों में वैसोडाइलेशन हो रहा है, कैपिलरीज चौड़ी हो गई और अपर बॉडी का कंजेशन नीचे पैरों की तरफ आ गया। ठीक है, सिंपल सी साइंस है। चेस्ट में जितना कंजेशन था वो सब रिमूव हो गया, नीचे तक चला गया। तब जब एक्यूप्रेशर मसाज करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, और ऐसा हमने 6 साल से बच्चे से लेकर के 80-90 साल तक के लोगों को ट्रीट किया, जिनको सीवियर कंजेशन कफ था और वो कितनी सारी स्टेरॉइड वाली दवाएं खा रहे थे। सो ये सिंपल है, जीरो इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर हमारा थेरेपिस्ट करेगा, आप क्लिनिक में आएंगे तो नो डाउट उसके चार्जेस होते हैं, पर घर में सीखने और करने के लिए कोई चार्जेस नहीं होते। छोटे बच्चों को आप टीवी के सामने बिठा दीजिए, गर्म पानी बढ़ाते रहिए, कवर कर दीजिए बॉडी को, और इतना अच्छा फायदा है। उसके डू एंड डोंट्स हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये जैसे आपका हेडेक है, साइनोसाइटिस है, अस्थमा, टॉन्सिलाइटिस एंड हाई बीपी, इनिशियल स्टेज में मेरा कहने का मतलब है, बस 2 मिनट। नेक्स्ट, ये हिप बाथ है, सिंपल, आप देख रहे हैं टब के अंदर बैठे हुए हैं। सो अभी हम क्या करते हैं, ऊपर से शावर से पानी से नहाते हैं। अभी हम टब के अंदर जब मर्ज होते हैं, जैसे गाय भैंस या जानवर आप देखते हैं बेली को ठंडा रखते थे ना, अभी एब्डोमेन को हम ठंडा नहीं रखते, जेनिटल ऑर्गन्स को ठंडा नहीं रखते, उल्टा हीट करते हैं और अनवांटेड कपड़ों से, क्लोथिंग से कवर रखते हैं। सो ये चीजें जब आपको पेल्विक रीजन जब आप कूल रखेंगे हिप बाथ या सिट्स बाथ करके, तभी वहां के एलिमेंट्स को पूरी तरह से डिटॉक्स कर पाएंगे। सो नेक्स्ट, थैंक यू। कोई क्वेश्चन? सर देखिए, इस कॉन्फ्रेंसेज या सेमिनार तो एंथुसियाज्म या अवेयरनेस के लिए ही होती हैं। कभी भी उनसे इतना फायदा नहीं उठाया जा सकता कि आपने सुना और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया।
ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 21 साल से हम काम कर रहे हैं। सर ने अभी इतनी बढ़िया हिप्नोथेरेपी की चीजें बताई, या साउंड हीलिंग, या और भी लोग हैं सुन रहे हैं हम सबसे। ऐसा नहीं हो सकता, जो आपका पैटर्न है वो ही आप कर पाएंगे, या फिर आप उसको प्रॉपर स्टडी करें और एक आप क्लास करें, तो उसका जो उद्देश्य है वो फुलफिल हो रहा है। हमें भी अच्छा लग रहा है, हम भी सीख के जा रहे हैं, आप भी सीख के जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिखा मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर नीता जोगनपुत्रा मुंबई से। आप प्राणिक साइकोथेरेपी के बारे में बताएंगे। और जैसा कि नीता मैम ने कहा है, शिखा मैम ने कहा है कि यहाँ पर हमें हर उस चीज की जानकारी मिलती है कि हम किन और चीजों को बहुत अच्छे से सीख करके और अपने पेशेंट्स को फायदा दे सकते हैं बिना किसी दवा के, बिना किसी तकलीफ के। तो अब हमें नीता मैम बताने आ रही है प्राणिक साइकोथेरेपी के बारे में। इसको ब्रॉड कर दीजिए, इसको नहीं होगा। हाँ यस, थैंक यू। बोलो मैं बैठा रहेगा। चलो गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मैं खेतावत जी का कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सारे ऑल्टरनेट थेरेपिस्ट को दिया। हम बहुत लोगों ने कहा ये ऑल्टरनेट थेरेपी नहीं नाम होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस का नॉलेज और हाथ जो ऊपर कर देते वो लोग, वहां पे ऑल्टरनेट थेरेपीज काम आती है। इसलिए इसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, उसके लिए खेतावत जी का और पूरी इंदौर की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बात करने आई हूँ प्राणिक साइकोथेरेपी में मेंटल प्रॉब्लम्स। तो आप मुझे बताएंगे, सोचेंगे कि साइकोथेरेपी कैसे आती है, कहाँ से आती है नेगेटिव इमोशंस? क्या हम उसके साथ जन्मे हैं? छोटे बेबी को आप देखते हैं तो कितने क्यूट लगते हैं ना, हम इच्छा नहीं करते उनको गले लगे, उनको किस करें। तो आज हमारी एनर्जी कैसे, आप अपने आप को पूछे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि आपसे दूर जाना चाहते हैं? तो वी आर बोर्न विद दैट एनर्जी विद अ स्मॉल बेबी, लेकिन हम वो भूल जाते हैं और हम दूसरों को इजीली ब्लेम डाल देते हैं ना, मेरे साथ ये गलत हुआ, दिस थिंग हैपेंड मी बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन। इट इज सो इजी फॉर अ नॉर्मल पर्सन, एंड एज अ नॉर्मल पर्सन अगर हमें कोई अच्छा कहता है ना तो हम 4 दिन में भूल जाते हैं, लेकिन बुरा का तो हम सालों तक याद रखते हैं कि नहीं? विल एवरीवन एग्री टू इट? उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, यू होल्ड ऑन टू इट। तो सुबह से जो एनर्जी की बात चल रही है, एनर्जी हीलिंग की बात चल रही है, तो आप भी नेगेटिव इमोशन, पेंटअप इमोशन, रिसेंटमेंट अपने अंदर बांध के जो रखते हैं, वी होल्ड ऑन टू इट। उससे क्या होता है, आपके चक्रस में वो एनर्जी एज अ स्टैग्नेंट एनर्जी जम जाती है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिलीज, क्योंकि इट इज वेरी इजी फॉर अस टू पुट अ ब्लेम ऑन अदर्स इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस टू अस। उसकी वजह से हुआ। ये क्यों होता है? क्योंकि आजकल क्या हुआ है, लोग अपने को, अपने आसपास के लोगों को, फैमिली को या डिफरेंट सिचुएशन लाइफ में जो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करने के बदले दे एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अदर्स, सो दिस अनहैप्पीनेस कम्स। सो प्राणिक साइकोथेरेपी, it is the 3rd level course in pranic healing. It teaches you how to remove these energy blockages, stagnant energies from the aura and the chakras, right? So very simply, just with your hands,
तो ये स्लाइड दिखाने के पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगी। सब लोग ये फील करना चाहेंगे, राइट? तो सिट विथ योर आर्म्स एंड लेग्स अनक्रॉस, योर टंग कनेक्टेड टू द पैलेट। टंग कनेक्शन का भी साइंटिफिक मेथड है, प्राणिक हीलिंग सिखाता है, अभी वो समझाने का टाइम नहीं है। जस्ट अपने लेफ्ट हैंड को देख के उसकी तरफ नेगेटिव एनर्जी अप्रोच करे, किसी एक को याद करे जिसकी तरफ आपको बहुत नफरत है, कोई आपको बहुत परेशान करता है। जस्ट सी टू योर दिस हैंड एंड से आई हेट यू। बोले जोर से सब लोग, आई हेट यू, आई एम वेरी एंग्री ऑन यू, व्हाई डिड यू डू दिस टू मी, आई हेट यू। नाउ जस्ट ट्राई टू बी अवेयर ऑफ योर दिस पाम। आपको एनर्जी का कुछ फीलिंग आ रहा है हाथ में? सम हेवी एनर्जी, वजन लग रहा है? तो ये अभी हमने डाला, मे बी फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, तो ये इजीली हम रिमूव भी कर सकते हैं। जस्ट सी मी एंड देन यू डू इट। जस्ट डू दिस 1 2 3 4 5 डिस्टिंग्विश एंड एक्सपेल। अभी मत करिए, डिस्टिंग्विश एंड एक्सपेल। तो डर्टी एनर्जी, नेगेटिव जब निकालते हैं उसको यहाँ नहीं डालना है, निकालना है फॉर 5 काउंट्स, 5 और 6, एंड देन यू से डिस्टिंग्विश एंड एक्सपेल। तो नेगेटिव एनर्जी हम जो यहाँ से निकाल रहे, किसी कहीं और जाके किसी को नुकसान नहीं कर रही है। डू यू ऑल एग्री? तो कम ऑन स्टार्ट, डू दिस 1 2 3 4 5 फ्लिक, डिस्टिंग्विश एंड एक्सपेल। 6 7 8 9 10 डिस्टिंग्विश एंड एक्सपेल। Are you feeling your hands lighter? लग रहा है? लग रहा है ना? तो सोचो ये खाली अभी का क्रिएट हुआ, आपको इतनी जल्दी आप निकाल पाए। तो सालों से हमने अपने अंदर जो नेगेटिव इमोशंस, पेंटअप इमोशन, रिसेंटमेंट्स, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस बांध के रखा है, वो कहाँ जाएगा? आपके चक्रस के अंदर ही है। हमारे योग शास्त्र में सिखाया जाता है कि there are 7 chakras. Pranic healing teaches there are 11 major chakras. There are many minor and mini chakras. Our entire energy body is a vortices of energies. Chakras क्या करते हैं? अगर normally function करते हैं, they absorb energy from the universe and they control and energize some of your parts and organs. Right? So same way, if a chakra malfunctions, then it will have a bad effect on your organs also. Right? Can you change the slide? So this energy healing called pranic healing was rediscovered by Grandmaster Chow Foxley, who was a Filipino. He was of Chinese descent, and he rediscovered it and developed this technique to allow pranic healing so that it can become a school of energy that everyone can learn and practice. He being a Filipino, he gave it now name Pranic because he said this is an ancient science and art of India. ये आज के थेरेपी नहीं है, हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग किसी को तकलीफ होती तो ऐसे हाथ रख के ठीक करते थे। कहानियां तो सुनी होगी ना। सेम एनर्जी को उन्होंने रिडिस्कवर करके मॉडिफाई किया, साइंटिफिक बेस दिया। आज जो और की हम बात करते हैं दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसको हम फील कर पाए। अभी आपने फील किया तो, और उसको अपने दूसरे हाथ से आप निकाल भी पाए। राइट? तो प्राणिक हीलिंग इज अ साइंटिफिक बेस्ड हीलिंग मोडालिटी जिनको एक फॉरेनर ने डिस्कवर किया, लेकिन वो क्रेडिट इंडिया को देते। ये प्राण शब्द उन्होंने संस्कृत में से लिया है। प्राण जो हमारी लाइफ एनर्जी है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है? सबसे पहले सांस लेता है। जैसे किसी की सांस खत्म होती है तो क्या होता है? लाइफ एंड्स। सो होल लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दिस लाइफ सर्कल। राइट? प्लीज चेंज। Excuse me. Think you change color. Pranic healing is energy-based healing model which utilizes energy prana to heal various ailments. Energy के बारे में स्लाइड फटाफट हम जाने देंगे। Can you change? Human body is a complete energy system in tune with the universe. If you are feeling very energetic, very healthy, it means your aura and your chakras are bigger, brighter, healthier and strong, and they are more cleaner. But many times you feel fatigue, you feel drained out. सुबह से यहाँ पर बैठे, don't all of you now feel sick and fatigued, right? So pranic healing teaches those short techniques also, like you can do proper pranayama techniques,
proper meditation techniques. With that also you can recharge yourself. सुबह उठते मोबाइल रिचार्ज करना रखते, कोई भूलता है? No one forgets it. लेकिन अपनी बॉडी की एनर्जी को हम 24/7 only utilize it. We never even think of recharging it. Pranic healing teaches you those techniques and that science. Change. When we do energy healing, we change energy from imbalance to balance. मतलब आपकी ऑरा और चक्रस सारे एक ही लेवल पे होने चाहिए. If there is an imbalance, it means you are unhealthy. So pranic healing modality does this so that whatever energy blockages are there within the aura or the meridians or nadis, those are easily removed. So when natural energy starts continuously flowing in your energy body, a person can become healthy. And remember, energy body is connected to the physical body. They are closely connected to each other. पहले pictures दिखाए ना, physical body and energy body, they are closely interconnected. So our energy body is outside of this physical body, in the same shape of our aura. But if there are imbalances in the aura, it means a person is sick. On inner aura के surface में there are chakras. But if a chakra has more energy, it is congested. If it has less energy, it is depleted. Simple. So I'll just show you a testimonial how pranic healing works on people. It is a testimonial from a doctor. Change. It's a video. Just play. इसको प्ले करिए. डाउनलोड करना पड़ेगा. He is Dr. Vivek Desai. He is at present based in Mumbai, but he is a doctor of postmat in Udaipur. He is sharing his experience on pranic healing. आपको डाउनलोड करना, आप डाउनलोड कीजिए, शायद होगा तो, नहीं तो फिर जाने देंगे. He being a doctor, उनको नेक्रोसिस था स्पाइन का, तो if you all are doctors, you must be knowing what it is. Knee का necrosis, I think it is called. So he being a allopathic doctor, he did not believe in it, but he was suggested knee surgery, nothing else. He wanted to avoid surgery, so finally he came across pranic healing. He took a few sessions. For the first 7 or 8 days, he did not feel any difference. But from 10th day, he could see there's a change in him, and maybe after a month, he got 75% relief. And the picture is there which shows necrosis जो knee का रहता है, that cannot be cured without surgery, but it was only and only healed through pranic healing. Doctor himself is committing. I don't know how. Did you try to download it? Not working. Okay, maybe it's working on my mobile, but then I cannot show it over here. It's okay. So just change the slide. So the आपने जो energy feel किया is with each of us, within us, around us. We are all surrounded with energies, but it is strong at points and depleted or dirty when the body is sick or feel depressed. Change. The power of pranic healing is the power of technique of cleansing and energizing. Cleansing का technique हमने सीखा. Energizing also is done by trained pranic healers. They don't utilize their energy to give energy to others. A technique is taught to them where they can absorb universal energy within their bodies and utilize it to heal others. So it is a total safe healing modality. I've been practicing pranic healing. There's my colleague also over here, Neelam Sharma, who is also practicing pranic maybe for more than 10 years. And we are regular healers. अगर हम बीमार होते हैं तो healing कैसे करते? We don't utilize 1% energy of ours. We all live in an ocean of energies. So a technique is taught to you, we can absorb more energies from the universal energy and utilize it to heal others. Cleansing technique to sikhai. This was just a simple. There are more other cleansing techniques also when you learn other courses. Change. Emotions affect
your bodily organs change. See, anger weakens the liver, fear hurts the kidneys, stress weakens the brain and heart, anxiety hurts the lungs, worry affects the stomach. Kidney को देखो बोला है fear hurts the kidneys. You must have heard of small babies, बहुत डर लगता है तो सुसु निकल जाता है. So can you connect to it? तो बड़ों के लिए भी सेम है. If they have fear, कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे नेगेटिव मेरे अंदर है. But when you scan them, प्राणिक हीलिंग है तो थ्री स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट इज स्कैनिंग. ये जो ऑरा का आप लोग ने मशीन से सब जांचा, प्राणिक हीलिंग के क्लास में we teach people to scan the aura with their own hands. तो एनर्जी की जो ऑरा है वो बैलेंस इम्बैलेंसेस a trained प्राणिक हीलर कैन find from scanning. Energy का blockages also we can find from scanning. So negative energies also we can find with scanning. Suppose liver में anger के normal liver की energy will be different, but the energy of anger on liver will be different. So we just remove it simply, and the organ is healed. Change. Emotions are our organs. There are certain emotions related to each organ. When we talk about emotions, it means they are expressed, suppressed or repressed. कई बार हम बोल नहीं पाते ना कुछ. कई बार हम बोल नहीं पाते ना कुछ कि क्या है, तो you suppress it, so that blocks your energy. So that affects your chakra. Affect होगा तो जो चक्र जिस पार्ट को कंट्रोल होता है उसको अफेक्ट करेगा ना. Just change just a minute. Liver and gallbladder associated with anger. वही तो बताया था. Liver and gallbladder system balance, that is suppressed anger अगर रहता है हम अंदर दबा के रखते तो person can go to depression. Next. I'm sorry to disturb you, madam. You are out of time. Okay, sorry. I'll conclude over here. Thank you for giving me this much time. Thank you, madam. आपने बहुत अच्छी जानकारी दी. If anyone wants to ask some question, there is only half a minute remaining with you. Okay. I can ask you one question. Sure. When you do pranic healing, you lose your energy. You are not a store of energy. You are taking from the universe. Yes, and we giving did. it to. Yeah. Neuroplasticity is my friend. And friend. He asked me my instrument because he is going to lose the energy. Therefore, he was the cause of making harmonization. Yeah. As a pranic healer, we teach in the course itself. Yeah. I mentioned him all in my 6-7 books. He is my friend. Because Okay. This is energy. This is energy. So in a class we systematically teach. You are talking about my friend. Yes. He is a Philippines chemical engineer and industrial engineer. I was also a chemical engineer. Okay. Thank you. My daughter. Okay. Yes. So we just normalize and harmonize the energy. Okay, whatever concluding part is left, don't worry. My colleague Neelam Sharma will conclude it. So you will get full knowledge, don't worry. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. आप लोगों ने इतनी देर धैर्य रखा. सिर्फ अब लास्ट के 2 और बचे हैं. सब बहुत receptivity. I know people are tired. मैं मेरा भी नहीं लेना चाहती. It is unfair to the speaker. मजा नहीं आ रहा. भाई साहब वो भी नोटिस कर का फिर कल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. नहीं तो देख. अभी ये बोलते रहेंगे. सिर्फ एक और सुन लेते हैं. सिर्फ एक भाई साहब. सर एक्चुअली देयर इज डॉक्टर रेणु सांचा जिनका आज बर्थडे भी है. वी जस्ट वांट टू विश हर. अनिता जी हाउ मेनी आर देयर? और कितने? सुबह से बैठे हुए हैं प्रेजेंट करने के लिए. सुबह से बैठे हैं प्रेजेंट करने के लिए, तुमको अलाउ करना चाहिए. वही मैं बोल. Yes. They are waiting actually since morning for the so we should allow him. We start. डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा प्लीज कम. थोड़ा 10 मिनट का टाइम है आपको. Okay. चलिए 15 मिनट आ जाइए. Next person.
नहीं डॉक्टर रेनू का आज बर्थडे है, हम हैप्पी बर्थडे तो बोल दें। हाँ कल आप बोलना, लेकिन बर्थडे हम सब विश कर दें आपको। आपकी 100 साल की उम्र हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें। मैं डॉक्टर खेतावत सर से अनुरोध करती हूँ आशीर्वाद दें और श्वेता मैम से माला पहनाने के लिए कि आप रेणु मैम को माला पहनाकर उनका बर्थडे अगर सुबह से मैं वेट करके एक सेशन का एक उसमें कौन सा फोन बता रहे कि बुटे नहीं होना, वो कौन सा सेशन है एक सेशन वाला थैंक यू। मैं आज आपको माइग्रेन जो सर दर्द है उसके बारे में बता देना चाह रहा हूँ। तो माइग्रेन जो होता है वो एक कष्टदायी स्पंदनशील सर दर्द होता है जो सप्ताह में एक से ज्यादा बार, 2 बार, 3 बार या सप्ताह भर होता रहता है। और इसमें आपको संवेदनशीलताएं मिलती हैं, उल्टी, थकान, ध्वनि से संबंधित, प्रकाश से संबंधित, गंध से संबंधित। और इस माइग्रेन पे हमारा लाइफ टाइम एक्यूप्रेशर सेंटर जो इटारसी में है उसमें लगभग 321 जो उसके मरीज है उन पे हमने रिसर्च करी है। तो उसमें से हमको 215 मरीजों पे सफलतापूर्वक निवारण मिला है। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक्यूप्रेशर को अपनाया माइग्रेन के लिए और उससे हमने इलाज किया। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाह रहा हूँ कि माइग्रेन होता क्यों है। नेक्स्ट, जो माइग्रेन के ये फैक्टर होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं हमारे मस्तिष्क को, जो उसके ट्रिगर होते हैं स्ट्रेस, थकान, नींद की कमी या इरेगुलरिटी, धुआं, डस्ट या स्मेल से एलर्जी, तेज साउंड और लाइट, हार्मोनल चेंज, ज्यादा शराब, स्मोकिंग, बर्थ कंट्रोल पिल्स, दवाओं का ओवरडोज और इरेगुलर पीरियड्स का महिलाओं में आना। साथ साथ इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं जो सर के एक भाग में तेजी से दर्द होना, ब्लड विजन, सेंसिटिविटी, लाइट, स्मेल और नॉइज के प्रति, फैटिक, थकान, फीवर आना, हल्का सा लॉस ऑफ एपेटाइट और स्किन का पीला हो जाना। इसके बाद जो तंत्रिका तंत्र विकार है उससे संबंधित माइग्रेन होता है और अनियमित रक्त वाहिका और संचार प्रणाली में जो रुकावट होती है, परिवार के इतिहास होते हैं, मस्तिष्क के जो रसायनों में असामान्यता आती है, जोर से संगीत बजना उससे होता है और अनियमित रक्त शर्करा के स्तर के कारण भी होता है और अधिक सोने से और भोजन कम खाने से भी होता है। नेक्स्ट, भारत में माइग्रेन का जो प्रकार है और जो पाया जाता है मरीजों में वो भारतीय रोगियों में बालों में मेहंदी लगाने से, ठंडे पानी से नहाने से और लंबे समय तक सूरज के संपर्क में रहने से, गर्मी और आर्द्र गर्मी का मौसम और साइनोसाइटिस, दांत का दर्द होने से माइग्रेन से हमारे देश में प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, माइग्रेन के 4 चरण होते हैं। इसमें प्रथम जो होता है प्रोड्रोम। इस अवधि में सुस्ती महसूस करना, चक्कर आना, भूख में कमी, अवसाद, जल्दी पेशाब आना, बढ़ी हुई प्यास, गर्दन में अकड़न, प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता और थकान महसूस होना। नेक्स्ट, द्वितीय चरण ऑरा। इसमें जो आवा होता है इसके अंतर्गत
तंत्रिका तंत्र के लक्षण आते हैं, जैसे बोलते समय कठिनाई, गुनगुनाहट, लयबद्ध ध्वनि या संगीत सुनना, प्रकाश की चमक, कुछ मिनटों के लिए अचानक दृष्टि हानि, हाथ पैर में सुई चुभने जैसा महसूस होना, शरीर में कमजोरी, सुन्नता, हल्का अस्थायी पक्षाघात महसूस होना। नेक्स्ट, तीसरा चरण जो होता है वो माइग्रेन का हमला, जिसको बोलते हैं माइग्रेन का दौरा आना होता है। इसमें सिर में गंभीर तेज दर्द होता है, जिससे घबराहट, बेहोशी आना, भूख में कमी, चक्कर, धुंधली दृष्टि, चिड़चिड़ापन, मतली और उल्टी होना आदि होता है। नेक्स्ट, चतुर्थ चरण जो कहलाता है पोस्टड्रोम कहलाता है, कि माइग्रेन के हमले का अंतिम चरण होता है। इसमें आप थोड़ा सक्रिय महसूस करते हैं, जैसे कमजोरी, सुन्नता, थकान, चक्कर आना, प्रकाश, ध्वनि और स्पर्श के प्रति संवेदनशीलता और चिड़चिड़ापन आ जाना। नेक्स्ट, अब इसमें माइग्रेन के अंतर्गत हम एक्यूप्रेशर में क्या कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो एक्यूप्रेशर में रिफ्लेक्सोलॉजी, तो हेड और फिट रिफ्लेक्सोलॉजी आता है। उसके अंतर्गत हम ब्रेन और सब ब्रेन के पॉइंट्स लेंगे। तो ब्रेन और सब ब्रेन के पॉइंट्स को आप इस प्रकार से प्रेशर पिस्टल ब्रेक करेंगे ब्रेन और सब ब्रेन पॉइंट्स के साथ ही। इसमें एक ये भी हम लोगों ने रिसर्च में महसूस किया है कि जो आइस क्यूब्स होते हैं उसको ब्रेन और सब ब्रेन के पॉइंट पे आप 10 से 15 सेकंड तक 10 से 15 बार रखेंगे तो आपको सर दर्द में राहत मिलेगी और काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट, अब मेरिडियनोलॉजी के अनुसार लीवर की जो मेरिडियन है, तो LIV2 LIV3 जो 2 पॉइंट थे, इसको भी आप पाँव में रोगी के प्रेशर दे सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रिपल वार्म मेरिडियन के अंतर्गत TW1, TW2, TW5, TW20, TW23 इन मेरिडियंस को भी आप रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ST44 ये पॉइंट माइग्रेन में कारगर है, इसे भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, GB1 जो गॉल ब्लैडर है आपका, और इसका GB8, GB14 और GB20 वो भी आप उसको रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर में UB2, UB59, UB62 ये 3 पॉइंट माइग्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, गवर्निंग वेसल का GB4, GB14 और GB24 ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें भी लिया जाता है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा मेरिडियन में एक्स्ट्रा 1, एक्स्ट्रा 2, एक्स्ट्रा 5, एक्स्ट्रा 40 ये 4 पॉइंट लिए जाते हैं। और सबसे पहले तो मैं माइग्रेन में ये बता देना चाहता हूँ कि एक्यूप्रेशर में तो थेरेपिस्ट वही कहलाता है जो स्वयं अपना इलाज एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के द्वारा अपने हाथों से ले सके और इसका निदान कर सके। जैसे कि आप कभी कभी सर दर्द होता है तो उसके पॉइंट्स भी आप कभी कभी स्वयं अपने हाथों से रिकवर करते होंगे, तो इसमें जैसे 3 फिंगर टेक्निक चलती है, हम 2 फिंगर टेक्निक से भी कर सकते हैं। उसके अंतर्गत ये 2 उंगलियां हैं, सबसे पहले ये 2 उंगलियों को लेकर आप इस प्रकार से पुश एंड पुल, आपको इसको पुश करना 10 सेकेंड तक, तो उसके बाद पुल कर देना है, तो आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा और सर हल्का होगा। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट जो लेना है वो आप ये जो आपका साइनस का है सेंटर पॉइंट टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं या हाथ पे ऐसे रख के इस प्रकार से अंदर की तरफ आपको प्रेशर देना है। तो ये पॉइंट भी माइग्रेन और सर दर्द में कारगर होता है। और थर्ड जो पॉइंट है वो आपका अंगूठा है, ये जो इसको सीधे मस्तिष्क के प्रकार से रखते हैं सर्वाइकल सीधी फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से घुमाना है। आपको पूरा कमर और कंधा उसमें हल्कापन लगेगा और सर में भी आपको हल्कापन महसूस होगा, रिलैक्सेशन लगेगा ये अंगूठे से। और इसके बाद आपको ये जो आपका हेड का ये वाला पॉइंट है इसको आपको ये दोनों अंगूठे से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से 4 पॉइंट हो गए। और सबसे अच्छा कारगर जो ओम शब्द की तीव्रता और उसका उच्चारण होता है उससे जो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलता है सर में वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको करने के लिए आपको इस प्रकार से दोनों उंगली कान के अंदर रख के और 15 से 30 सेकंड तक ओम का उच्चारण करना है। इस टाइप से तो ये आपका पूरी की पूरी एनर्जी और जो आपकी ऊर्जा है शरीर की वो आपके सर में आ जाएगी और आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और सर दर्द से आपको निजात मिलेगी। नेक्स्ट, थैंक यू।
You still have time. If someone wants to ask some questions, What do you say about Lom and Vilom? जी Lom and Vilom से कैसे अफेक्ट होता है माइग्रेन? लोम एंड विलोम से ये होता है कि अभी हमने जो मंत्र का उच्चारण किया, अभी तो हमने मंत्र का उच्चारण जो ओम का किया है, और योगा के कारण उसमें योगा यदि आप ज्यादा करोगे लोम और अनिलोम का, तो उसमें क्या होगा कि सर योगा ज्यादा करने से मैंने ये देखा है रिजल्ट में कि माइग्रेन बढ़ता है। उसको आप एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। योगा या एक्सरसाइज करने से यदि ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो माइग्रेन बढ़ता है। ठीक है, नॉट एक्सरसाइज, ये श्वास की एक प्रक्रिया है। ये नोजल को ये मैंने नहीं किया है इसमें, तो उच्चारण जरूर किया है। कई बार सुना होगा आपने डॉक्टर। हाँ हाँ जी सुना है, सुना। हाँ, पर हमने एप्लीकेबल नहीं किया है इसको। ओम का उच्चारण को एप्लीकेबल किया, आई क्यूब को एप्लीकेबल किया है। ओके, Thank you. How much time you take in the my retired, not retired, group one Thank you, everyone. Now we are done with all the presentation, and I invite you all for join us for dinner.